Life's in a position to cut off this rotation here. Oh, the timing. I mean, if they keep... No problem is, yeah, Sadak's walking this way as well. So he just got the God read on the timing. Sadak, with the second opportunity at this, right? You think about that. Hello, guys. What's up? This could be disastrous here. I know, थोड़ा सा late हुआ, 4-5 rounds चल लिए. I louder FPX का game and I have missed some points because मेरे को brownie points miss out होंगे. मैं late हो गया थोड़ा. But the reason is simple. जब internet BT देता है ना, जब seriously internet जब BT देता है ना, then you can't even have something. They still push that B main side. Another situation, just a half second. Called as either way, would have sniffed out this flank coming through from Loud. कि भाई आप लोग आ रहे हो टाइम पे, इंटरनेट आएगा तो आप आ पाओगे. कल भी मैंने कहा स्ट्रीम इसीलिए बंद कर दी थी चलते मैं कि भाई मेरा नेट जो है बहुत अटक रहा था और तुम लोग को मैच देखने में मजा नहीं आ रहा था. एंड if you guys are not having fun in watching the match, then it's GG for me. I can't help and I can't do anything. What Loud were trying to achieve early round I outside. can't do anything. Look to shut it down here and send a message, make a response. That thing will be very much crazy kind of. See how that's going to change things going forwards actually. Looking as if it is a deeper hold this time around, but maybe a setup here around the fault line. Yeah, 3-3. Eco or semi-buy for FPX. So flash, but still didn't get affected by the flash. Slows down the roll. They're very Boom, close by and he wants in. यहाँ पे breach का stun आया, वहाँ पे Lysor फंस गया. They're gonna know there's two more players here. They've seen that utility. Lysor फंसा क्योंकि breach का stun आया. Life gonna try and slip a little further ahead and now here comes the problems. इनको round चाहिए, इनको ulti पल्टी से फर्क भी नहीं पड़ रहा. Still good on value. Still gonna find one. Look at the damage. That's so dark. That's rough. Double swing and the spray's good from Sadak. Commits to it too. He's close enough. There is no escape. The hell? This is a very hard 1v3 with very little space gained around the map beyond this corner. Tui spotted out, Paranoia will land. A ton of utility to deal with here. Sadak will find Sadak is crazy right now. And a message sent in response by Loud that we are still happy Sadak to is fight for this. freaking crazy right now. What the hell? It's nice to see the adjustment too. Yeah, absolutely. Guys, make sure you guys hit that like and subscribe, man. Like, subscribe नहीं करोगे तो मेरे को मजा भी नहीं आएगा स्ट्रीम करने का. Subscribers ठीक है, हमने 500 गेन किए हैं. But वो 5-6 से काम नहीं होगा यार, जब तक वो 500-600 नहीं हो जाते. We have FPX to pump the brakes first. एक हफ्ते में 300-400 subscribers gain कर रहे हैं. A little more fluid, a little more reactive today. 50-60 gain कर रहे हैं. That's kind of what we're looking at. Is what form एक बार guys मेरे allowed exams in. I खत्म think हो we've seen जाने the दो. highs and lows. And the question is, how much can FPX push that? Can they continue getting their face? That 3-round streak, they had a great read. They were playing very well. A couple of individuals stepping up. Autumn and Life with some fantastic moments for themselves. But as a collective now, you could already see Loud have adjusted, right? We just already noted, we kind of talked about it a little bit. That adjustment on A went from one player, I think it was just 2 he's holding it, to now 3. With 2 different variations. So what does FPX have as a read on that here? They still maybe mull that over. Sure, and I think obviously where FPX's composition does excel is where they get themselves towards a site. So you know what Berlin's utility can do to cut off. We've even seen the awareness from Tui's as well. Play a couple of spots early on to, I guess, try and negate that as best as possible. Get some information over the top of that. I would just say you guys कि match yeah, curious. अभी के लिए watch parties enjoy करो. FPX early round haven't अपन पूरा का पूरा VCT season watch parties में निकालने वाले हैं. On B side, but it's been this pretty tame default we've seen time and time again. And now we're at round 8, so it's there's a couple of question marks elsewhere. Pacific और Americas अपने को मिल जाएगा. Pretty well coordinated. But Pacific और Americas के अलावा अपने को क्या मिलेगा? That is a questionable thing. It's 8.5, I should say. 5 लोग guys आ गए हो देखने. Still options here. Hunter's Fury. I bet you don't know this. What? For FPX, and it might just be What I don't know. Towards mid, as anticipated. See the protocols. I know everything, man. Place too. He's जो मेरे को पता होना चाहिए I know everything. जो नहीं पता होना चाहिए नहीं पता. आज के दिन की बात करते हैं. Already quite a deep hold from Sadak, so probably won't get fully affected by this flash. No, dips away on the corner. Should play in 2s now. Flash ही नहीं हुआ. You noted that paranoia coming through. Caught a couple of them. Going to draw in less as well. There's 3-man kind of pressure towards middle. Not rewarding, but maybe looking at the extremities to find that pick. No problem being now. Lysol will be called upon. 71 HP Berlin. QCK and Kawanzine posted up pretty deep here, but they're going to hold their position. They're trying to make a scramble. Oh, the spam
Autumn's going to obviously keep going, but again, it's well controlled by Loud. They've held on nicely to this point. Little bit of danger going to be coming in. Selak has connected towards Light. Heavy connect hua. First did go towards Berlin, finding Tui's, but that was on the other side of the map. Less valuable towards this A hit, but it now falls to less. Do they close left check ही नहीं होगा मेरे हिसाब से. So perfectly, and again, timing. He saw him, yeah. Autumn turned, and now it's uncomfortable. Oh, short release. Punishing Lysor as he tried to bail them out. कैसे भाई? And then drifting back towards B, a correct read from Loud to get back to the side. FPX trying to scramble again. 15 seconds, the cross being watched, and Les is just looking so on the money here. Huh? He does get denied though. QCK counts. क्या भाई? Hello? Oh my god, but time 6 seconds. Does he know how close by? अरे भाई, and heartbreak at लांटी the नहीं end. करने मिला. Almost thriving in that chaos. But Loud controlling it in the end. Loud and keeping that 3 in a row going. Loud beautiful is damage gonna control from Sadak early on, and Tui's as well, to really shut down this mid push. Comes out as a curveball, I think early on. The information gathered nonetheless. FPX भाई switching साहब things वो up just आफ्टर when शॉक you're में हिला दिया ये लोग को. आफ्टर being शॉक the नहीं guy आया to होता have तो the काम हो benefit जाता. of the economy to fall back on now. Couple of ultimates, मेरे को yes, पता है but यार तू किसकी बात कर रहा है, but ठीक है. like Loud with those 3 rounds in succession. शॉट Like they are in some control, but life still भाई आया मारा चल दिया. chomping at the bit to find an opener. And rewarded this time. Come on. क्या कर रहे हैं भाई? शेरिफ. Round like this, a misread potentially. You've given so much opportunity to FPX. Okay. Double stack towards top middle. I'll make it 3. But 2 guns है Just kind यार. of roaming the map, and they're reading this as a B take correctly. So the utility not so subtle on the way, but can FPX continue along this trajectory? Berlin with a rifle. It's like if Still you're in having hand. 2 guns, Ayank you still can get has the, one as well, so there you can is just a get little the bit of threat to this. round right now. बहुत easy है. And the Viper's put on top. Pit definitely causes some problems for Loud here. Need to step the pace up a little इसका bit. ulti है भाई. Like और का. Find a kill ideally here, but FPX is going to tuck themselves back in towards main, not risk anything. Actually यही चीज़ है भाई. इको round में लोग मस्त Gotta ulti get a खींच move के on. round निकाल देते They हैं. gotta get going. This Viper's pit's not gonna keep going anywhere. They're gonna be sitting on this one. And actually maybe feels over the top to use it. They're in very good control here. Berlin's position is excellent. Gonna punish the barrel that just showed through. Gonna put himself on the line pretty much just to make sure no one's trying to go for that defuse. And FPX lap up the opportunities that were left for them. Loud with a mistake there in my mind. Giving away 2 openers here. And FPX pounce on the opportunity. Yeah, and I'm with you. Hunter's Fury maybe not necessary, but to convert around like this after 3 unanswered, absolutely. Get themselves back in the game. तो कुछ भी shot लगा. Themselves a big move in terms of the funds as well. Look at that coming out of a. And they just got a thrifty Purchase kind like of a that. thrifty round where sheriffs Most were only players there sitting to work around, with. what, 2,300 and above are in Lysor. Yeah, uncharacteristic of Loud. Less do the same thing again with the security of the wall, but चुटकी बजाए पीछे जाके just मरे. can't TP away in time. Now noting a second here, and noting a difference in the setup because it's typically Autumn and Life over towards A side, being the ones to push and prod and try and find an opener. 6-4. Loud यहाँ पे 2-0 जीत रही है. Telltale signs of a B hit. More contact made. अगला game question CK raise show his करेगा. hand a little. Stalling out towards B main, but there hasn't been any utility from But whether FPX it be towards the site, EDG particularly or more individual from Autumn. This doesn't feel like a site hit yet, and it's not moving Loud. Other than it being these 2 on this America's side of the map. #2 versus China's #2. Now they're probably happy after the previous round to sit back and look to respond as Oh opposed to being decisive. Mid से गए एक ही तरफ pivot. And they haven't noted Tui's with that operator either. No. That's been quietly waiting over towards A. They're still going to have to use a fair bit of utility to clear close, which they're doing now, so this should be ringing the alarm bells that Loud might know this could be A piece, but look at that top mid timing. Berlin and Autumn. This could be exceptional, but it's a 1-for-1. It's still valuable enough that it's pinned in Loud. They're in trouble here. So now they need to win out on the site, though. There's still a fight to be had. 20 seconds. All eyes turning towards Autumn. Allowing passage, but Tui's takes him down. 15 seconds. They don't know about Salak until now. And what a horrible surprise it was. It works. He had a smile on his face. The round ended there. Well handled by Loud. Like I said, after the opener, happy to sit back and
Life और एक frag I guess पे. the tangibles, the information they've learned so far in this half, making the numbers work. You can see the little smile at the end. भाई RNG कर गए. I feel like they're starting to get some of the rhythm, right? They're getting some of those reads. They're starting to try and pull the attention, pull those fakes. But Loud are a very tricky opponent to do that to. But Life has been very good at some of these entries, some of these openings. But look how deep Loud are sitting now. What another adjustment coming out. ये देखो अच्छा बाहर से अंदर आ रहा है. A little bit pacier this time around. Maybe on the back of yeah, we'll pop this. Clear a little bit of space. Don't expect anybody from Loud to really be challenging towards this drone or the running back, but Tui's from the top of the box here finds a kill. The paranoia's good enough. Made sure he was being kept safe. Toying with expectation on the TP. This is a plant, so for the first time in a while, yes, they lost out on Berlin, but they do get themselves a plant. They do get the time on their side, but can they hold this? Couple of ults here, nothing critical, but a lot of utility still with Loud. That's the issue. Site looks rather clear. You're going to see them try and flop this now. Counter cracks it open. बचा लिया भाई. Whiff कर गया वो तो इस पे इसके लिए बच गया. And the defuse is happening. Can't hit. Loud stretching their legs a little bit here. As we approach round 12, a pace change from FPX. Life previously the hero in this sort of situation on the post plant, but not this time around. Oh, Tui didn't even see anything, had no confirmation on the other side of this. Beautiful adjustment from Cow and T to find the trade of the operator there. Purchase will struggle a little bit for FPX coming in, but a judge in the hands of Life, sort of force available. Expected to round things out for Lysors at a very quiet half, 1 and 10. It might be rinse and repeat here, but I'm pretty sure the camera connected to everyone. Yeah, and County trying to be the one to capitalize on that, but didn't quite have it in time. You're going to see sort of force out for Life as well. So, bit of a rough battle there for County, who's going to try and drift away. And they're expecting pressure towards top middle potentially. They're unsure of if this is a fully committed A piece, but it is. 5 players on this side of the map, and a very similar look to that last round. Same kit, same utility, but eyes towards Sadak. Is he going for that late fact-finding mission? He wants information. He knows where they're coming from. That's going to be relayed to Tui's. But can Sadak hold the line as well? Can he be a problem? Actually, the right read here. Right call from Sadak. Why hit it now? He can take his time. There's still no rotation from QCK. Kaunzine gets a kill here. Will open up the retake for Loud. Not going to slow things down yet. Potentially try and get him a kill. Trying to play him in. Oh, too many targets. Really nicely handled from FPX. There is a trade for Tui's. And now we look at this fully fledged retake. Gorgeous from Life. Holds them away. If it is 7-5, then ये मैच जीतेगा भी है. But 8-4 पे ये मैच Loud का है confirm. Playing towards CT side. Almost caught Berlin in the खत्म ये round Loud का है, लेकिन भाई QCK का एंगल दिखाओ कैसे मारा वो 3. But it just wasn't enough. Difficult for them to really find repeatable success. कहाँ का टीम है ये FPX? ये टीम है चाइना का. A couple of times has been shut down. Like I said, Life previously the hero with that 4K. Loud course correction. Find themselves an 8-4 advantage here in the first half. Big turn of events. Loud putting themselves up to 8. कुछ भी मारते हैं, कुछ leverage. A little worry early on, I'm sure, with those 3 rounds connected. However, let's hear from Loud themselves. Let's hear from Tui's. Oi, eu sou o Tui e sou jogador da Loud. Acho que pecamos muito no primeiro mapa, que custou muitos rounds. Eu acho que a gente estava indo muito bem nos treinos. Acho que we were doing pretty well in practice. We adapted ele encaixou bem. Só que infelizmente a gente não conseguiu mostrar nosso jogo essa série. Acho que com certeza, tipo, pra mim a derrota é sempre boa também, porque mostra pontos fracos seus, então pra mim todas as derrotas eu levo como aprendizado, a gente vai ver os pontos que erramos, ver como a gente pode contornar a situação. This is now going to get scary, right? There's the Hunter's Fury, going to be drawn out from the tap of the spike. Spray from Tui's is good. Follow up is better. They're holding on to this. Munch kick going down and Tui's. Exceptional work there. Uma derrota é sempre importante para mostrar nossos erros e ver como a gente pode contornar a situação. Então, vocês podem esperar que terá uma loja muito melhor e muito mais constante para o próximo game.
looking for more consistency, looking to be the Loud that we know they can be. A lot of doubts coming into this, a lot of question marks. But now at an 8-4, at least in this first half, Mike, they're doing quite fine. I don't think we can oversell it because there was some fight back from FPX, but yeah, absolutely. Still, they'll be comfortable with 8. Like I said previously, both Loud and FPX, no strangers to elimination games, no strangers to losses on the international stage, but it's good to hear that's kind of characterized as, yeah, we know we made mistakes here. And, like I said, obviously the follow-up series from Gen G does give a little more additional context to that. You feel a little better about Loud's loss in that series, but back today we're looking for a lot of the sloppiness that you don't expect from Loud to be cleaned up, and whether or not you can attribute that to, I mean, earlier on in the interview saying that, you know, there's jet lag and stuff. 8-4 with half time. I will say Loud का ये 13-7 का game हो सकता है. Carmine 2-0 on them. I think ये map 13-7 का हो सकता है. Expectations when it came to Carmine Core, so seeing that, it wasn't a huge shock. 13-7. I want to see more depth to FPX. I want to see more from some of these players who you can see. अगर पिस्टल गया तो 13-7 नहीं होगा, फिर 13-10, 11 होगा. अगर पिस्टल जीत गए तो 13-7. Potentially get them. First international win, is a brutal one when you're facing the likes of Carmine Core and then Loud. It's awful as well. The longer that goes on, the more elusive that win does feel. Doesn't it? Yeah. Like I said, you got a tough draw. Yeah, no one's going to doubt Loud. that. Yeah, it's definitely tough. Okay, the recon. Okay, खुद ही को flash कर दिया. Maybe there was the flash was bad somewhere. The flash was good, but people were bad. Looking to potentially re-aggress though. Yeah. Behind the wall. I mean, Cowanzine's eyeing this up. I would just say, okay, यहाँ पे खाली और player भाग जाएगा. और लेगा भाग जाएगा. Short है QCK. QCK. How quick bro? as How? hell. Autumn. Just left to rock now. वो shot एकदम crazy था. Outside of this, you've already got a clear in mid. You've already got Berlin checking on that. There is no late lurk up middle. There is no presence there. Maybe that could help him out. Double pick. But Convin, hello. Trying to find some impact this round. But Loud with 3 and potentially a plant have the numbers. Flank वो predict भी कर रहा है, expect भी कर रहा है. Chance, nope, it's shut. Less still diligent. Gonna make sure that's checked on. बराबर. And now with the lack of presence from Berlin, they're going to be looking for that. यहाँ अगर Berlin ने round निकाल दिया ना, मेरा हो जाएगा भाई. मैं पैर. Recon is common in VCT. Everybody uses. उनको वो feel अच्छा देता है. Shot. मैं बोला अगर Berlin निकाल देता तो भाई 3 दिन के लिए वालों खेलना बंद कर देता. Okay, 3K for Conjane. Again, it felt like a miscommunication at the start of that round there, Mike. Maybe there was something in mind that just didn't work out. But maybe had an awkward bounce at the end of it we didn't see, but it makes you question mark it when that's happening early. Yeah, definitely, because that was kind of the pinnacle of FPX's game in the first half, is to put Life and Autumn in a position to really deliver at the start of a round. What is that? What is that? No, that is nothing. That is pure luck and QCK का skill. Replay production. Whoever it was observers. There's nothing to be done. There's nothing. आएगा तो ले लो. पैसा बहुत है ऐसे भी. क्या editors पैसा कमा पा रहे? Kevin, early look. No reward for it though. I've got to say, I'm out of the. If I'm talking about kind of silver linings here, have been enjoying watching Life. I mean that previous series against KC. It put him, a little on the radar. You're like, okay, maybe there's some more value to that later on. Maybe he's got something cooked up here. But I want to see if he continues on this trajectory throughout the rest of this series. 9-4. But भाई weird सा भाई मत क्या करो रे. Oh भाई stinger man. एक single stinger कैसे आती है भाई? Plant होएगा 10-4 जाएगा. Uncontested for the time being. 5 flank. For potentially less to farm up here, but he's only got the sheriff though. Yeah. Which is a little tricky. Oh, see, that's what I'm saying. I want to see more of Life. The problem is that will be surely everyone turning attention. I think there's still a consideration that maybe there's going to be a late presence towards CT, but we know it. They don't. A little bit of a nuisance here for FPX. They're going to have to try to close that gap. Gets 1, Sada gets 2. Yeah, there's them putting the foot down. Not going to let much more play happen. 3. That's Sadak having none of भाई मैं आपके स्टिंगर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा. आप 4-4 मार रहे हो.
rounds around. That's double digits. And we need to see FPX get back on the board here, Mike. It's been a drought. Need to see a response here. Lucky you. In the buy round to shut down this early momentum. By the way, 800 का प्राइम फैंटम लिया था मैंने. Yeah. See a timeout. मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस स्टिंगर के बारे में. That was crazy. भाई हमारी स्टिंगर ऐसी क्यों नहीं चलती? Because this is very pivotal in terms of FPX's potential to work their way back into this half. That wink. Sadak's reaction's just so good. So good. He's just a happy That wink just says everything. Yeah, I think I'm glad you noted it as well. I think we all note now, looking especially at the timeline when we get a glimpse of game again, how much of a straight round it is, because there was that one back, but outside of that, this has been a run for Loud. This has been easy. Turning after those 3 in a row that FPX were able to go like early. I mean, earlier on in the half, we credited FPX for having a good read on the situation and, like I said, reading exactly what Loud wanted to do in terms of preventing FPX from taking that space. Happy to take the fight to them, but I mean, after that, it's when kind of Loud sink their teeth in a little bit, get a grasp on. But bro, it's FPX and ये team tournament में आने से पहले ही VCT की बाकी टीमों से थोड़ी सी weak है. EDG comparatively strong है FPX से. Them getting proactive once again. Feels extremely EDG comparatively strong है uneasy to justify doing so when you have such a pivotal round to get on the board here. And also, with how kind of linear it was around Life and Autumn, I think Loud are kind of reading into massively what's going on around the map by who they see. See in the previous immediate responses sorry, B पे जा रहे हैं, my bad. Disengage. A push कर दिया है. Do we get a brawl at the start? Once again, Stinger. A brawl, it wasn't. It was just a straight up execution. Berlin, I assume through the wall, just spam. But QCK closing the gap here. But I don't think he expects the additional play. Lysor was the surprise. Lysor को expect करना चाहिए था, man. Middle. This is good from FPX. Okay, he gets 2. Les is still alive. Let's का क्या ये सुनने वाला है? Let's see. He needs 3 more. And there's not gonna happen. Okay, Life. Nervous sometimes, even with Les. I have predicted 13-7. And 10-5 away. And that was a critical round, Mike. That was everything they needed. Definitely. And they went for a challenge on B as well. Yeah, the confidence still there. They're happy to post up and prevent Loud from walking around the map. Guys, make sure to hit that like and subscribe. That's always a threat. Unfortunately, 1v5 with Life flanking through. Not really going to happen. Okay, that's good. I mean, the ultimates are still here, so a previous round Loud okay, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना Loud 13-10 the round 2 win in the favor of Loud. got his though, so I want to see if they Max, to invest. I guess 13-7 will be the thing because FPX 2 rounds ज़्यादा gun rounds में नहीं निकाल पाएगी. अगर ये round हारी तो भाई पक्का 13-7 है. Spur them on, not quite in the early round. अब pistol भी Loud जीत गई तो it is 13-7 anyhow. Take a glance towards middle. Already clearing through tiles and looking towards top middle. It was less last time. We got the punish on this. Really trying to give away a great deal, trying to show a lot. I mean, effectively drawn 3 sets of eyes here, but FPX very quickly dip away. Try and close the door on A site. Loud और मेरा setup है. Autumn a little bit of security here. But Loud have created an opening. They're going to have themselves a 4v2 onto B side. क्या चीज़ common है? Life is here though. If Life is on the site, and they're going to note that, they're going to know he is over towards this side. Closer क्या चीज़ common है? Ult's going to be invested, going to force away Lysor. Should allow for safe passage towards the side. भाई साहब वो क्या stun और ulti क्या मौली थी भाई. हेलो ये कौन सा लाइनअप है? Of utility noted, seen early, relayed through, was telling enough. Heads up work from Loud, but can the ये कौन सा लाइनअप है कि ब्रीथ का स्टैंड थीम कलर इज ग्रीन. हां वो तो मैं बोल ही रहा हूं. QCK gets 1. क्या अल्टी आएगी? अल्टी आनी चाहिए थी मैन. That's the ult now going to be removed, and the smoke's going to be put into place. Being though, Sadak, he's got the recoil, he's got a couple of shock darts as well. So okay, कौन भाई लेकिन अल्टी आनी चाहिए. The Cove has to find some value. To get them to half. It doesn't. बोर्लिन भी गया. I think Ayang even knows that as well. ना हाफ होएगा ना कुछ. एक गन बचाने भागेगा और वहाँ पे वो लोग चारों opposite side में गन बचाने भागेंगे. भागो. That read on the positioning, the noting of the player, they absolutely had Life dead to rights. Absolutely. 11-5.
beautifully done. The hot hands go inside the smoke here. Fortunately, Life just left to cook. 11-5. उसको मॉली मिल गया भाई, मॉली फ्रैग मिला है. I mean, not much left in the bank behind this purchase. Life one away from the. अगर ये हारे तो जीजी है भाई. To get that online here to make use of 850 1000 1000 100. ऐसे क्रेडिट्स हुए तो जीजी है ना भाई. But I mean that's a big indicator to now because they know what happened the first time around. They died in there. इधर पे अब अगर चेम्बर को फ्रैग नहीं मिला तो भी दिक्कत है. Because chamber needs sniffed out very easily by Loud. Alt point to get his ult on. Alt अगर लाइन पे लानी है तो उसको और लेना पड़ेगा. एंड मेन अभी तक उसको पता नहीं है कि है कि नहीं. Because players ने प्रेजेंस दिया था अपना मेन पे. You are dead. But that's not the case at all. Maybe just going to allow for the plant to come in and play इधर पे से पूरा साइड क्लियर हो जाएगा. Trying to take as much space as possible. Not going to know anyone. Might have seen I guess CT. A को देखा कि नहीं पता नहीं. Noted. Sanak has found Berlin. That was over Berlin towards यहाँ पे pick off होते हुए and maybe just spam through the smoke, but a likely position nonetheless. Going to leave Quarantine on the site. Good clear from Lysor. First step, they've cleared the site itself, but that deeper hold. Problem being now, Sanak can drift deeper and deeper on this with the Hunter's Fury. Less still with 2 snake bites as well, so asking another difficult. किसी के खाली flash नहीं. That's enough though. Pulls the trigger. They've got to be careful on this. सदाक का अल्टी फायर लाइफ को लेके गया. क्या ले सिलो. But fine work from Loud. ये भी सेव हो जाएगा. ये 12-5 ले भाई. These key rounds and Lysor having to back away. ले भाई 12-5. Let's go. Got a grip on Loud here. No, it's difficult really to break apart some of these post plants in B main, but with a lack of map control elsewhere, limited options for FPX. 12-5. You want to see Life and Autumn really taking advantage of a lack of presence shown by Loud over on the A side of the map. And maybe not feeling comfortable enough to justify that in a full 5v5, but tough to prediction see भी heavily smooth round deficit. A couple of rifles, well, 3 rifles to come through here, and some key ultimates. One away from the pit as well for Lysor. You heard it. QCK willing to nice. And gets Autumn. Berlin down to 29 as well. It's rough. That's Close really care rough. करो. They're trying to stay close on this. Maybe trying to play in Lysor potentially. Maybe trying Close to care करो. एंट्री देखो just Loud का. W एकदम है. यहाँ वो कॉम्प भी वैसा है. ब्रीच का स्टन, फिनिक्स का फ्लैश, फिर रिकॉन आएगा, फिर एक स्मोक आएगा, फट से इंटर. मतलब हाँ, ब्रीच का स्टन, फिर रिकॉन, फिर स्मोक, फिर फिनिक्स का फ्लैश एंड इंटर. वो वैसा है. मैंने ऑर्डर थोड़ा प्लस माइनस किया. They haven't really got a glimpse towards A. You do have a deeper hold though. Les has been holding that, so if anyone does go for बट दोनों ही फिनिक्स अब जा चुके हैं. Deep fact finding, he might be rewarded, but timing's everything. Does Lysor get this? Oh god. They've walled him in here. वॉल से उसको हाइड किया है भाई. जैसे वॉल गिरेगा. It's enough to stall. They're banking on this, but the nice shot. Nice shot. लेस भाई लड़कर. एक फ्रैग मिला. खत्म कर दिया भाई मैप. जीजी 13-5. Downfall of FPX on this map. Thinking they had a little bit of an opportunity there. It comes crumbling down in front of Les. Looking to nice shot. Les with the 3K. भाई यार लड़ क्या पकड़ा है. It's clean work for Loud. They are looking very guys. Very decisive performance here. Just a minute. मैं एक एक्चुअली एक चीज़ है, एक काम है, वो मेरे को करना है. तो ब्लैक स्क्रीन करेंगे हम एंड वो काम मैं मेरा ख़त्म करूँगा पट से. भाई कॉलेज का कोई तो प्रोजेक्ट था, वो मेरे को अभी मैसेज है कि यू हैव टू कंप्लीट इट. हम वही कंप्लीट करेंगे. एक सेकेंड.
Make some loud. Let's go. गाइस रुको. बातचीत करते करते वो मैं मेरा काम जो है वो कंप्लीट कर दूंगा. बट आई वुड जस्ट से यू वन थिंग. अगर तुम लोगों को भाई एक हेल्प मेरी कर सकते हो, प्लीज टेल मी हाउ टू क्लिक फोटोज फॉर थंबनेल्स. वो एक हेल्प कर दो मेरे को चैट के अंदर. मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एंड आई विल बी वेरी मच हैप्पी दैट यू गाइस क्लिक फोटोज एंड ऑल. भाई वो चीज़ एक बार मेरे को बता दो सिर्फ. देन that would be much easy, much more easy for me. कोई वियर्ड सा एक्सप्रेशन देखो, फोटो उठा लो, इजी. वियर्ड से एक्सप्रेशन मतलब कैसा दूं? वियर्ड से एक्सप्रेशन में क्या आता है भाई? somewhat like this, somewhat like this. go to carry his life. नहीं भाई वहां पे नहीं जा सकते. वहां नहीं जा सकते. आपको भी पता है वहां क्यों नहीं जा सकते, हमको भी पता है वहां क्यों नहीं जा सकते. वेयर इज चैट जीपीटी? काम मेरा वो उसी से होगा. रेफरेंस के लिए देख लो. देखता हूँ रुक जाओ. थोड़ा बातचीत ही करते हैं तब तक. गाइस एक ही मिनट खाली. चलो मैं गया पीआर में.
कहाँ क्या कर रहे हो? बैठो ना, मैच देखो, लाउड का मैच है यार. अब ऐसे कैसे? लाउड का गेम है यार, तुम जा रहे हो बात यार, तो समझ में नहीं आई यार. लाउड तुम्हारी फेवरेट टीम मैन. Guys, make sure you hit that like and subscribe यार. अपना गाइस 1 ही मिनट में काम भी खत्म हो गया, कुछ वक्त नहीं लगा. एंड वी हैव डन इट. Like frankly speaking, we have done it. चलो भाई लोग, लेट्स गेट टू द मैच अगेन. अपना मैप नंबर 2 आने वाला है अब, एंड इट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग. चाट को आप भी चटको, थोड़ी देर के लिए आप भी चटको. हेलो. अले भाई साहब, अले ले ले, अले ले ले. आप थोड़ी देर के लिए आए, ब्रीज का मैप लाएं. Make sure you guys hit that like and subscribe. Guys, मैं 1 मिनट आया वॉशरूम जाके. I'll be coming in a moment. तुम लोग मैच देखो and मैं आता हूँ. Walked out with 26 kills himself. He was looking unbelievable, and I don't expect him to do any less than that here. It's going to be a tall order for FPX, and also Mitch has got another less reference in there. I hate the man. Let's send it back over to your commentators for this one, Pansy and Hypox, so that they can ridicule him appropriately. I don't know. I can't. We're in a good mood today. Yeah, you guys are throwing cheerful. us some negativity over here. Like, Don't come over here, GB. It's looking some wrestling things about to go. Other side of the fence. Down. Other side of the fence. Yeah, you keep over there, all right? You be nice to Mitch. He's sensitive. He's a sensitive boy. This map, this game is worrying me, Mike, because I wasn't enamored. Yeah, I mean, because Loud just hit the Uno reverse with Breeze, yeah, basically. And we're pretty like, much. yeah, we'll bust out like the most boring run-of-the-mill comp, and
look really proficient on it. Yeah, rely reasonable. on the fundamentals. People basically just walking around, finding basically a deathmatch lobby is what it felt like last time, and Loud excelled at that. Why would you entertain that concept? I mean, don't get me wrong, Autumn and Life are very good, but they're going to need to do a lot more than that here. Let's see what they got. Loud on the attack, of course. FPX on the defending side, and already it's looking like last map. At least the start is. Autumn, you got something for us? Okay, good connection towards QCK. Can't deal with Cowanzine though, and again, I'm waiting for that plant. I don't think anything's going to stop it. No, that flank gets called off from Lysor. Ayang did find a connection. So down to 3 now, and yeah, look at the HP. Maybe Sadak's just going to leave himself as a body on the site here, forced to swing and does go down. Game back on here. 2v2. Oh, that was maybe a little individual from Ayang there, but Lysor, what have you got for us? Not a defuse. Yeah, upgrade to a ghost, but guys, the game has begun. Players out of this position, not going to be very easy. And the worst 2 to be left in the post plant again. Let's really go. Very difficult. It does. 2-0 time. Free information. I saw Pull desperate to try and get something. You can't blame the man for trying, but yeah, Loud not going to let this one slip. दोनों मरेंगे लेकिन राउंड नहीं जाने देंगे. Really see Loud rely too much on sight hits and full-on executions previously versus Gen G. No. Pissed around if it is any sort of indicator for an adjustment in their approach here. But yeah, really looking towards Life and Autumn to be very self-sufficient as well in these roles. FPX भी like यार मैं फंस क्यों रहा हूँ? Why we are getting stuck? He's obviously not going to see it necessarily in round 2. No. Going to see any sort of investment coming through, so it will just be classics. Double duelist, double controller comp on the board, though. With a Sova, where you have a Yoru to work with. So bhai, Yoru to work with is a good thing. Ab do vandals we talk about it. If you're Loud, you want to be very clean in this. You want to maybe try and opt to build ults in the right direction. If you're FPX, you want a little bit of mayhem. And they didn't get what they wanted. Attempted a pop flash and a swing. Nicely spaced, handling it well. Not going to fall foul to that. You've already got a tube, so that's going to be a problem. If it even comes to it, you can see County just standing there, wants to fight on it. And yeah, less claiming Lysor. भाई साहब एक ही गन गिरा ना ठीक है. Stinger को बदल लेना Bulldog में. That's about all she wrote, at least for the first 2. Now we see the buy-in, though. This is potentially where FPX can set their own turn, or tone, should I say, to this. Because first map, they did it quite well initially. It was the ability that they couldn't adapt beyond that, though. QC के हाथ में Bulldog दी गई है, ताकि क्या है कि entry देने में easy हो. To be proactive, there just isn't enough tools really within that composition to you know, set Life and Autumn in motion. Here we have 2 way more self-sufficient duelists. Obviously only really the Sova to set them up, but Autumn going to open things up here onto QCK. Now not letting off the gas though. That's what you like to see, but there's a lot of players here. Life's going to get the follow-up contact, going to smoke it up. Nice shot, Conzin. Going to get that pick, I believe, over from May. Nice shot, Conzin. Still going for it as well. That's not bad from Autumn. Right place, right time for him. That's the spike noted. Another player followed up. He's starting to heat up. 2 already in this round, potentially a 3rd. Shot, Sadak. Now doesn't with the Bulldogs, so the plant looking like it's back on the cards. Ayang has a lot of utility to bring into this. Plant hoga. He does have that split through mid with Lysor, so they could potentially really isolate some of these players. Plant hoga, Sadak पे कुछ नहीं है. There it is. तू इस पे था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता. Shot रे Lysor. Lysor will punish. FPX answer back with 2. Like करें guys, like करें, subscribe करें. Slow things down. The opener onto QC's take a little bit of bite out of that, execute that split through mid. I'm not even sure if that was ahead of any intended. That can't see. Okay, that's unreasonable. Lysor's timing on this was great. And able to snap back to Sadak at the end. But keep in mind, that was a bonus. Certainly not a fleshed out purchase. No, missing in areas. Drew blood as well. So, you know, if we're talking in this game, great for FPX. We're talking if it's anyone else, you're looking at, okay, there was still a lot of casualties in that. They're still going to be suffering in the economy. You're already looking at Life down to the Guardian there. So, again, there are some takeaways that still look quite good for Loud in this. Okay, but got to keep our eyes on the main man. Also, pivotal is starting off the last one. Spotted here. Bucks में गया और Bucks से सीधा TP. Bucks से सीधा TP. आप कब मारोगे shot?
महाराज क्या खेला हूँ मैं, देखे नहीं आप स्ट्रीम पे आए नहीं. Yeah, down to 17 HP. Oh, nearly caught on the retreat as well. आप स्ट्रीम पे ही नहीं आए. The early success they'd want, right? आज होगा आज मार्केट सिमुलेटर होगा आफ्टर वॉच पार्टी. आज मार्केट सिमुलेटर not करेंगे. getting that mid access they'd like to maybe try and split in towards that A site. Now forced close towards Lysor. क्योंकि आज मेरे को लगता है forced in towards life. Counting down हाँ low, has a सोना lot of मैं kit to play with, so wants to try and use it यार to मैं आया facilitate his play कितने towards बजे site. Life's in danger here, पाँच but he's बजे still तो आया finding था मैं value. QCK goes down, he's dodging just about everything. How the hell are they? भाई अल्टी कहाँ जा रही? As well finding Sadak. This is much better. Thriving in the chaos and still कौन सी कहीं अल्टी नहीं लगी यार, ये तो गलत चीज है. Loud being held at the door. And Lysor just ensuring that by playing up a little भाई bit धीरे-धीरे closer. करके बीच आए. Becomes the pivotal player. How do you know to say that? Autumn. She's finding a TP over toward B side. Lysor might be dead here. The pop flash gonna buy a couple of seconds. And speaking of seconds, they're down to 15. Nice shot. Lysor on a platter. They've got to know about Autumn, but he's still firing. Great work from Autumn and Iang there. That's भाई right. साहब Autumn That's what you want to be seeing. क्या मार रहा है? Really well played, Berlin. Move in after I Noting there the rotation. Whether or not Autumn This will is be able to crazy. cycle back across, but he becomes the hero here on A side. This is fucking crazy as fuck. FPX digging their heels in early on here on Breeze, keeping things 2 apiece. QC क्या भैया? Fortunately, I हमने ये 2-0 count किया है. I think caught the first tag, but nothing on the second there. As you noted, Lysor able to thrive in the chaos. हमने ये 2-0 count किया है, ये 2-2 ना, ये 1-1 ना होने दें. Still coming back in with some investment here. Kaunzine, तो इसकी Vandal. Rifle in the hands of 2Es. We have the null command, whether or not we do see it this round. Will be called upon once again. Oh my God! Nearly getting the kill. 24 HP left on Autumn. The whiff. That was a laboured spray. Nice but one, just Konzin. pulled it down at the end. Autumn is. भाई बच गया, चप्पल नहीं खाया. Map much more. I want to see more from him. Lysor going to deal with Kaunzine. Really? Nice shot. Close right में है पता है. Space, but haven't really been having much of an attempt towards his B site yet. It's been relatively untested. Maybe Sadak, the one shot he does. That's a problem. That isolates some of these players. Now where do they opt to go? 3v2. Look at the timing on this. Does Berlin? Yeah, both of them. Both of them. Audacious play and it worked Berlin, really well. hello. They got a good read on this now. But again, Sadak, did you forget about Sadak? अबे भूल गए क्या? Did they forget about him up there? He was earlier up towards shoot. There was always that potential. He could have driven बस सच्ची भूल गए भाई. वो ऊपर चढ़ा हुआ था, क्या सीन है? इन्फो तो था ही कि वो ऊपर है. Regardless, almost a perfect pinch. तो मेरी भी सुबह के 4:30 ही हुआ. Way towards bottom mid. Also with the last bullet here. ईश भाई तो हाँ अबे यार मेरे को एक्चुअली वहाँ का टाइम शेड्यूल नहीं पता है. क्या डिफरेंस है कनाडा का? Minimal investment, able to get a third round on the board. Very aggressive shot. Oh! Look at that shot. He looked blind for the second, but what an absolute ripping start. Taking away Kaunzine and Sadak. Bhai this is a sahab. way different look to FPX, who weren't as proactive, at least to this extent, in that previous Ay. Go back. Quite something to witness. QCK less than 2. He's left with very little here. Let's try to catch somebody on the retreat back towards A site. 30 minutes का difference है मेरा and MBM का फिर. Okay. That means 12 घंटे 12.5 घंटे के मतलब वही आपने लास्ट में लिखा है 12.5 घंटे. ठीक है 12:30. भाई ये क्या विफ है? Short release. Okay. If he gets this ace, it's code blue at the start. You know what I mean? Grumpy by bhada for life. Something might be happening. Don't move. Literally, don't look at them. They're understanding the process. They've gone, this is up to something. Let's hold for a moment. That spike is within touching distance. He's got to be careful. Spike ले क्यों नहीं रहा भाई? I think jump spotting, but not particularly deep. He has left the spike up here. So he has to go B only. Back off side कैसे clear करेगा? You know that generally Berlin had been over towards that B side. I guess ये Viper जो है मार देगा. On the pillar, so Viper मार देगा. That's still going to be the end goal for him. Lysor just needs to play time on backside here. जैसे ही plant होएगा. Oh god. Oh, nearly caught in the बच open. गए. He's got to get the plant.
that's not. He's let it go too far. A nice attempt. एक ही मिलेगा, ठीक है. Plant करके credits तो ले ले. ठीक है, it's okay. Don't take credits, but save the weapon, man. Rather impressed with what I'm seeing from FPX here. Look at a little more of a commitment to already. मैं तो ना सहता यार. To this open, yeah, fully blind on the second. तो second वाले में पूरा flash को क्या मार दिया? But yeah, a little bit of a further commitment here on this early round aggression that we didn't see on the first map. 3-3. Is it Loud 2-0? Let's go. Can we see Loud ka 2-0? Can we see Loud ka 2-0? Fully committed to that sort of play style, but again, on Breach you can get away with it. There's so much freedom here. Can we frickin' see Loud ka 2-0 over here? Early pit invested, so that's the B site. Looking unapproachable at least. Oh, flash नहीं हुआ, flash wasted. Which is what Les is trying to test. QC के हर बार bridge का angle mark out करके आगे चले जाता है. ना, actually दिक्कत क्या है ना? Oh भाई. Just his form individually is really starting to heat up. Yeah. I love this from Loud though, spotting him over towards Nest. Autumn crazy shots मार रहा है with life as well. Both the players are hitting some crazy shots. Nasty shots they are hitting actually. थोड़ी सी खुद की HP गवाते हैं, but बचा लेते हैं. Down to 56 HP. Might fancy his chances. Go on. Curious, isn't he? Yeah, he's fancying it. अगर यहाँ frag मिल जाता ना, यहाँ पे A पे entry easy हो जाती. It's a pressure point they want to try and explore, and a weapon they want to get into. There's still 3 players to clear on A, and they can exchange goods, right? They can go, okay, well, you can have tube, we'll go take main, but there is a player there as well. So a battle on 2 fronts, not a comfortable one. Live gonna spot 2Es. That was a little sketchy, but he's losing his support system. They found the player in CT, they found the player at the back of site, and now they got to fight on 2 fronts. And FPX win it out. 13 seconds. It's a scramble. Berlin goes down, but Life's position could still be devastating. Where's his support? Where is Life? Oh god, he's got a judge. Position gonna be seen. They now know where both of these players are. There's still a question mark for Cowanzine. Does he double back? But Les's position could be pivotal. Yeah, Lysol does get an upgrade here, so rifle in hand. चलेगा ढक्कन आपकी नहीं बार-बार इधर उधर मत हो रख दो खाली. Recon bolt available. That's going to be caught in the snake bite, but Cowanzine with the bailout. मैं ले लूँगा बाद में बैठ जाओ. Of the Lysol though outdoes Les, and now it's game back on, but time. Cowanzine can disconnect from this, yeah. This is really difficult for Lysol. He needs to find a pixel out of place or a shot for free, which really Cowanzine isn't going to give. And look at the plant position. It's something that Cowanzine can play, and Lysol knows it. Time to back away. A really nice attempt there, but still Loud just scraping that through. A very close round though. 1 round at a time करके निकाल रहे हैं. Unable to really hold down control there of A main. Life once again. Alongside Berlin. But the rounds are going back and forth. Beautiful hold initially, but like I said, once you remove that one player from A main and allow the force towards the backside of A site, unfortunately lose out elsewhere. It's Loud ultimately have no recovery factor. There's no safe spot to fall back to after losing that security of A main. Oh dear me, Cowanzine. He's going to take a little nap this round, right off the rip. Life going to get to work. You can see the purchase is missing some elements to this as well. Ayang is down without armor as well. So the money was getting a little nice shot. Berlin actually falls. That might open up a huge chance towards nice shot. QCK. Yeah, that confirms it. Can Autumn be the one to change this? His position will be considered. He's been there more often than not. But Life bringing death against Loud. QCK joining Cowanzine on the victim list, and away they go. They fancy their odds. They're not going to let him escape. He's hunting them down. Just losing out on the knife there, but still want to do some damage. अबे यार. Putting down, and they're still ये 4:4 करवाएंगे. But no start on the plant just yet. No defuse to begin until now. Autumn stands his ground. नहीं. 2 is what you got. Anything. Nice. IT. एक round इधर, एक round उधर, एक round इधर, एक round उधर. ऐसा ही चल रहा है. Back of both Autumn and Life here in this round. You know, from the front. Beautiful fight back through. Loud unable to convert this position. No surprises to see a timeout called after that. A little bit of a pace change here, but
I didn't even see the switch back from the knife there. Yeah, unfortunately, I mean, Sadak obviously fallen to the snake bite here. Can't really be avoided. Well placed by Lysor. FPX clinging to life here, and Loud, I gotta say, not having as much as of an easy time in terms of these opening engagements that they did versus Gen G. Oh, you're like I said, it was very, very cut and dry, very vanilla, the way that Loud approached this map last time. No, you're on the money. I'm really liking what I'm seeing between Autumn and Life. I can't stress it enough. And don't get me wrong, it's not that Ayang, Lysor and Berlin aren't doing well. They're doing very well at their jobs. They're playing the roles that they need to. But I'm loving seeing that kind of combination, that duo between Autumn and Life, working here in comparison when it didn't. Everybody is asking Absolutely. for two. If you let a Yoru and a Jet perform like this on the defense, you know they come into their attack in half feeling way better about themselves. Especially coming out of a map loss to open the series, sorry. Yeah, and a dreary loss. It's not pretty. 5 rounds, you're not going to feel happy with it. Yeah, sometimes a quick loss is easier than one that's... Guys, make sure you hit that like and subscribe. So to bounce back like this is really quite something. क्या आज हम 1780 subscribers hit कर सकते हैं? Chops though, to find a little bit of something to work for them here. They've been finding it very hard to handle both of these pressure points of Life and Autumn. And the test begins again. अरे भाई! This guy is just out of this world. The only real threat to that round was going to be QCK, and he is gone in the blink of an eye. Cowanzine, yeah, he's got a Guardian, but beyond that, you've got a Sheriff and a Ghost. Basically trying to mirror Life from the previous round. Find that opener in mid. We still have Guardian in the hands of Cowanzine, but right, the Blade Storm was really going to be... Okay, oh yeah, heading पड़ा. Actually found a headshot there. That was only 66 HP left on... The basic thing is, यहाँ पे अगर 2 frag मिलते हैं, जो एक तो मिल जाएगा. Okay, that's a rifle. If क्या एक और मिलेगा? Can possibly cross up to it. I don't think he's got the time to do it now, but... He's got to wait for this Toxin to rebuild. एक frag और मिला ना तो ulti खींच देगा. The end game looks like less to eventually creep towards A, but this is a... And तो भी तू इसको ulti खींच देनी चाहिए. Rotten, yeah, Life perfectly played that. Yeah, looking to police that weapon. And prevent anybody from coming through. So aware of the possibility of less. 30 seconds left. Not much left for Loud to really do here. A Sheriff and a Ghost. Is Life going to give this one away? Yeah, he's drifting. Did he get spotted? No, I don't think so. No, ping coming through. Oh, yeah. Nice. And now 2E's with 13 seconds. And the dream doesn't even get to be started. FPX, look, the early attempt, the early goer for Loud was going to be off the back of that ult invested from QCK, but he's had a quiet performance so far. Nice to, push him up in this map at least, should I say. Achha, okay, it is cancelled. And not to get it, there it is. Look at this guy. Yeah, Autumn's very nice to watch. This is what it should have been about, right? That timeout that came in, probably not for the last round, but the one between. This is what it was for, the buy round that's coming in now. And 5-4, Loud need answers because FPX have been meeting them every step of the way, and it's been individual, it's been punchy, but it's been damn good. Here. Gonna note a couple steps. Bring the alarm bell towards middle. And a further adjustment here again from FPX. Obviously posting Life up. So won't expect to see him getting too aggressive here. Especially with nobody on the side of Loud on the other side of the halls to him. And if you're Loud, you're so conditioned to be worried about, okay, exactly. Life going to be here? They're waiting to see who shows where around the map. Mid exploration. Berlin drifting a little out into Berlin 1 HP. Left. Wanting for HP. But he isn't alone. Autumn by his side, and we noted it early, and as did you now watching. Life creeping closer. There is a player watching 2E's. Who gets the timing right here? Life walking in. He's been seen, and he gets to keep his life, which is the more surprising part. So now the stack that was on this side of the map going to be rewarded, and he's actually just going for it. Sadak bhai. Sadak se extra uta ke star. What can this man do? Nothing. Oh bhai. Put down. And the side plant should be coming in very comfortably here, as the other two players quite far away. Yeah, punchy reaction there to the pressure coming through. Exact 50 HP hai. Towards the Loud spawn. Unfortunately, that site hole just crumbling
under the pressure. Lysol is a little curious. You try and find an exit somewhere. I mean, looking at the funds on the side of Loud, if you can remove a rifle, could cause some issues. Loud seemingly aware of his general position there. Save it. Enough that he's gone. I'll give it a second attempt. Yeah, and in these going for that save. It's really less to be the ones to, I guess if there's no early round aggression from FPX, it's less that becomes the pivotal player in terms of information and sniffing out where that threat is. Some round life left unchecked. Loud have shown a lot of presence up Tube, actually. Yeah. It was one of the first rounds we haven't seen them explore it, so you almost feel bad for Life in that regard. Yeah, like, because it's not rewarded. Yeah. But this much more patient play, you know, a much longer held default as well by Loud. That was extremely patient. It was, I think it was Tuis who sat at the, you know, very back by spawn, basically watching for that tube pressure, which is maybe just nice to read because they had been exploring that so often. But still, Loud find a little bit of a solution. But adding on the back of that, we've now just seen the opposite. I was going to say, what's really curious is actually looks like FS is going to continue to slow things down. आज प्लान किया मैंने पूरा गेम PRX वर्सेस TH कास्ट करूंगा पूरा दोनों मैप्स काइंड ऑफ तीनों मैप्स लेट्स गो ये मैप देखेंगे बाकी तीनों मैप्स पूरा कास्ट करेंगे Going to post up here, maybe show presence to the operator, potentially catch timing ahead of a rotation, but no, his TP's just expired. Time to jump. I have to go for this because there is pressure coming up towards Tube. I don't know if that Aldrin actually managed to spot out the players, but Autumn's digging quite deep here, and he's found his reward. That's two he's dropped and the spike found. So this should spur on the attention towards Tube, but Ayang is on the case. Gotta be careful though, two players, and it's crisp from Sadak. Life does well to find less, that removes the middle threat, but still there is pressure points to this. You can see the gap being closed, but another spot for Autumn, and another body to add to the list. Cowanzine trying to drift in, but Autumn's exceptional at what he's doing. An absolute monster this round, and in this half. I mean, that's just so tough to watch. There's two members allowed tucked into main here, and Autumn's allowed to swing all the way. Dry, by the way. Barely saw anything from Tuis. No utility to set things in motion. Out of charges. He finds 3 on the round with the operator. आज पूरा का पूरा कास्ट करेंगे. Should be. तुम लोग बोल रहे हो ना कास्ट लेट्स गो. What I love about this is the variety. ये मैच एंजॉय करने दो. Very hard to get a beat on. Now you got Life with the operator instead. Another little पेपर एक्स वाला मैच कास्टिंग पे जाएगा. बिकॉज़ अब हेरिटिक्स के बंदे भी जानने लगा हूं मैं. बू मिनी बू. There isn't bodies behind this. So that is one thing. और वो मजा आएगा करने में. Trying to pin down with the Hunter's Fury. Nothing comes through it. Sadak's in deep here. Yeah, but it's just Sadak. There's no ये 2-0 करो यार. लाउड वालों ये 2-0 करो. Life on the line for this, but he's getting nothing for it. It's just Sadak so far, and individually. FPX Berlin, लाउड Sadak लेके जाए. Where's the value? Is it trying to bait out this B play? Once they get the spike, they're sure. I mean, yeah, Les has got a very deep position, but they haven't caught anybody in rotation, so. Les भाई. Rewarded for his patience. यार शॉट मिस कर दिया. There goes that position. He has to fall off it. This plays in, I guess, Tuis, but they need that spike down and safely. I doubt Lysol's going to play ahead, so that should be fine. My mind goes to Tuis here. चलो planting. अब rotation एक और आएंगे. Spoiler here. He's going to hear all of these rotating. अब मजा यहाँ पे आएगा कि Tuis late लग करेगा. You see the pings coming through now. Yep. When's his time? Some awareness. A couple of members of FPX actually looking back here. They've slipped ahead pretty well. Berlin is. Oh, Berlin ने देखा. Breaks. Tuis in half. That was the plan. This is the shot QC के. Enough to take down Life. Autumn though, with his presence unknown, gonna find the frag towards Cowanzine. And QC. भाई no scope मारने का कोशिश कर रहे. Less left in a 1v3, and FPX looking like the real deal here. Less with a spray, but look at the facing. भाई वो कूद गया यार. 7-5. Into the half. Didn't even note it there, but the divide creating a pocket for Autumn to get behind. कूद गया भाई, कूद गया एकदम से मुंह पे. Retake here. Heartbreaking for Tuis. Nice shots. Just unreal from Berlin.
This is what I wanted out of map 2. A closer affair, a better game. Loud bye. Showing us a lot more caliber here. Loud, no way out of it with 5 Those who are new, make sure you guys hit that like and subscribe. And yup, आज casting करेंगे. And उसको है ना, literally मैं बता रहा हूँ, उस चीज को अपन clip करेंगे. भाई कास्टर्स को क्या हो गया? हाफ टाइम में कास्टर्स शांत हो गए? नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग, नॉट सेइंग एनीथिंग. हेलो गाइस, इसको पूरा क्लिप करेंगे. That was a bold statement there. Yeah, I can't believe he said that. I know. Caught in 4K. I hope someone clipped it. Yeah. Very, very interesting insight there. It was. We should stop playing with them now. Yeah, I know. It's all good. There was nothing played. Don't worry. Of course, things don't work when we're here. Look, we got to bring a little curse to it. Otherwise, you know. It's been a while since we were at a halftime match. I feel a bit lost. Yeah, I'd say, like, what do you want to talk about? You're the analyst. Have fun. I was hoping to get someone from the interview there. भाई लोग क्या बात कर रहे हैं? To the same point, obviously, after the first map and it being very, very one-sided. Now with this performance on defense, you've really got to dial in and hope that Autumn and Life can be the deciding factor here for FPX to force a map 3. I mean, sorry, I was going to say less. Loud looking a little quiet in areas, but I guess looking a bit more coordinated than what we saw versus Gen G. Gen G felt very, very individual, and like I said, it felt almost at times like a deathmatch lobby. People were running around, just winning gunfights, which again on Breeze, you know, it's Breeze. अबे इंटरव्यू का अच्छा इंटरव्यू था माँ की. Doesn't really seem to be the approach from Loud, so I'm curious. इंटरव्यू गायब कर दिया. How they apply this composition to the defense. Obviously, Autumn's going to be the इंटरव्यू गायब कर दिया. Down here and keep in check early on. I can't wait to see it. Couple seconds to go now. Was this a flash in the pan, a death rattle from FPX, or was there truly some life to them here? I want to see it. I think this first half has got me excited. Loud having to scramble for some answers, which, again, leaves you wondering, what does this second half look like? An early work from Life. He's straight up middle. Yeah. And doesn't get spotted. Going to be checked. Nice. Well done. Callantine with the first. Going to draw blood here. And put Loud, at least one man up to the good. Despite not committed just yet by FPX, so really relying on Life and Autumn. Really wants to find an opener, but right there. A strange position here, completely unconsidered by FPX. नहीं देखोगे तो ऐसे ही मरेंगे. Autumn. Dewey should be dead, right? Should be, yeah. He's dead. Quick little pop flash, spotting out Sadak, and Autumn's feeling himself. Sadak, you whip. HP, but he's done so much damage. Do FPX continue on this path? If they could turn heel potentially 35 seconds. QCK on the flank though, so they've got to be careful about an open plant here. Players on site. Okay, that's on 1 HP. The life saw down to 1 HP, yeah. Berlin still pretty healthy, but did get tagged by the spy cam. Lucky not to die to the wall. He's tracking 1 Now HP. the problem is QCK. Look at the position he's in. Okay, Lysor is done. Yep, I think Berlin knows his chances are fading here. There was a little bit of a moment in middle where maybe they could have done a bit more. दोनों को पता है कहाँ पे है, सबको पता है basically. Let's go. Hold the ground well. And again, this will be a bit of a reminder. Some of these players, I'd say, are very good, almost special. Shadow bhai, if you are there and chat, मैं और कोई भी है, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, मैंने अभी बैठे एक असाइनमेंट कंप्लीट किया था, असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट किया है. Could continue on this trajectory, but Autumn had a real opportunity. He gave him a solid start here. Definitely finding 2 follow-ups after Life did fall. Unfortunate. जब गेम ब्रेक आया था, जब मैप ब्रेक आया था, तब मैं किया था. Now we'll get the pistol on the board. Still Second smiling. half. QCK is 3 and 10 right now. They're here. Quite a few of them. Help. It isn't just less, but he's got to be a little careful because there is that kind of gap close on Autumn, right? That could be an issue. Same with Life to an extent. पता ही था TP मारे गए. So, quite the audacious attempt. Yeah, how has he gone? हर राउंड में flank आ सकते हैं भाई, हर राउंड में. Hello. Oh, that looked on. That one is
Second time of asking, and Loud looking composed. Sab khatam. That's going to go down, but that's not the end of the world. They'll be able to get themselves the defuse and close up the scoreline here. But again, keep in mind, if I'm not mistaken, first half Loud did the same as well. They got the first two. Yeah. QCK looking a little rough around the edges, to be honest, from the first half. So guys, इसके बाद जो break आएगा ना, उसमें I'll prepare myself. थोड़ा सा freshen up होके आऊँगा. कैमरा बंद करूँगा. थोड़ा सा bear out करना. Oh, there's your answer. It's almost like you know what you're talking about sometimes, Mike. I mean, I didn't know if I was going to see it round 3, but it's very early to go for this. Yeah. It's at तीसरा round operator भाई. And this is where I want to see if it works against Autumn and Life, who aren't afraid to get in your face. They might Third take round challenge, operator, I want to man. see what the reaction is once they know this has come out. Oh, what a big investment here. FPX with 2 players at least heading this way for now. QCK only on 4 kills. He's not had the impact he'd want here, and he can feel that pressure starting to mount. Life gonna cop a fair crack of damage. As does Autumn at this point, so both of them. तू इसका HP, Autumn का HP देखो, sorry, तू इसका क्या बोल रहा है? Loud, you'd be happy with that, and obviously for FPX, that's going to take the wind out of your sails. Yeah, both duelists kept in check here. Hey. Definitely going to make an explosive execute feel a little more uncomfortable. अगर main पे देख लिया ना भाई. There's deeper trips here, maybe designed to catch off Autumn, but FPX still looking to find a way onto B site here. He's trying to ignore the one and look for the others, but the TP's been taken. QCK's in a little bit of trouble here. Shot! Rather than the first or the अपने बंदे से flash हुआ. Really banking on Cowanzine, but he was surrounded by the end of it. Even with low Life HP, is 30 Life's still able to HP. do enough damage, but they haven't got that spike across. They haven't been able to ferry it forward. So even though they have the site, they have Nice shot, Lysor going down. पकड़ा था यार Lysor को. And there's the surround, right? Like, what can Berlin do about this? He's lost in the lurk. Just not enough progress made early on here. Finally. Spike not committed. I mean, I guess this was the long con for FPX to try and make something work, pull a rotation and play in either Lysor or Berlin. But it just doesn't happen. Loud too decisive on the site. So he's going to try and hold on to this rifle here. 10 seconds well, actually, left. Tui's might catch कदम save करेगा. on the retreat. But I don't think so. इसको save करने दिया जाएगा. Right. Oh, Really करने दिया clean. गया. Okay, hit a shot like Berlin that. just has Tui's number, man. Like, it's just the awareness towards him. Absolutely unreal. My people, are you ready? You must 5 और obviously, round. we're taking 7-13 यहाँ पे across भी here. खत्म कर दो. Loud kicking things off with 3 unanswered. With a team flash catching there. Not sure how effective that was on the other side, but and yeah, fairly indicative to see the spike not committed there. So kind of giving away the plan for FPX of what they want to try to achieve with those sorts of rounds. Maybe because Life and Autumn were tagged up and they wanted to try and formulate some sort of fake and, like I said, catch somebody in rotation, but seems a little disjointed. This is the first time we get to see this A take. ये Now, 7-9 हो जाएगा. it's really kind of top loaded, right? ये Life's the only नहीं ये one नहीं with the निकलेगा. rifle. ये save round भी नहीं निकलेगा. Everyone Many else people on say shares. save rounds निकल जाते A हैं. little Save bit of kit rounds to हो play with, जाते but हैं not convert. as much as I'm sure 4 you normally sheriffs want. है. एक Now, they do vandal भी have तो site है. control. Loud are respecting them enough. They've given up sight. And they've given up their first life as well. QCK going down is a big loss here because Life can continue forward. Now, it's not a recovered rifle. It can't fall into the hand, but he needs to be such an influence so they can buy time. 77 health. No combination here from Just 2 body and life is gone. Life's got to be proactive. Life of life is gone. So is less. That rifle's just a step too far away. I don't know if they can get it back into hand. Also needs to get into the action now. Also tagged up. This is a Nice problem. shot. Still going to make some value out of this. 2 left now. Berlin. Where the hell did Berlin just come from? Oh, it's just Autumn left alive now in a 1v2. Nice. भाई एक और राउंड को इतना एक्सपेंसिव बनाया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं. But the diffuse going to be coming in and Loud weather the storm. Causes some real issues on the way in. बोला ना 7-9. Let's go. अब अब ये 7-13 हो रहा है. Almost to their own detriment, to be honest with you. FPX capitalizing. Berlin unconsidered. He saw the 2s this time. On the way back in. How? He is like, how, man? Yeah, How? A crucial buy round.
they go back for that A take? They kind of got a test of it last time. Do they feel as though they maybe found something? Stacked up and actually holding on to नहीं होएगा भाई, नहीं होएगा, नहीं निकलेगा. Loud जीत जाएगा. This could be huge. This could be QCK one op कर रहा है. QCK is opping. Fake here with the TP being sent away. And the thing is, भाई साहब 5 frag पे बैठे हो. थोड़ा सा step up कर लो. You can see the reaction almost instantly from Loud towards middle. Starting to close that gap. You're going to have QCK on the way. The ult is going to come in, and already it's a site being evacuated. They're already sitting a lot deeper. FPX will get themselves पूरा plant मिल गया, site मिल गई, 5v5 का retake का मिल गया. TP when he goes back, look who's waiting. Whoa, he got QCK. अबे यार कैसे? So unfortunate for QCK. Now Autumn left on the long flank here. अब यहाँ पे Gonna बचाया जाएगा. have the lineups coming in as well. Lysor just invested that, so that's going to be a time buyer. ये try नहीं कर सकते, ये guns बचानी चाहिए. He's counting. He's going to get half on the. Guys, काम थोड़ा सा गर्म हो गया, थोड़ा सा match enjoy करो, मैं काम off करके आता हूँ. Takes away life and wants to remove Lysor, but he can't quite do it. And now you can see that back for Lysor is just going to get his body on the line here. They're going back to the defuse. Oh, well handled. Berlin closes that down. A crucial recon sent through at the right time. Heartbreaking for QCK. You see the TP sent all the way down to the beach. Autumn running down the clock with his ultimate to try and maximize that information. He allowed almost get ahead of the curve here in terms of getting the half defuse, creating enough pressure on site. The pop flash is beautiful on the way back in from Sadak. Unfortunately, he doesn't kind of stick to his guns there and hold on to that space, but tough to do nonetheless. Different approach this time from FPX, eyeing up middle. I want to see QCK activate, if I'm honest. He does need to start picking up the performance here. Sadak with a army on the other side. This is going to be everything. The timing is going to be on the wire. Perfect play from Sadak. Meets life on the challenge, follows up with the nade on Autumn. And he has just broken FPX's back this round. Berlin, that late positioning he's been kind of known for, isn't going to be a surprise now. He has to play this forward, not going to be able to do it. Niang, nice connection on towards one, and the follow-up, hold on. Oh, okay, there we go. Easy now. We'll find it through the smoke. Yeah, Sadak's absolutely breaking the ankles of FPX on the way in through mid-split. Leading by example in that one. Healthy ultimate bank. ये चलो फिर इसका हम बॉन्ड कर लेते हैं. Dips his toes inside. I guess इतना ठंडा हुआ रहेगा बहुत है. 2 round. It is just like कि भाई मैंने अगर फेस कैम नहीं चालू किया मजा ही नहीं आएगा. Stuff here. We allowed to call a timeout. Actually no, sorry, my mistake. Did just change. It's got debated. Not your mistake. I promise it wasn't. It did say Loud. Maybe they both called timeouts. They could have both. You never know. It's a mystery. We'll start with the FPX timeout. Talk to me. Talk to me about what the game plan is here, because Loud have, even having in, let's say, heavy game plans. I wouldn't say the ideal way, because I would have liked, I don't want to harp on about it. Loud are having heavy game plans, they don't have to discuss it. He has been somewhat absent this game. Autumn and Life have had his number. But yeah, whereas he's got his hands full on the front line, right? See, FPX has to discuss it because three round बचे हैं. First bloods into round wins. They were winning out on the opening duels, but things were kind of slipping through their fingers elsewhere. And I feel like that's kind of the same here. Maybe not being statistically as good with the opening engagements, but FPX definitely causing enough of a ruckus to make Loud sweat. Yes. Now they're forced back into recovery mode in some of these, and unfortunately I think QCK is the victim of that sort of play style. FPX, you've had 1 round in this half. Your first half, we were back on board. Need to show a little something now. Timeout for the check-in. Still got life on the ult. They still have a purchase around it. So this is a goal. This should be a big round. But early exploration from QCK. Counting this time with the operator. And it is going to be the speed piece. Guys, match enjoy करते हैं. Last time, they evacuated the site.
dipped away early. This time, Let sticking around, us Life enjoy on the the way though. match. Can he close that gap? Can he find a target? Find someone to play towards? Autumn's right by his side, and Autumn's already claimed one. They could do with a little bit more. Less still lingering around, and Autumn just bringing absolute fury to this side. Less left walking away, wounded. 5 bullets to play with, and he thinks it's enough, and it is! Autumn is audacious in his work, and he's got them the sight, but the flank, QCK finally makes it here. Have you got a 1v2 in you? Have you got the ability to do something about this? Oh, he was on for it. But Autumn just that bit better. And keeping FPX in touching distance of that scoreline. Not going to suffer financially coming out there. I think 2, maybe 3 purchases available. Still got the Blade Storm, so an opportunity to force back in here. But the ult command almost perfect at shutting down, I guess, the second leg of this execute. Once Autumn TP's in, the Astra smokes come up and create a couple of pockets for FPX to work out of. Nonetheless, FPX find their 9th. Going to switch things up, back over towards A once again. Same setup, same TP for Autumn, so expecting him purely dedicated towards information gathering. Pick that up, no one saw it. Oh dear. QCK over the top found Life. And Sadak with a ghost just got Ian. What has just happened here? Well, Hunter's Fury here as well, yeah. They can clear out a lot of A. Yeah, Lysor has to play much closer, not the lineups he'd probably be wanting to go for. They have to play right next to them. Lysor is panicking surely in this one. He's got an army against him. Bodies on bodies here. QCK trying to play ahead, gets a little bit of a glimpse, but it's Autumn you got to be worried about. He makes his appearance known. Oh, and that's just perfect again! From 4 kills to 3 kills in this round. Autumn is just out of this world. What a player! Elimination on the line, and he's stepping up to the plate. 25 and 15 right now. Keeping the hopes alive for FPX. I was gonna say, Mike, you know, that last round, call it a good round, but also got to know Autumn got 4 kills there. And I said, well, surely you can't do it again in my head. I was thinking, well, can you depend on that? Apparently you can. This adjust through middle was just really rather God-sent. All things tied up now. Operator in play for QCK. He's going walkabouts. He's committed. He's committed on this one. So deep out of here. Lord. And Dash is expired. He's punished. He's desperate to make up for it. You can feel it. Yeah. He's trying so hard, almost too hard, to try and be the difference maker, to pick up the scoreline that's just not sitting well with him. And he's been punished thoroughly on that. A little ambitious. Cow and Zine. Looks like off exploring here. Might hear this. We'll definitely hear Lysor invest the wall. Always an awkward angle though. Loud, a little ahead of themselves. And a misread. Here. They're responding to what they're FPX seeing. have sold this, yeah. Yeah, they've seen utility, they've seen players, and they've got Life on the site. FPX. Now they lose the camera as well. That would have confirmed that this was a fake. Loud have fallen for this hook, line and sinker, and Life looking to be the Reaper on the site, but he can't quite close out Tui's. Nor could he find Sadak in time, but by now the round, your heart almost drops when you hear that spike going down and you are on the other side of the map. Can they at least recover the operator? Is it even worth it to keep into hand? I mean, it's not been going well for them. Opting for it here. FPX gonna be taking the lead now. Really activating, yes, individually in a couple of these, but now we're seeing this kind of, I'd say, across the board effect here. No, unfortunately, you have to consider things in the next round as well. You look at the funds available. Oh, yeah. Yes, there will be a rifle and the operator to carry across, but it's the FPX finding 11, potentially 12 off of the back of this round 21 victory. On the brink of guaranteeing a third. Yeah, you see, it looks even worse from Lysor's perspective, just how deep QCK is looking to dig for that opener. I think you're right, it almost feels desperate. Trying to put something up on the board. It's time to check in for Loud. That's 3 in a row for FPX. They found the solution.
They found something that's been working for them. It was a little bit of a drought for those first 4, but again, hey, call it a pistol, call it what you want, the kind of knock-on effect, but it was what it was. Brought the scoreline right back. But Loud need their own answers now. Looking outplayed here, if I'm honest. Yeah, I mean, a standout performance from Autumn. Loud unable to really pin him down in certain situations now has allowed FPX to find a way back in to this half after a, I've got to say, a very impressive first half overall for FPX. Hands down, this is a rude awakening for Loud and a much better performance from FPX. The first map, it almost feels like a lifetime ago now, right? You can put it where it is. Yeah, this is the point of the series now where you can say, yeah, map 1's out of the mental. It's not a consideration anymore. 10 to 11 is still close enough, right? It's the issue of money. This looks like it could be 12 unless QCK and Tui's can find some big value here. And they're going back to this A piece. That's where Les is. That's where Sadak is with a Sheriff and a Ghost. Struggled as well. I mean, obviously, the previous 2 rounds, FPX did find success on the back of Autumn's ultimate. Not available here, but FPX fancying their chances nonetheless. 2 awkward tripwires here. Drone might not even spot these. See if they get some value off it. Sadak looking for it. He's been tagged up though. Berlin going to get towards site. That's going to be the plan coming through. Is anyone going to try and deny this? Anyone going to put their life on the line for it? Looks like they're trying to. Sadak, oh, the gap closed. Gets towards Berlin and gets out of there with his life. Tui's finding Autumn. Hold on. Loud, where the hell's this coming from? Light from up above though. Going to remove Kalanzine from this. You still have QCK. You still have Tui's with the weapons. And Loud still have side control. They're creeping back closer. Counterpit going to come in, but there's still a gap to be filled here. Lysa is still a problem, as is Life. And now Tui's and less. What can you do? Desperate to try and do it for 24 time. HP. They've got to play the time as well. Trying to draw out that last bit of kit. The drop of the pit. And now Ayang down to 1 HP. Could this be the clutch of his life? Not going to happen. Less keeping Loud alive. The defuse. Far too close, but it's there. Tied all even, 11 apiece. What a crazy exchange. Luminous. So nobody in a position to really punish off the back of these trips that are placed. I'm not sure if both were activated. One definitely by Autumn. Man, Les and Sadak making that side look how is full Sadak health with a getting pistol. well, the first kill. The second, absolute madness from him. The response is there. In a round like that with that buy? And it wasn't even the operator or really the rifle. Absolute lifeline for Loud. That was heaven sent. And a total switch up here. Here. Les now far more committed towards this A side. Does that then? They're looking to put him into the line of fire. Play him in. Yeah. QCK holding down a ton of space here, but he's gonna have his hands full. Very, very strange investment of the drone here towards bottom mid. They must be paranoid about something. Maybe, come on, QCK, this is your moment to shine. They're going to be close here. He's not looking as confident now, trying to sit in a little relaying this information angle. now that something's happening. Because look at the rest of the team. Look at where Kalanzine is. They're so far back. QCK has to find... Oh, God, QCK! Honestly, he's lucky to be breathing. He's lucky to be alive. Because FPX will have that B site. They've got the divide up. They've got life on the site itself. Oh, this is on a knife's edge, Mike. It really is. Autumn, actually almost TPing ahead of the wall there. Ahead of the divide, sorry. It will be a full 5v5 in the post plant. QCK still looking for something towards elbow. That 12th round being the prize possession here. Pop flash being held. Anyone gets contact. Berlin going looking. It's QCK on the other side. And it's just nightmare after nightmare until then. An answer found over by Pillar. Sadak on the site with a tap on the spike. He's down low, but he's still going to find value for the trade. Tui still good for it. Man to the advantage. Autumn falls. It's on Lysaw in a 1v3. He's got 1. He needs 2 more. But up above, brutal angle to break and less. Pushing Loud to 12. I haven't seen Loud have to dig this deep in a while, but they've just about got to the 12th round. Able to steady the ship. Find themselves now on map and series point, Lauren, by the skin of their teeth.
Beautiful retake though to pull off. It's, like I said, a full 5v5 here with the amount of utility that's available on the B site. That wall paying off though. Sadak able to create a little bit of paranoia with that first spike tap, draw a couple of people from FPX out. Yeah. Man, this is so tense. There's still a buy here. It's just not a great purchase. What can they do? Life has his ult, and he's looking for that opportunity in middle. Can he close down on QCK potentially? Not this time! Connection found, and a man up. They're looking like they want to explore that. Finally, bhai. Already seeing a bit Camera. of away from Tui's, playing very safe here, willing to give up the site, respecting what Autumn's been bringing. He's too much of a threat. This time playing with the pack, not playing ahead. They've got nice shot, QCK. Now's the time to start coming alive here. QCK with the finest of angles to find a shot, and I think he wants a bit more. Why not let him? Can he be played in off this? Ian gives away his position. And it's precarious now. They need a plant mic. We'll get it here, but timing a little awkward. No command invested here, Loud. No secrets about this on the way back through. Sadak just stomping onto site. Shot trade. The numbers so favorable towards Loud. Okay. Closing in. It's all on Autumn. This guy has been a rock star for this side, but a brutal position, a brutal 1v4 not possible. Potentially go home on. Has he got the heroics in him? He's got so many targets, so many threats. He can't. Round gaya. Na khatam. Live to fight another day. Like I said, no strangers here to Elimination Series. Yep. The resilience on display from Loud once again. Guys, make sure you guys hit that like and subscribe. Incredible performance from Autumn and Life today. Definitely some positives to take away. Look at between Autumn and Life, 11 first bloods, really leading the charge. My main takeaway here in map 2 is, God, I want to see more of Autumn. Yeah. You know, what a talent. There, I mean, you're going toe-to-toe. Sadak built diff. Actually, he is built diff. You know, the best out there, right? If you're going to talk about just kind of firepower alone, he almost gave them Bhai, the kuch bhi opportunity khilata hai. in this FPX. Got to say, at map 1, not good enough, but map 2, God, it makes you want to see more. It's heartbreaking that we only get such a small sample size of what this team could potentially do. As a victory remains, but Loud will continue a as little a bit of a comp course correction kuch from bhi that opening khilata series hai. from Gen You G. just don't know Sure, what but he plays, man. I gotta say, it's still some concerns really here. QCK You just really seriously don't know what struggling he's to going get to into that second map. have in the map. उसकी टीम punished के time and साथ time again. भाई I think साहब you पहली notice बार as well, देखा था it's key to फिनिक्स note ब्रीच the के desperation. वो That इतने sort of, सारे that फ्लैशेस pressure, लेके the असेंट पे scoreboard घुसता है pressure, सामने वाला करे तो करेंगे dictating some of the plays being made. Obviously, we don't know एक what's being कॉम्प आई said थी internally. बाइंड पे Definitely a concern. ट्रिपल कंट्रोलर No, and I'm with you in that, and I hope that's something. Again, if you're an IGL or coach, so you could look at that and you're going to instantly is very identify much it. And crazy, now man. need 5 to लोग start देख रहे हो, make sure identifying you hit those that like issues and if they subscribe. want to फटाफट make से a पाएंगे deep run here, but they are still भाई लोग alive. लाइक कर दो They are still kicking, and we're heading back to the desk. Thanks, guys. Appreciate it. Great cast as always. And man, that was like I अब totally guys agree with you. आएगा Autumn ब्रेक really was गेम्स impressive. We say goodbye to FPX, unfortunately, but you know they fought their heart FPX out is there. done for. जो जो यहाँ पे Loud मैचेस in हारते this जाएगा वो बाय बाय होते competition, जाएगा showing why they are a force to be reckoned with here on the international stage. But भाई maybe एक तो ये गाने मेरी बैंड बजाएंगे गाने मेरे को भाई कॉपीराइट ही देंगे क्लेम्स ही क्लेम्स लेट्स गो बाय द वे गाइस मेक श्योर यू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब हेरिटिक्स वर्सेस पेपर एक्स हम लोग कास्टिंग मैं खुद ही करने वाला हूं तो गाइस अगर मेरी कास्टिंग सुननी है तो पूरा का पूरा गेम चलो गाइस लेट मी जस्ट कम मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ थोड़ा सा है ना तुम लोग खाली एंजॉय करो
गाने अभी लोग ने बंद कर दिए तो भाई हाँ तुम लोग ये एंजॉय करो मैं थोड़ा सा कास्टिंग का प्रेप करके आता हूं I think indications definitely point in that direction when you say Mitch with EDG and FPX being so strong. Yeah, I think so. Home field advantages as well. If we do end up getting there, you would be delighted to see this team be able to play with someone behind their back. All right, folks. Well, with that being said, we have Dryad who's standing by with Sadak for the Verizon post-match interview. Y que se escuchen los fans de Loud. Let me hear the Loud fans in the back as it is. There you go. It is Loud who takes the win. Es Loud los que toman la victoria en contra de FPX. Estoy aquí con Sadak. I'm here with Sadak for the post-match interview. Sadak, lo primero que te quiero preguntar es, tú has clasificado a más eventos internacionales que ningún otro jugador del mundo, de cualquier región que piensen, y en situaciones de eliminación como esta, ¿hay en algún momento en el que esa frase que ustedes siempre tienen de sin miedo a veces se haga más difícil, a veces sí salga el miedo? Mira, creo que nuestro equipo, cuanto con más presión tiene, cuanto más las cosas están difíciles para nosotros, mejor performamos, ¿viste? Es mucho la cultura brasilera, queriendo o no, siempre que las cosas están difíciles, continuamos para adelante, continuamos dando lo mejor de nosotros, así que esto solamente nos hace más fuertes. Yeah, the question that I had for him is, he's made it to more international events than any other player in any other region, and so my question was, in situations like this one, is there a point where he does feel that fear that Loud always have that phrase of no fear? Is there a point where he feels a fear? And he says, in pressure situations like this one, this is when we are able to thrive and shine the most, and it is that Brazilian culture that shines and allows them to come out of situations like this one. Now, the second question that I'm going to ask Sadak is the changes to compositions that we've seen recently, and not only for Loud, we've seen a couple of things here and there, but also this is a tournament that's building up to be very explosive, very in the face, double duelist, Reina, Euro, whatever it is. Is he expecting more of that, and are we expecting more of Loud to bring that? Sadak, por lo que estás viendo de las composiciones, que ustedes han tenido algunos cambios pequeños, de pronto algunos cambios de rol dentro del equipo, pero también el Euro, por ejemplo, que veíamos la primera partida, y en general todos los equipos jugando bastante explosivos, pensamos en Carmine Corp, pensamos en Sentinels, en todos ellos que están en tu cara. ¿Crees que van a seguir trayendo esas sorpresas, ese factor explosivo, y ustedes también van a traer un poco de eso nuevo? Y yo creo que a medida que la Master se आईजीएल भी अग्रेसिव भी खेलता भाई साहब अलग खेलता है va a pasar mucho más कुछ नहीं बोल सकते entonces los मैं equipos कुछ van a बता ही मैं tener कुछ que बात ही नहीं कर रहा quizás tener variaciones tácticas, ¿viste? Y jugar चलो गाइस ये इंटरव्यूज होने दो लेट्स थोड़ा सा मार्केट हो जाए हल्का सा मार्केट हो ही जाए जब तक द थिंग इज हैपनिंग हल्का सा मार्केट हो जाए मार्केट खुलने दो कंटिन्यू रिवैम्पिंग चल रही थी ना रिवैम्पिंग में देखो क्या क्लास चीज़ें मैंने करके रखी है पैसे नहीं बचे हैं बट रिवैम्पिंग हो गई है काइंड ऑफ पैसे तो नहीं बचे हैं अब थोड़े से ज़्यादा से बट याप अब ऐसा मस्त लग रहा है ऑरेंज है क्या बाहर saying it now
लेट्स गो। अपना ये इतना काम हो गया है, सब कुछ अपन ने सेट कर दिया है। अब खोल लेते हैं अपन। अभी टाइम पास में लेवल 23 भी हो जाएगा। लेट्स गो। तो ज़ाप सोडा फट से गया। Chic Shack Shock. Yay! 3 जूस लेके गई है भाई। ज़ाप सोडा पटपट जा रहा है। अच्छा, ऑरेंज जूस, ये बात है। सब ऑरेंज जूस के मजे ले रहे हैं बिकॉज मार्केट प्राइस से कम बिक रहा है। पानी का बॉटल भी आ जाए। रिवाम क्रेजी हो गया है। काइंड ऑफ रिवाम्प क्रेजी सा हो गया है। मजा आएगा। Let's go. कुछ अभी मंगाने का जरूरत नहीं है। सॉल्ट इज टू एक्सपेंसिव। ले भाई। टॉयलेट पेपर्स खत्म ना। जाए सीखा। क्या टॉयलेट पेपर्स मंगाए हैं मैंने। शीक शैक शॉक। मैंने 10 टॉयलेट पेपर मंगा के रखे हैं। नाउ लेट्स गो फॉर शिक शेक शॉक। पूरा का पूरा शेल्फ
जाएगा टॉयलेट पेपर्स में। शीक शैक शॉक, क्या सेटअप है, क्या सेटअप है यार, किया ही फास्ट। Is anything there? बिल्स भरे हैं। पट से सब बिल्स भी क्लियर। शीक शहक शाक पूरा का पूरा भाई भर दिया। हाँ लेवल 23 हो गया फाइनली। अब आरआर होगा तो एक्सपेंसिव का आरआर होगा, प्रोडक्ट ना मिले ऐसा आरआर होना तो नहीं चाहिए। शेक शैक शॉक ये है कि भाई सामान जहाँ भरा पड़ रहा है, इसमें अपन वीडियो अभी अपन मस्त शूट कर सकते हैं। ऑयलिंग्स हो गया। देखो द थिंग इज टॉयलेट पेपर के साथ अगर पूरी मैं शेल्फ भी भर के रखूँ ना, हिंट वो कम पड़ता है। हाँ कहीं टर्को है? टर्को यहाँ है। नाउ द थिंग इज कोला को शिफ्ट करें। शिक शहक पानी की बोतलें का
कोला भी सेट है, टर्को भी सेट है। क्या मैच चालू हुआ? प्रोडक्ट फाउंड एक्सपेंसिव 3 भाई 250, इतना अपन ने खर्चा किया, इतना अपन ने इतना कुछ लगाया, लेकिन फिर भी $250 का प्रॉफिट कमाना तो सीख गए। गाइस 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 ये बताओ, क्या मैच चालू हो गया? इस मैप गोना बिगिन? अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। सो रिवैम्पिंग का सामान मंगा लेते हैं ना, दो द डिश। फटाफट अब सब लगाऊं। लगा देते हैं। मैं बार बार वहां क्यों जा रहा हूँ, जबकि मेरे को याद है मेरे को इधर जाने का है। ये तो अभी भी फुल नहीं है ना, मतलब ऐसा है। क्लीन डिश। अबे यार मतलब क्लीन डिश मैंने बूम बम कर दिया। 2 टूर पॉपे मंगाने हैं, 2 शैम्पू, 2 शैम्पू मंगाए, 2 क्लीनर मंगाए। भागे शैम्पू की तरफ। एक शैम्पू काइंड ऑफ और मंगाना पड़ेगा। शिक शैक शक, शिक शैक शक। एक शैम्पू, 3 बासमती। चलें
बाकी चीजें तो ठीक है, बट 3 बासमती आए थे तो एक शैम्पू भी आया था ना, वही बोला, एक शैम्पू भी था। ऐसी कोई चीज़ है जो एकदम ही नहीं है, बाकी तो रीस्टॉकिंग करते जाएंगे। पास्ता और फ्लावर एकदम ही नहीं है। 4 पास्ता 4 फ्लावर। लेट्स गो। 4 पास्ता और 4 फ्लावर। भाई ऐसा सामान रोड पे गिर काहे के लिए भाई, एकदम ही गिर जा रहा है। वही चीज़ है ना, 4 पास्ता और 4 पास्ता और 4 फ्लावर में बहुत चीज़ें आ गई। मैं वापस उसको, इनको वापस से ना पूरी शेल्फिंग को शिफ्ट करूंगा, और शेल्फ ऐसी है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। चार कॉफ़ी 4 पीनट बटर। आए गाइस, मैं फोकस मैच पे भी रखूंगा। ओके, द मैच इज गोइंग टू बिगिन। अब ये बाद में सेव, क्विट टू डेस्कटॉप। गाइस लेट्स गो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। इंजॉय करें मेरी कास्टिंग, पुराना कॉम्प। दिस इज द नोड। चलो गाइस लेट्स डाइव इनटू द मैप। ये लोग को भी डाइव करने दो, हम भी डाइव करते हैं मैप के अंदर। 4 लोग देख रहे हो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आपको मेरी कास्टिंग अगर पसंद आती है, वी आर गोइंग टू कास्ट फॉर द होल गेम। We are not going to cast for 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, but we are going to cast for the whole game. आप लोगों को अगर enjoy करना है, so let just enjoy। थोड़ा मैच देखना, बिना साउंड के मैच एक्चुअली रहेगा, so that is one thing, but I am really sorry for that। क्योंकि अगर कास्टिंग सुननी है ना, तो बिना साउंड के ही सुननी पड़ेगी। मेरे को भी प्रॉब्लम होगी, बट या इट इज व्हाट इट इज।
सो गाइस भी हम लोग अब डाइव इन कर रहे हैं मैप के अंदर एंड पेपर एक स्टार्ट्स विद अटैक और डिफेंस में हमें हेरिटेक्स की जो टीम है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर पिस्टल राउंड जो है वो उसकी शुरुआत होते हुए वॉल की गई, सीधा ट्रैप तोड़ते हैं साइफर का एंड प्लांट जो है वो गेको के विंगमैन द्वारा करवाया जा रहा है। तो विंगमैन हैज प्लांटेड इनिशियल 10 सेकंड्स के अंदर ही जो साइड एंट्री है वो हो चुकी है पेपर एक्स के द्वारा। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक तगड़ा सा पोस्ट प्लांट जो सारे के सारे प्लेयर्स काइंड ऑफ कहीं ना कहीं मेन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली समथिंग इज प्लेइंग फ्रॉम द साइड विद मोनियत एंड बाकी प्लेयर्स जो है वो मेन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके नाउ समथिंग इज आल्सो मूव्ड दिस वे कि वो भी यहाँ पर मेन की तरफ से अभी मेन की तरफ से ही खेले जरूर से। मोनियत वहां पर कोशिश करते हैं, डिंग करते हैं मिनीबू को, लेकिन मिनीबू टेक्स डाउन मोनियत। बेंजे फिशी भी 4 सेकंड को यहाँ पर टेक डाउन कर जाते हैं। 3v2 की ये सिचुएशन जो है वो आखिर में रह जाती है। माइंड फ्रीक विद डबल, बेंजे फिशी अकेले बचते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और वो आखिरी फ्रैग जो है वो यहाँ पर हमें जाते हुए नजर आता है समथिंग के हाथों में। तो पिस्टल राउंड यहाँ जाता है इन द फेवर ऑफ पेपर एक्स। पेपर एक्स के फेवर में ये पिस्टल राउंड जो है वो जाते हुए नजर आया। हेरिटेक्स कोशिश काफी बेहतर थी लेकिन कुछ यहाँ पर गलतियां जो है वो उनकी तरफ से की गई, यहाँ उनको सुधारा जा सकता था बट इट इज व्हाट इट इज एंड वी मूव टू राउंड नंबर 2 नाउ। बाय द वे अगर आपको कास्टिंग पसंद आती है तो यार जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ सेकेंड राउंड, ओनली वन शेरिफ टू वर्क विद फॉर मिनीबू। बाकी यहाँ पर आपको अगर देखेंगे पेपर एक्स के द्वारा तो 2 गोस्ट है एंड एक स्पेक्टर, एक बुलडॉग और एक स्टिंगर के साथ यहाँ पर हमें पूरी की पूरी टीम जो है वो खेलती हुई नजर आई। ट्रिप में फंसते नजर आए लेकिन 4 सेकेंड बेंच फिशी को टेक डाउन करते हैं। हील जो है वो मोनेट को मिल जाएगा। यहाँ पर प्लांट फिर से हो चुका है बट नाउ पोस्ट प्लांट का ये सिचुएशन है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा हमें नजर आ रहा है बट ये जितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है उतना ज्यादा एक्सपेंसिव बनाने की कोशिश रहेगी। बू एंड मिनी बू टेक्स 1 ईच। ये अब कहीं ना कहीं डुएबल देखने को मिल रहा है, डुएबल नजर आ रहा है। अगर बू कहीं ना कहीं एक आधा शॉट और कनेक्ट करवा देते हैं अपनी पिस्टल के साथ, उस वेपन के साथ, देन ही विल बी वेरी मच फेवरेबल टू विन दिस राउंड। वहां पर रेंज जो है मोनियट को टेक डाउन करते हैं बट माइंड फ्रीक कम्स आउट हियर। 1v2 की सिचुएशन, डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज टेक हो रहा है। यहां पर हाफ हुआ लेकिन बू आते हैं, बू माइंड फ्रीक को टेक डाउन करेंगे और ये जो राउंड है वो अपने नाम करेंगे। और थ्रिफ्टी फॉर हेरिटेक्स राइट आउट देयर। पेपर एक्स के साथ यहां पर गलत हुआ क्या? गलती सिर्फ एक कर आप कहीं भी फाइट जो है वो नहीं इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप एक कर फाइट्स इनिशिएट करते हो, द फ्लैश वाज द मेजर इशू फॉर द भाई, वहां पर वो फ्लैश हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो एक कर फाइट्स इनिशिएट की गई वो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतों में रही फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स एंड उसी की बदौलत यहाँ पर मैच जो है वो हारते हुए नजर आए। सॉरी राउंड जो है वो हारते हुए नजर आए यहाँ पर पेपर एक्स के वो खिलाड़ी। बट अब कहीं ना कहीं हाफ बाय या फुल बाय की तरफ ये है। एक स्टिंगर यहाँ पर है और एक बुलडॉग भी नजर आ रही है। ओके 2 स्टिंगर्स और एक बुलडॉग नजर आ रही है। वहीं पर हेरिटेक्स की टीम 1 बुलडॉग और 4 फैंटम एंड वैंडल्स के साथ खेलते हुए देखने को मिल रही है। मिड टू बी की ये जो रोटेशन है वो शुरू हो चुकी है। मिड टू बी एंट्री यहाँ पर मिलते हुए नजर आई लेकिन उसी एंट्री के यहाँ पर प्रोसेस के अंदर 4 सेकंड is taken down. Boot okay, Minibu takes down Dawai over there. Something की बारी आती है। If something takes down 2 over here, तो काफी ज्यादा मजेदार हो सकता है लेकिन उनको वहां पर एक ही मिलता है and he is traded by Benji Fishy. मोनियत वहां पर रेंज को टेक डाउन करते हैं। बू जो है वो मोनियत को टेक डाउन करेंगे। एक 3v1 की सिचुएशन फॉर माइंड फ्रीक विनेबल हो सकता है लेकिन नहीं, उस वॉल के थ्रू स्पैम आता है बेंजी फिशी का, वो माइंड फ्रीक को टेक डाउन करेंगे एंड माइंड फ्रीक इज टेकन डाउन। सेकेंड राउंड फॉर टीम हेरिटेक्स। ये राउंड में फोर्स करने का जो इरादा था पेपर एक्स का कहीं ना कहीं बैकफायर जरूर से करके गया। यहाँ जो अल्टी आई थी, जो अल्टीमेट था, वो अल्टीमेट यूज किया गया था और उसी अल्टीमेट की बदौलत कहीं ना कहीं जो डिटेन हुए प्लेयर उधर दिक्कतें जरूर से आई फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स एंड पेपर एक्स जब वहां दिक्कतें आई तो राउंड जो है वो उनके हाथों से जरूर फिसलता हुआ ही नजर आया। ओके वो किसकी अल्टीमेट थी? व्हाई ही वाज डिटेन्ड? आई डोंट नो।
अब शेरिफ्स के साथ यहाँ पर जो टीम है पेपर एक की वो आगे बढ़ती हुई कहीं ना कहीं एक अर्ली डिफॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है 3-2 का एक ओके यहाँ पर 3-2 का स्प्लिट जो है वो देखने को जरूर से मिलता हुआ बी मेन पे यहाँ पर जो 3 प्लेयर्स है वो नजर आ रहे हैं और 2 जो खिलाड़ी है वो यहाँ मिड के एक्सप्लोरेशन पर निकले हुए हैं बट दे ऑल्सो जस्ट कम्स आउट वहां पर वो कवर में जरूर से आते हैं और वही बी मेन पर रीग्रुप करते हैं माइंड फ्रीक ओके मोनियट इज 8 HP राइट नाउ हील उनको मिल चुकी है क्या यहाँ पर एक शॉट कनेक्ट करवा पाएंगे द आंसर इज नो बेंजीफिश यहाँ पर माइंड फ्रीक को टेक डाउन कर जाते हैं प्लांट जरूर से मिल जाएगा यहाँ पर पेपर एक्स की टीम को बट ये 4v5 विद वीकर वेपन्स ओनली शेरिफ्स काफी ज्यादा टफ रहने वाला है रेंज कम आउट देयर पैडेटिक वहां पर फोरसेकंड को टेक डाउन कर जाते हैं फोरसेकंड इज टेकन डाउन एज वेल दवाई और समथिंग 2v5 की सिचुएशन विद दोस टू शेरिफ्स अगर कुछ मैजिकल किया देन इट विल बी द थिंग टू रिमेंबर लेकिन अगर ना हुआ तो सिर्फ कुछ वेपन्स ही गिरा पाएंगे और ये राउंड भी यहाँ पर उनके हाथों से जाते हुए नजर जरूर आएगा इट वोंट हैपन सिर्फ राउंड ही हाथों से जाते हुए नजर आएगा एंड मिनीबू इज टेकन डाउन इन दिस राउंड तो ज्यादा कुछ यहाँ पर नुकसान होता नहीं है फॉर द टीम ऑफ हेरिटेक्स और यहाँ एक और राउंड टीम हेरिटेक्स अपने नाम करती हुई नजर आई है एक टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर पेपर एक्स के द्वारा एक अर्ली टाइम आउट एक्चुअली अगर हम कहेंगे तो बिकॉज सिर्फ 4 ही राउंड्स हुए थे और एलेक्स हम सभी को पता है कि एलेक्स जो है वो कितने ज्यादा यहाँ पर एक इन्वॉल्व कोच है एक एक्टिव कोच है ही जस्ट इज सो मच इन्वॉल्व इन द गेम वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं गेम के अंदर जिसका यहाँ पर कोई भी जो एक पहुंच नहीं सकता वहां तक वो उतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनके रिएक्शन से वो चीज पता चलती है कि यार ये बंदा कितना ज्यादा इन्वॉल्व है ये आदमी इस गेम के अंदर कितना इन्वॉल्व है एंड ही इज इन्वॉल्व फॉर हिज टीम ही वांट्स हिज टीम टू बी द बेस्ट #1 उनकी टीम आनी चाहिए वो सिर्फ इसी की बदौलत इतना इन्वॉल्व रहते हैं बट अभी क्या ही डिस्कस हो रहा होगा कि कहाँ गलतियां हो रही है वी लॉस्ट हमारा जो बाय राउंड था जो एंटी इको था सामने सेकंड राउंड हमने लूज किया हमने फोर्स किया थर्ड राउंड भी हम हार से गए उसके बाद एक प्रॉपर बाय हम हारे एंड एक शेरिफ राउंड भी वी लॉस्ट सो अभी तक का लेखा जोखा एक्चुअली यही था बट I would say 3:1 4 राउंड्स तीनों राउंड्स हारते हुए एक शेरिफ राउंड और 2 गन राउंड्स कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आए Absolutely. But for the players, maybe not so much. You know, थोड़ी सी गाइस एक्चुअली थोड़ी सी वॉल्यूम रख सकता हूँ ताकि क्या मेरे को साउंड आती रहे एंड तुम लोग को भी जो साउंड है ना वो थोड़ी सी गेम की आती रहे मेरे को अगर गेम साउंड आएगी तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ कास्टिंग के अंदर बाकी तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा बी मेन पे मोनिट यहाँ पर पहला पिक निकालते हुए ओके 3 प्लेयर्स वर फास्ट पैटेटिक वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पर मारे किसको दवाई रेजरेक्शन के साथ मोनियत को उठाते हुए एंड मोनियत इज बैक टू द लाइफ 3v5 की ये सिचुएशन जो है वो रहने वाली है एक फ्लैंक आया जरूर से बू टेक्स डाउन मोनियत he takes his counter apart but 4 second trades out instantly यहाँ पर ट्रेड आउट कर सीधा ए की तरफ रशन करते हुए ये प्लेयर्स हमें जो है नजर जरूर से आ रहे हैं लेकिन अगर आप नजर डालेंगे माइंड फ्रीक के ऊपर तो माइंड फ्रीक जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी बीमेन की तरफ ही नजर टिका कर बैठे हुए हैं और आराम से अभी भी वहीं होल्ड डाउन कर रहे हैं बट समथिंग ही विल जस्ट प्लांट ओवर देयर प्लांट कर वो जरूर से आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी एक 2v4 का ये जो पोस्ट प्लांट है वो अब शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं आगे आ तो रहे हैं लिंक की तरफ से दोनों ही खिलाड़ी जो बेंजीफिशी और रेंज बचे हुए हैं दोनों ही खिलाड़ी वहां पर लिंक की तरफ से आते हुए बट will they be able to okay they have initiated with picking up the Y बेंजीफिशी अकेले बचे बेंजीफिशी टेक्स डाउन समथिंग ओवर देयर बट 4 सेकंड वहां पर इंस्टेंटली ट्रेड ऑफ करेंगे एंड इंस्टेंट ट्रेड ऑफ के साथ ही दूसरा राउंड अपने नाम करेंगे यहां बीमेन की अर्ली फाइट अग्रेशन एंड उसके बाद जैसे ही पता चला कि बी पर इतने सारे सभी के सभी ने रोटेट कर ही लिया होगा तो इंस्टेंट रोटेशन आता है सीधा जाते हैं ए के ऊपर जो फ्लैंक आया था उसके बाद सीधा ए की तरफ पिवट किया गया और ए पर जो अपना प्लांट है उसको कर राउंड जो है सिक्योर जरूर से करते हैं यहाँ पर पेपर एक्स खिलाड़ी No, it's thank you. So this round is very much important actually. अगर हम हेरिटिक्स के
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि अब यहाँ इनके पास चारों अल्टीमेट्स जो है वो रेडी है। लेकिन माइंड फ्रीक को देखिए, माइंड फ्रीक टाइल्स की तरफ जाते हैं, ही टेक्स डाउन 2, लेकिन मिनी बू उसका करारा जवाब देते हैं। दवाई उन्हीं को ट्रेड ऑफ करते नजर आए। सो 2 बाय माइंड फ्रीक, 2 बाय मिनी बू, एंड दवाई वहां पर कहीं ना कहीं मामला अपने अंडर में रखने की कोशिश जरूर से कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग एंड ही जस्ट सक्सीडेड कि वो जो एक एडवांटेज है वो पेपर एक्स के खाते में ही रखे। एक 3v2 का यहाँ पर सिचुएशन बनकर रहा है, वेयर टीम ऑफ पेपर एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ बी। यहाँ पर अब आराम से वॉल की जाएगी, प्लांट किया जाएगा, एंड 3v2 के रिटेक में जरूर से डाला जाएगा। न्यूरल थ्रेफ्ट का यूज यहाँ पर किया जाता है बाय बेंजी फिशी। स्प्रे डाउन तो कर रहे हैं, लेकिन स्प्रे डाउन का कोई खास फायदा यहाँ पर बेंजी फिशी को मिलता हुआ नजर आएगा नहीं। नाउ सप्रेस्ड है दवाई यहाँ पर कहीं ना कहीं। एवरीबडी इज प्लेइंग मेन। जो मोलोटॉव है यहाँ पर फ्रैगमेंट जो है वो फेंका गया, दवाई थोड़े से उस फ्रैगमेंट से लो जरूर से होते हैं। पैटेटिक एंड बेंजी फिशी बोथ आर फाइटिंग। बेंजी फिशी टेक्स डाउन 2 ओवर देयर एंड पैटेटिक क्लियर ऑफ करते हैं मोनियट को। ये 3v2 का रीटेक जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही यहाँ पर हेरिटेक्स उसको अपने नाम पर कन्वर्ट करने में जरूर से कामयाब हो जाती है। फाइनली आरसीबी जीते। आई नो मैन, मैं कास्टिंग से इंस्टेंटली कैसे एक स्ट्रीमर में कन्वर्ट हो जाता हूँ और कैसे यार एक स्ट्रीमर से कास्टर में कन्वर्ट हो जाता हूँ। इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट। क्या फ्लैश था लेकिन ये नाइस। ओके लेट्स वॉच दिस। आई एम सेइंग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व एलेक्स इज द गाय हु इज द मोस्ट इन्वॉल्व्ड गाय इन द कोचिंग फ्रेटर्निटी। अभी भी 4 अल्टीमेट्स हैं यहाँ पर हेरिटेक्स के हाथ में, बट उनको काउंटर करने के लिए 2 मेजर अल्टीमेट्स और एक फ्रॉम द शैडोज जो है वो नजर जरूर से आ रहा है इन द हैंड्स ऑफ पेपर एक्स। ओके 4 सेकेंड यहाँ पर अपना नल कमांड यूज करेंगे, सीधा रशन किया जाएगा बी साइड के ऊपर। दे आर पुशिंग टूवर्ड्स स्पॉन। एक्चुअली ये स्पॉन पुश जो है वो जरूर से काफी बढ़िया हो सकता था। बेंजी फिशी लेकिन 2 प्लेयर्स 3, ही टेक्स डाउन 3। Now it's time for Reigns. Reigns take down दवाई over there. Mind Freak अब अकेले बचे हुए हैं। Mind Freak with his Viper's Pet. Actually Viper's Pet के साथ ये जरूर से आगे बढ़े, लेकिन बू आएंगे यहाँ पर Mind Freak को टेक डाउन करेंगे एंड फिर से एक और राउंड यहाँ पर कहीं ना कहीं हेरिटेक्स अपने नाम करेगी विदाउट यूजिंग ओनली मिनी बूज अल्टीमेट। बाकी सारे अल्टीमेट यहाँ पर यूज जरूर से किए गए थे विद यूजिंग एक्चुअली 3 अल्टीमेट्स इन दिस राउंड। यहाँ पर 3 अल्टीमेट्स का यूज हुआ, लेकिन उसके बाद राउंड जो है वो कन्वर्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हैवी इन्वेस्टेड राउंड था, अगर ये कन्वर्ट ना होता तो दिक्कतें ज़रूर आ सकती थी, बट नाउ दे हैव वन दिस। एंड अब जो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी पेपर एक्स को वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। बेंजी फिशी सेलिब्रेटिंग, एंजॉइंग, 3 मारे थे, एंजॉय करना बनता है। ही इज जस्ट हैविंग फन इन दिस होल टूर्नामेंट राइट नाउ। भले यहाँ पर सेंटिनल से मैच हारी थी हेरिटेक्स, लेकिन काफी टफ फाइट दी गई थी। वहीं पेपर एक्स की अगर बात करेंगे तो जो पेपर एक्स हमें लास्ट ईयर दिखी थी या उससे लास्ट ईयर दिखी थी, इस साल वो पेपर एक्स कहीं ना कहीं हमें मिसिंग नजर आ रही है। एक हाफ बाय काइंड ऑफ राउंड, 3 शेरिफ, 6 स्टिंगर और एक बुलडॉग के साथ यहाँ पर समथिंग का सिर्फ त्रैश है जो रेडी है। 4 सेकंड टेक्स डाउन बू ओवर देयर मिनी बू, लेकिन फ्रीक माइंड फ्रीक को वहां पर टेक डाउन करते हैं और नंबर्स जो है वो इवन स्टीवन जरूर से करते हैं। यहाँ पर ट्रैश का यूज जरूर से किया गया इन दिस ट्रैश। एक प्लेयर जरूर डिटेन हुए, वो फ्लैश भी होते हैं एंड मोनियट विद दोस 2 विद दैट शेरिफ। पैटीटेक जो है वो वहां पर मोनियत को टेक डाउन करते हैं, बट 4 सेकंड वहां पर पैटीटेक को टेक डाउन कर नंबर्स जो है वो अभी भी अपने फेवर्स में रखेंगे। एक 2v1 जो है वो अब सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेंजी फिशी आज एम काफी बेटर लगता हुआ इनका, लेकिन अब ये जो सिचुएशन है हाई लो का सेटअप ऑन दैट बॉक्स, नियर दैट बॉक्स, एक्चुअली ये चीज कैसा रहेगा वो देखना पड़ेगा। हाई लो सेटअप, Benji Fishy takes down 4 seconds, but Dawai cleans up Benji Fishy and takes the round in his hands. 5-3. मेरे को लगता है guys 5 rounds would be enough is what I feel for Paper X in the attacking half. एक thrifty निकलता हुआ with the help of Trash of
something over there, something का वो trash जो है वो use होता है, and they just get this. Dawai is very much hyped up right now. Even Monyet is hyped up. Something के हाथ में वो अटैकिंग ऑप ऑन गेको. ही इज द गाय जो ऑप यूज करने से बिल्कुल नहीं कतराता है. नाइफ को वहां पर कहीं ना कहीं डॉज किया गया. एंड मीन का यहाँ पर एक ए स्प्लिट का कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बनते हुए नजर आ रहा है. मिड एक्सप्लोरेशन पे यहाँ पर माइंड फ्रीक और मोनियत जो है वो निकले हुए हैं. बोथ द कंट्रोलर्स आर ऑन मिड. अगर कहीं ना कहीं कोई आपदा घट जाती है, समथिंग विथ हिज ऑपरेटर, मिनी बू को पिक ऑफ करते हैं. दवाई वहीं पर यहाँ बू को पिक ऑफ करते हैं, तो 2 पिक्स वहां पर जरूर से मिल चुके हैं, एक एल्बो पर और एक मेन पर. फ्लैश, पैटेटिक इज बीन फ्लैश. वहां पर समथिंग का वो शॉट, पैटेटिक को टेक डाउन करेंगे. रेंज टेक डाउन दवाई ओवर देयर, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है वो 4v2 की ही है. एंड दिस इज द राउंड जहां पर आई गेस सेव करना वुड बी बेटर फॉर द टीम ऑफ हेरिटेक्स, बिकॉज आप अगर क्रेज की तरफ नजर डालेंगे तो सिर्फ 900 और 500 क्रेज ही बेंजीफिश की तरफ नजर आ रहे हैं. बट द आंसर इज नो, दे आर नॉट सेविंग इट. मोनियत वहां पर बेंजीफिश को टेक डाउन करेंगे. रेंज टेक डाउन माइंड फ्रीक एंड मोनियत, लेकिन 4 सेकंड कहीं ना कहीं वो राउंड जो है वो बचाएंगे और वो अपने नाम करेंगे. But it's the 2 picks they get at the start that really open things up. And that was a little unusual from Heretics. They did not read that the op was on. The operator is crazy. No utility used. Usually Heretics are the king of cooking up these on the fly. Some other where यहाँ अगर ऑपरेटर समथिंग के हाथों में डाली जाती है तो वो जरूर से उस ऑपरेटर से वैल्यू निकालते हैं. ओके, हेरिटेक्स विद दैट टाइम आउट. सो टाइम आउट आया गाइस, सो वी कैन आल्सो टेक अ ब्रेक. एज अ फैन अगर मैं बोलूँ ना, गाइस 5 लोग देख रहे हो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब. एज अ कास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी जीते मैं प्रेडिक्ट पेपर एक्स करते हो, लेकिन एज अ फैन बोलूँ ना, पेपर एक्स बहुत ज्यादा लेट डाउन कर रही है. पेपर एक्स इज लेटिंग डाउन टू मच एक्चुअली. With another null command, so that could end up being quite important here. We've seen PaperX leaning B very heavily at the start of this half, and now swapping over to mostly doing A executes. The option now of going rapidly into B once more. That's what they did last time they had the ult. Guys, 10 लाइक्स होने वाले हैं यार, फटाफट से 10 लाइक्स करो. ओके, वी आर इनटू द गेम. चलो कास्टिंग मोड के अंदर, लेट्स गो इनटू द कास्टिंग मोड. ये एक्चुअली अगर आप राउंड देखेंगे तो वो दोनों के लिए ही गन राउंड है और समथिंग के वो ऑप कहीं ना कहीं मिड पर एक फ्रैग ढूंढने की कोशिश करती हुई, अगर कहीं गलती से पैटेटिक पीक करते हैं तो समथिंग की ऑप उनको ढूंढने में जरूर से कामयाब हो सकती है. बट नहीं, ही इज रोटेटिंग फ्रॉम दैट स्पॉन. कहीं ना कहीं अभी के लिए मिड पर पेपर एक्स के 3 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए. एक बी स्प्लिट का जो ये यहाँ खेल है वो शुरू होता हुआ, एंड 4 सेकंड विथ हिज नल कमांड. बट रेंज दवाई को टेक डाउन करेंगे. वॉल पे ऊपर चढ़कर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्ले बनाने की कोशिश जरूर से थी. समथिंग को बेंजी फिशी विद दैट बुलडॉग डाउन करेंगे. रेंज 5 HP बचे हुए हैं अभी के लिए, एंड मिनी बू टेक्स डाउन 4 सेकंड ओवर देयर. ये राउंड कहीं ना कहीं हेरिटिक्स के नाम जरूर से जाते हुए नजर आ सकता है. मोनियत इज ट्राइंग कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आधा फ्रैग अगर उनको मिल जाए, सो प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है इस राउंड के अंदर. ही टेक्स डाउन 1, बट जो फ्लैश है ओमन फ्लैश, वो ओमन फ्लैश काफी ज्यादा बेहतर रहता है. बट माइंड फ्रीक का कवर देखिए, माइंड फ्रीक सेविंग हिज टीममेट मोनियत ओवर देयर. मोनियत को वहां पर बचाते जरूर नजर आते हैं, बट दैट क्राउड शॉट फ्रॉम बू मोनियत को टेक डाउन करेंगे. ओमन डिप एंड द राउंड इज वन बाय हेरिटिक्स. लेकिन माइंड फ्रीक काफी ज्यादा बेहतर कोशिश उनकी तरफ से हमें देखने को जरूर मिलती है. ही जस्ट सेव्ड मोनियत फ्रॉम दैट फ्लैश. ही जस्ट पिक्ड ऑफ द प्लेयर्स, एंड एक बार के लिए लगा था कि ये राउंड कहीं ना कहीं पिवट कर जाएगा पेपर एक्स के खाते में, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाता है. कहीं ना कहीं बू
आते हैं और दोनों के दोनों खिलाड़ियों को माइंड फ्रीक और मोनियत को एलिमिनेट कर कर ये राउंड ज़रूर से सिक्योर करते हैं। एक बार तो ज़रूर से जान जो है वो हलक में आई होगी टीम हेरिटिक्स की, यार कि इस राउंड में ये क्या हो गया, बट इट्स ओके। रेंज हैज द टॉप नाउ। एक बुलडॉग और 4 वैंडल्स हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है पेपर एक्स के हाथ में। इवन एक पूरा का पूरा गन राउंड जो है वो नजर आएगा हमें हेरिटिक्स के पास। आप अगर 22 की बात करेंगे तो अगले राउंड में 22 में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दोनों ही टीम्स को हो सकती है, तो दोनों ही टीम्स के लिए ये जो राउंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। विंगमैन से प्लांट कराते हुए यहाँ पर पेपर एक्स की टीम, बट द प्लांट हैज बीन डिनाइड। फोरसेकन को बेंजेफिश यहाँ पर पिक ऑफ करते हैं। अगर आप ट्रैप्स नहीं तोड़ेंगे तो दिक्कतें होंगी। रेंज विद दैट शॉट डार्ट टेक्स डाउन मोनियत एंड कहीं ना कहीं ये 7वां राउंड देखने को मिल रहा है। आई फील सो दिस इज द 7th राउंड, बट नहीं, यहाँ माइंड फ्रीक और समथिंग के कुछ और ही इरादे हैं और दवाई जो है वो रेजरेक्शन का यूज करते हैं। दवाई रेजरेक्शन का यूज कर कर जरूर से मोनियत को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। मोनियत वहां पर उस एक्स्ट्रा लाइफ का जो यूज है वो पैट्रिक को टेक डाउन करने में करते हैं। जैसे ही ये राउंड मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पेपर एक्स के हाथों से जा रहा है, वैसे ही कुछ फ्रैग्स आते हैं और वो फ्रैग्स हेरिटिक्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हुए नजर आए एंड हेरिटिक्स just get dismantled over there। इतना बड़ा एडवांटेज कैसे थ्रो डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ मिनीबी इज द ओनली वन जो यहाँ बचे हुए हैं। शायद इनको सेव का कॉल पक्का आ चुका होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बेंजीफिश और पैट्रिक के पास ही जो क्रेड्स है वो नजर आ रहे हैं, बाकी मिनीबू के हाथ में सिर्फ 100 क्रेड्स है। अगर ही ओके यहाँ पर सिर्फ 400 क्रेड्स है बेसिकली, एंड अगर ये 400 क्रेड्स ही है तो अगले राउंड में जो बाय है शायद उनको ना मिले। अगर ये वेपन टेक डाउन हो जाता है तो ही इज होल्डिंग दैट बी मेन एरिया। वो जो बी मेन का एरिया वो वहाँ पर होल्ड डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। समथिंग इज गोइंग फॉर दी फाइन। समथिंग को क्या ये मिलेंगे एक्चुअली, सबसे बड़ा सवाल। राउंड इज ओवर, राउंड जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो ही चुका है। पेपर एक्स गेट दिस राउंड एज वेल। अटैक में 5 राउंड्स, आई वाज सेइंग 7-5 वुड बी अ गुड स्कोर फॉर पेपर एक्स एंड 5 राउंड्स वो 5 का जो मार्कर है वो हिट कर चुके हैं बिना किसी डुलिस्ट। अगर आप 5 का मार्कर वहां पर कहीं ना कहीं हिट कर जाते हैं, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू इन अटैक साइड ऑन एनी मैप। और यहाँ अब डिफेंसिव हाफ के अंदर ये कैसा खेलेंगे वो देखना होगा, लेकिन उससे पहले आखिरी राउंड इन दिस हाफ, क्या ये 6-6 होगा? बिकॉज एक शेरिफ और एक स्टिंगर के साथ 3 वैंडल्स जो है वो नजर आ रही है विद हाफ शील्ड्स। बीमेन का कंट्रोल लेने की कोशिश एंड यप बीमेन का कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं मिल भी जाता है फॉर टीम हेरिटिक्स। टीम हेरिटिक्स को वहां पर बीमेन का कंट्रोल वहां मिल जरूर से जाएगा एंड टीम ऑफ पेपर एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए। दे आर रनिंग टुवर्ड्स ए एक्चुअली। साइड पर एक किल ट्रैप है। साइफर इस बार ए पे खेलते हुए, बेंजीफिशी ए की साइड पर खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बेंजीफिशी उस फ्रैगमेंट से थोड़ा सा लो जरूर होते हैं, बट नाउ एक 5v5 का रीटेक। मोनियत विद दैट अग्रेसिव स्टांस ओवर देयर। वो उस वॉल के ऊपर स्टैंड आउट करते हैं, उस वॉल के ऊपर से स्टैंड आउट करके ही टेक्स डाउन 2। दवाई टेक्स डाउन 2। मोनियत और दवाई की ये जोड़ी, मोनियत और दवाई का ये डुओ कहीं ना कहीं 6ठा राउंड पेपर एक्स के नाम करता है। एंड एक हाफ जो इनिशियली काफी ज्यादा खराब लग रहा था पेपर एक्स के लिए, लेकिन कम बैक आता है पेपर एक्स की तरफ से एंड पेपर एक्स जस्ट गेट इट 6-6। यही चीज है, ये वॉल बहुत ज्यादा क्रेजी है एवरी टाइम। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ओमन जरूर से चढ़ सकते हैं। आपकी जेट, अगर आपकी जेट के पास अपड्राफ्ट अगर बाकी है तो वो चढ़ सकती है, बट विद दोस 2 टेलीपोर्ट्स श्राउडी स्टेप्स, वो श्राउडी स्टेप्स यूज होंगे एंड वॉल के ऊपर ही चढ़ा जाएगा। वहां से अगर वो एंगल को ये एक्सपेक्ट करे तो वहाँ ओमन को टेक डाउन कर सकते हैं, जो कि मोनियत के साथ नहीं हुआ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया एंड मोनियत जस्ट चेंजेस द होल राउंड। मिक्सवेल
The match so far is insane. I think that PaperX is playing really well. It's the best maps of both teams. So I think the best of three is kind of decided in this game. Both teams are playing at their best, so I'm enjoying it a lot. Yeah, well, on behalf of Pacific, Team Heretics playing very, very well as well. You guys are making us sweat over in Asia. And speaking of which, EMEA and Pacific, we have very, very different styles, right? Which team would you rather play against? Something more structured or something more chaotic like PaperX? I think playing against PaperX for the first time is maybe more scary, but after you see them playing once, I think Team Heretics has a more complete style. So I think I would rather play against PaperX than Heretics. Yeah, I think the crowd agrees with you. And of course, Nilzinho is somebody that you have a very close relationship with. You know him for a while. What do you think he's thinking right now at this very moment? I think he's calming the players because it's important to start strong on the second half. He's someone that reminds you what he has prepared for you before the match. And he's probably just saying, guys, keep playing like you're playing really well. Remember what we talked about before and just enjoy the moment because the crowd is cheering for you, something like that. Speaking of the crowds, really quick, say something to our fans. Chicos, tenemos que ganar este partido sea como sea y vosotros sois el sexto jugador, así que gritad como nunca, por favor. ¡Vamos! All right, let's get back into the game. Well, got a future, I think, in crowd work as well. I mean, this guy, he does. Get him paired up with Zekan's mum, telling you. Yeah. Chalo. Let's get back to the casting thing. PaperX and Heretics 6-6 का ये half even Steven चलते हुए, but now PaperX on the defensive side with that Sage is giving up so much value actually. वो walls यहाँ पर फ्लैश किया जाता है, मोनियत वहाँ आगे जाते हैं, स्टांस देते हैं, सेज से हील भी ले सकते हैं. 4 सेकंड टेक्स डाउन मिनीबू, लेकिन मिनीबू के द्वारा पहले मोनियत टेक डाउन हुए थे. एंड नाउ रेंज वहाँ पर ट्रेड आउट करते हैं 4 सेकंड को. 3v4 की ये सिचुएशन. बेंजी फिशी, बट नहीं, दवाई विद दोस 2 हिट शॉट्स, डबल डिंक, एंड दवाई जो है बेंजी फिशी को टेक डाउन करेंगे. माइंड फ्रीक इज स्टिल इन द मिड एरिया एंड मिड एरिया की तरफ वहां पिवट करती हुई टीम हेरिटिक्स जो है वो हमें नजर आ रही है. सो पिस्टल राउंड के अंदर अब ये जो पिवट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा अगर कहीं ना कहीं. ओके, द टाइमिंग, द वैलोरेंट टाइमिंग हिट्स फॉर दवाई ओवर देयर. कहीं ना कहीं माइंड फ्रीक ने वो फ्लैंक वहां जो कैच किया है वो काफी ज्यादा क्रेजी सा था. ही कैचेस दैट फ्लैंक ओवर देयर. रेंज अगर हम बात करेंगे तो मार्केट का एरिया अभी भी होल्ड करते हुए पैटिटेक प्लांट मिल चुका है, लेकिन आई थिंक सो नाउ इट इज very much difficult and next to impossible actually for Reigns because सारे के सारे players जब आप पर bounce करते हैं, जब आप पर चढ़ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सी जाती हैं. और वही चीज़ हुआ कि तीनों के तीनों खिलाड़ियों ने एक साथ पीक किया. आपको जब वो 3 सर एक साथ दिखते हैं तो आपको भी समझ में नहीं आता है कि यार हम शॉट सबसे पहले किस पर लें एंड किसको सबसे पहले एलिमिनेट करें. एंड दैट हैपेंड ओवर देयर विद Reigns. Pistol round goes to PaperX over there. Second pistol round, 100% win rate in pistols in the series still now for PaperX, but follow up उनको ठीक करना होगा. follow up round यहाँ पर पिछली बार हारे जरूर से थे, इस बार अगर ये follow up round हारते हैं तो साथ साथ की बराबरी होगी और दिक्कत जरूर से उनको होती हुई नजर आएगी. एक ही तरफ यहाँ पर पूरी की पूरी टीम हेरिटिक्स जो है वो जरूर से अपना मूव बनाती हुई नजर आ रही है. गेको का फ्लैश, यहाँ जो समथिंग ने फ्लैश किया था वो, और उसके बाद जो नाइफ आता है फोर्सेकन का, दैट नाइफ, दैट 0 पॉइंट फ्रॉम फोर्सेकन जस्ट कंफर्म्स एवरीथिंग कि 4 प्लेयर्स तो जरूर से हेरिटिक्स के बाहर ही हैं. फोर्सेकन विद दैट आउटलॉ, अगर ओके वो एक कोलाट पहला शॉट, फिर कोलाट, फिर समथिंग का वो बेंच फिशी पर फ्रैग, एंड आखिर में जो कुछ बचा था वो मोनियत ने खत्म किया. सो ये राउंड तो 30 सेकंड से भी जल्दी खत्म हो गया. बट नाउ इज द राउंड फॉर टीम हेरिटिक्स. अगर ये राउंड टीम हेरिटिक्स कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट कर जाती है तो उनके लिए ये मैप में वापसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल सा हो जाएगा. 4 सेकंड विद 3. Alex is happy, Alex is smiling.
ये इंसान अगर आपके गेम प्ले से खुश है देन यू हैव डन समथिंग राइट एक्चुअली, बिकॉज ये बंदा बहुत ज्यादा सिनेमैटिक है. यहाँ मिनी बू, ओके ही जस्ट टेक्स द अग्रेसिव स्टांस. मिनी बू टेक्स डाउन दवाई एज वेल ऑन 35 HP. बी पर पूरा का पूरा जो यहाँ पर एंट्री है वो मिल जाएगा एंड बैक साइड तक का कंट्रोल, बोबा तक का कंट्रोल भी ले लिया जाएगा. बट Forsaken with that outlaw still doing some damage to team Heretics over there. अगर ये 3v4 यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है तो Forsaken को वहां पर कोई ना कोई फ्रैग जरूर से निकालने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज द ओनली वन जो एक एक शॉट से प्लेयर्स को टेक डाउन कर सकते हैं. लेकिन नहीं, यहाँ पर वैंडल की रिकवरी, मोनियत ने भी वैंडल जो है वो रिकवर कर ही ली थी. ही टेक्स डाउन वन. 2v2 की ये सिचुएशन, बट नहीं, रेंज एंड बेंजी फिशी उसको ज्यादा देर तक 2v2 रखेंगे नहीं. इट इज जस्ट epic that Heretics comes out on top in this round. लगा था इनिशियली कि कहीं ना कहीं शायद Heretics बॉटल आउट कर जाएगी. अगर बॉटल अप कर जाती ये राउंड कहीं ना कहीं विफ आउट हो जाता और ये राउंड अगर PRX के खाते में चला जाता तो Heretics के लिए इस मैप में वापसी करना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ सकता था. बट नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है. Heretics are still in the game, but now it's a full buy round. 4 वैंडल्स. ओके, मोनियट जस्ट रशेस इन. ए मेन पर जाते हैं, ए मेन पर एक फ्रैग निकालते हैं और वापस आ जाते हैं. राउंड शुरू हुआ 5 ही सेकंड्स के अंदर. ये राउंड अब 5v4 बन चुका है. माइंड फ्रीक मिड के ऊपर वहां पर फ्रैग्स निकालते हैं. समथिंग एंड Forsaken with 1 each. मोनियट cleans up the final person and just wins out this round for the team of PRX. Heretics अब यहाँ पर इको राउंड की तरफ फंसी हुई नजर आ रही है. बेंजी फिशी 15 फ्रैग्स, रेंज विद दैट 14, मिनी बू 12 फ्रैग्स के साथ नजर आ रहे हैं. यहाँ पर अगर आप PRX की बात करेंगे तो सभी ने इक्वल फ्रैग्स निकाले. 11 फॉर द वाइफ, 12 ईच फॉर Forsaken, समथिंग एंड माइंड फ्रीक एंड 14 फॉर मोनियट. सो इक्वल, यहाँ पर किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं आया. एवरीबडी इज गिविंग देयर इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ है. अब ये एक इको राउंड, तो क्लीन राउंड यहाँ पर निकालने की कोशिश रहेगी फ्रॉम द टीम ऑफ PRX ओवर देयर. एक शेरिफ एंड एक बुलडॉग, ओके 2 शेरिफ्स, एक बुलडॉग और एक गार्डियन के साथ यहाँ पर जो शुरुआत है वो की गई. सिर्फ एक मिनी बू के हाथ में हमारे पास जो अल्टीमेट ओवरड्राइव नजर आ रहा है. एंड विद दैट ओवरड्राइव अगर मिनी बू कुछ फ्रैग्स निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और कामयाबी हासिल कर जाते हैं देन इट वुड बी वेरी गुड. बट मिनी बू उससे ओवरड्राइव यूज करें उससे पहले ही जस्ट यूज्ड शेरिफ ओवर देयर और उसी शेरिफ के साथ वो एक पिक निकालते हैं. ही रिट्रीव्स द वैंडल ओवर हियर. उनके हाथ में ये वैंडल लग चुकी है एंड दिस वैंडल विल जस्ट make chances very much for the team of Heretics for this round. दवाई आते हैं यहाँ पर. ओके, the suppression comes out, that knife comes out, जो पूरा का पूरा रेंज का जो अल्टी है उसको बर्बाद सा कर देगा, उसको null and void कर देगा. The dagger just made this very much easy कि उस हंटर्स फ्यूरी के साथ किस तरह से डील आउट किया जाए. बट द शॉट विथ माइंड फ्रीक, ओके ये राइट क्लिक और एक एक टैप्स एक एक कर आओगे तो एक एक कर जाओगे. माइंड फ्रीक विद दोस 3 बू वहां पर Forsaken के ऊपर मिड में एक फ्रैग जरूर से निकालते हैं. बट MVP ऑफ दिस राउंड माइंड फ्रीक एक एक कर आए. प्लेयर्स एक एक कर गए. प्लेयर्स बू जाएंगे. अल्टीमेट ही विल टेक दैट spike, but something is waiting for him and something just finds time frag for himself. और डबल डिजिट्स में आ चुकी है PRX अगेंस्ट Heretics. बता दें आपको कि अगर यहाँ पर कोई भी टीम हारती है, विच एवर टीम लूजेस ओवर हियर, वो टीम यहाँ पर इस टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं बाहर होती हुई नजर आएगी बिकॉज दे हैव लॉस्ट द फर्स्ट सीरीज फॉर देमसेल्फ. तो इस टूर्नामेंट में यही फॉर्मेट है कि अगर आप 2 सीरीज हार जाते हैं पूरी टूर्नामेंट के अंदर तो आप बाहर हो जाते हैं. लेकिन अगर आप जीतते हैं 2 सीरीज तो सीधा आप प्लेऑफ्स की तरफ जाएंगे. सेंटिनल्स पहली टीम बन चुकी है प्लेऑफ्स की तरफ जाने के लिए. Heretics की तरफ से एक टाइम आउट जरूर कॉल किया गया है. इस टाइम आउट में एक्चुअली क्या बात होगी, इट इज नॉट टू लेट, अभी भी कम बैक किया जा सकता है. थोड़ा सा चिल माइंड के साथ खेले. जो बेसिक मिस्टेक्स है एक एक कर पिक करना,
या फिर पोस्ट प्लांट्स का होल्ड इज वेरी मच टफर फॉर देम राइट नाउ, तो वो थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं. मिड की जो फाइट्स है वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं. Twice as fast as PRX to be able to get the win here, and you heard it from Mixwell's mouth earlier on. He said the winner on Sunset is probably going to win the BO3. Now, I think Heretics still has win possibilities. 7-10 PRX के पास बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर कि वो अपने इस राउंड को पिवट करें, इस मैप को एक्चुअली पिवट करें, अपने नाम करें ये मैप. The round has begun. यहाँ सेपरेशन फाइंड करते जरूर है दो प्लेयर्स के ऊपर. फोरसेकन का वो नाइफ काफी अच्छा सेपरेशन वहां पर फाइंड करता है, लेकिन अब उनको अपनी गन के साथ कुछ करना होगा. ही हैव दोस टू फ्लैशेस टू वर्क विद. इवन सारी की सारी यूटिल्स जो है PRX की स्टैक्ड अप है. इवन हेरिटिक्स एल्बो का कंट्रोल ले चुकी है. So after that elbow control, okay, मिनी बू वहाँ पर स्लाइड करते हैं, दवाई को पिक ऑफ करेंगे, but Moniet with that trade, something comes out with a trash. Forsaken just clears out the guy who was detained with the trash. Something वहाँ पर अपनी ऑपरेटर चलाएंगे, एंड ऑपरेटर के साथ जरूर से पिक जो है अपने नाम करेंगे. अब एक 2v2 की ये जो सिचुएशन है वो रह जाती है. माइंड फ्रीक सीटी की तरफ से जाते हुए एंड समथिंग अभी भी लिंक का एरिया ही होल्ड कर रहे हैं. एक डिफॉल्ट प्लांट कहीं ना कहीं करने की कोशिश है जरूर से यहाँ अगर बात करेंगे बू की तो, बट नहीं, बेंजी फिशी यहाँ पर पीक आउट करते हैं. ये पीक आउट बेंजी फिशी के लिए काफी ज्यादा खराब सा रह जाता है. अगर कहीं ना कहीं ये पिक आउट से समथिंग पिक ऑफ कर लेते बेंजी फिशी को, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो सकती थी, बट नहीं, एवरीथिंग इज ऑल गुड फॉर हेरिटिक्स राइट नाउ. 1v2 की सिचुएशन, समथिंग डजंट हैव एनीथिंग, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है. बिकॉज एंगल देखिए, दे आर प्लेइंग दैट क्रॉस फायर फॉर देम. समथिंग मिसेस द शॉट ऑन बेंजी फिशी. पूरा का पूरा जो रीग्रुप है वो किया गया, यहाँ पर रिपोजिशनिंग की गई. एक और शॉट समथिंग के द्वारा लिया जाता है, बट दैट शॉट डजंट कनेक्ट. एक कॉल आ गया होगा कि नाउ यू कैन सेव इट फॉर योरसेल्फ. अगले राउंड के अंदर इसको यूज करना और सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो इस गन की निकाल सकते हो इन द नेक्स्ट राउंड. बट नाउ यू कैन सेव इट एंड यू शुड सेव इट. एक्चुअली ही सेव्ड द ऑपरेटर, बट जो राउंड है वो इनके हाथों से छिटक सा जाता है. 8-10 की ये स्कोर लाइन फॉर द टीम ऑफ हेरिटिक्स. एंड 10 राउंड के साथ PRX जो है वो यहाँ पर लीड आउट करती हुई, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कतों का सामना जो है वो इनको करना पड़ सकता है. बिकॉज आई फील हेरिटिक्स इज काइंड ऑफ अ मोमेंटम बेस्ड टीम. हेरिटिक्स को जब जब मोमेंटम मिला है, दे हैव गॉट दोस 2-3 राउंड्स टुगेदर. और यहाँ अगर इसी राउंड की बात करूं तो यहाँ से अगर मोमेंटम इनके हाथ लगता है, जो कि लग सकता है, बिकॉज एक काइंड ऑफ एंट्री जो है वो काफ़ी आसानी से मिल सकती है. पैडेटी के पास वो नल कमांड ज़रूर से है, वो नल कमांड का यूजेज हमें ज़रूर एंट्री के लिए देखने को मिल सकता है. एंड रीटेक के लिए कोई मेजर अल्टीमेट नहीं है, एक सिर्फ आपके पास वाइपर स्पिट नजर आ रही है और एक फ्रॉम द शैडो. सो ओके, मेजर अल्टीमेट की अगर हम बात करेंगे तो माइंड फ्रीक का वो जो वाइपर स्पिट है वो कहीं ना कहीं यूज आउट हो सकता है, लेकिन फ्रैग्स निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मिनी बू मोनियट को पिक ऑफ करेंगे and a controller from your team has vanished in the first 30 seconds. 5v4 की ये सिचुएशन अभी भी हेरिटिक्स की टीम ये मेन के बाहर ही वेट आउट करती हुई कि अगर कोई और पीक करता है तो यहाँ पर हम जरूर से फ्रैग आउट करेंगे उसको, लेकिन नहीं, यहाँ किसी ने भी ओवर पीक नहीं की. रादर देन मोनियट समथिंग अभी भी घात लगाए बैठे हैं विद हिज ऑपरेटर कि कहीं ना कहीं कोई प्लेयर जरूर से यहाँ उनको दिखे. समथिंग टेक्स डाउन पैटेटिक. एक रिवाइवल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सी गई है और वहाँ रिवाइवल भी दे दिया गया है. Forsaken with 3 HP. दवाई टेक्स डाउन बेंजी फिशी. Forsaken is taken down. अगर दवाई यहाँ पर जल्द ही एक फ्रैग निकालते हैं तो वो जरूर से एक प्लेयर को रिवाइवल यहाँ पर दे भी सकते हैं, रेजरेक्शन यूज कर सकते हैं और यहाँ इस 3v4 की सिचुएशन को 4v3 में कन्वर्ट कर सकते हैं.
बट नहीं. ओके, दवाई टेक्स डाउन 1. 3v3 की ये सिचुएशन बिकॉज ट्रेड आउट जरूर हुआ था बट दवाई खुद पिक ऑफ हो जाते हैं. अब यहाँ पर माइंड फ्री की बारी आती है ऑन दैट लर्क. ही टेक्स डाउन द गाय रेंज एट द एल्बो बट नहीं, मिनीबू वहां आएंगे. मिनीबू वहां पर माइंड फ्री को टेक डाउन करेंगे. फिर से एक बार समथिंग वर्सेस मिनीबू and Boo. The Boo brothers are here and something फिर से एक बार गन को सेव करने पर मजबूर होते हुए नजर आएंगे. Might try to get one frag but नहीं, यहाँ पर फ्रैग तो नहीं निकल पाता है. बट सिमिलरली हेरेटिक्स के पास भी एक भी वेपन जो है वो बचते नजर नहीं आया. पेपर एक्स की तरफ से अगला जो आखिरी टाइम आउट है वो भी ले लिया गया है. Straight up 1v1s where Boo and Miniboo are holding angles, they get the dual win and it pushes them across the line with the player advantage. None of the fancy set play stuff, just guns out gaming. You know, maybe one day, Brad, we'll see Xcura on this team as well and we can have the Susano brothers playing up against the Boo brothers, you know? Maybe. And Scream and Navera come back. Yeah. And we have a tag team. Perfect world. I mean, as a Santo family, they run deep when it comes to playing. भाई टाइम आउट में क्या ही बात हो रही होगी एक्चुअली. There is an older Boo brother as well. Listen, just get them all involved, man. Let's have a family reunion on the big stage. देखा जाए तो टाइम आउट में ज्यादा कुछ बात एक्चुअली में हो नहीं रही होगी बिकॉज दे आर जस्ट 3 राउंड्स अवे. हेरेटिक्स आर 4 राउंड्स अवे. But what a game we got here. Both of these teams wrestling with each other, trying to figure out the ways to be able to get past different setups. That round. So guys, Paper X are on eco right now. वहाँ पर उस eco के साथ kind of half by mini by eco एक यहाँ पर देख semi by and eco एक नजर जरूर से आ रहा है. With 2 Vandals, 1 Guardian and 2 Sheriffs over there. So एक mini by ही है, एक semi by ही नजर आता हुआ. Heretics वहीं पर आपको 3 Vandals और एक Guardian के साथ जरूर से नजर आ रही है. Benji Fishy with that Guardian. बाकी सारे खिलाड़ियों के पास Vandals नजर आ रही है. With half shields. Majoristically half shields and 2 guys with the full shield over there. नाइफ का यूज वहाँ पर 0 पॉइंट का यूज जो है पैट्रिक के द्वारा किया जरूर से किया बट कोई वैल्यू जो है वहाँ पर निकली नहीं पैट्रिक के 0 पॉइंट के द्वारा. Players of Paper X, Something and Forsaken have pushed towards the attacker spawn. Attacker side spawn को वहाँ पर जरूर से पुश आउट कर चुके हैं. बू अभी भी एंगल होल्ड करते हुए. He is just holding that angle right now. He knows कि कोई ना कोई तो जरूर से आएगा वहाँ पर फ्लैंक देखने के लिए. Okay, something comes out there. Something takes out Benji Fishy, but Patrick वहाँ पर something को take down कर जाएंगे. With this Guardian कितने players को वहाँ पर something जो है वो take down. Okay, sorry, Forsaken जो है वो take down कर पाएंगे because सभी के सभी players जो है वो B main पर ही hold down कर रहे हैं. And जैसे ही ये wall वहाँ पर down होगी, ये वाइपर wall के down होते हैं. Okay, down होने का समय भी नहीं दिया गया. And the team of Heretics have rushed in. 4v3 की सिचुएशन. ओनली Forsaken have that Vandal बट बाकी के 2 प्लेयर्स वहाँ पर शेरिफ के साथ काम करते हुए. Forsaken takes down Miniboo. Moniet if he is able to take 1 player down over there. Okay, वो नहीं तो Forsaken ही सही. And he takes down 1v1 की सिचुएशन. Patrick on very low HP. Body shot वहाँ पर जरूर काम करेगा. Patrick को टेक डाउन किया जाएगा. And अब Moniet आएंगे. Moniet जल्द ही ये राउंड हम अपने नाम कर चुके हैं. So 9-11 for Paper X. Diffusion जो है वो जल्द ही आ जाएगा. And after this it's 11. Only 2 rounds away from the first match win for the team of Paper X over there. भाई साहब ये क्या शॉट था. Moniet is happy. Forsaken is just jumping around. Forsaken is just jumping around from his chair over there. Heretics एक eco round. अगर ये हारते हैं तो मैच पॉइंट और सिर्फ उसके बाद 3 उनको वहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार राउंड्स जीतने होंगे
to get this game to OT, not winning. जीतने के बारे में तो दूसरे बार सोचेंगे, अभी तो यहाँ पर सबसे पहले इस मैच को बचाना है. तो कहीं ना कहीं अब पेपर एक्स वहां पर एक हॉट फेवरेट इस मैप को जीतने के लिए बन चुकी है, बट नहीं, बेंजी फिशी टेक्स डाउन वन, बू टेक्स डाउन दवाई. बेंजी फिशी को वहां पर फोर्सेकन टेक डाउन करते हैं, बट नहीं, फोर्सेकन टेक्स डाउन बू एज वेल. फोर्सेकन जब जब जरूरत पड़ी है इस टीम को स्टेप अप करने की, फोर्सेकन सबसे पहले आते हैं और बोलते हैं मैं करके दिखाता हूं, अब भी करके दिखाता हूं. फोर्सेकन विद 3 फ्रैग्स, मोनियट विद 1, फोर्सेकन विद दैट 4K. Forsaken is just crazy. He is just some other prodigy right now. जो प्ले उन्होंने अपना स्प्लिट पर दिखाया कल, और आज अब जो सनसेट पर वो अपना कारनामा दिखा रहे हैं, दैट इज ऑन अनदर लेवल. यहाँ पर फोर्सेकन अपने नल कमांड के बाद जितना जल्दी जाकर जो फ्रैग्स उन्होंने बटोरे हैं, आखिर में रेंज का वो फ्रैग, वो एंगल, वो cheeky angle, and with that cheeky angle he just converted this round for himself and his team. Now this is now or never for the team of Heretics in this tournament, because अगर ये मैप हारे तो टूर्नामेंट से बाहर होने के थोड़ा सा और नजदीक आ जाएंगे. एंड पहला मैप कोई नहीं हारना चाहता है. Nobody is willing to lose that first map actually in the series of 3 right now. If I would say ये राउंड कहीं ना कहीं मिड एक्सप्लोरेशन का राउंड ज़्यादा नज़र आ रहा है. आप देखिए हर एक प्लेयर वहाँ मिड लिंक और टाइल्स का एंगल ही मार्कआउट कर बैठा हुआ है. एंड यहाँ अब ये फ्रैग्स के लिए स्लो कहीं ना कहीं मिड एक्सप्लोरेशन देखने को ज़रूर से मिल रहा है. जहाँ पर भी फ्रैग मिलेगा वहाँ पर यहाँ टीम हेरिटिक्स हमें जो है अटैक करती हुई नज़र आएगी. Something checks out the angle, he takes down one, but Miniboo just trades out something instantly. Something को वहाँ पर instant trade out जो वो किया जाता है, but Boo Forsaken को वहाँ पर कहीं ना कहीं देख लेते हैं, pick off करते हैं. Miniboo takes down Moniet over here. It's the Y and Mind Freak versus Boo, Miniboo, Benji Fishy and Reigns over here in this round 2v4 की ये situation काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सी हो गई है. रेंज वहाँ पर आएंगे, यहाँ दवाई को पिक ऑफ करेंगे. माइंड फ्रीक के पास अब ये जो राउंड है उसमें बचाने के लिए सिर्फ एक वैंडल है जो बची है, क्योंकि राउंड तो बचेगा नहीं. 1v4 यहाँ पर होगा नहीं बिना किसी इन्फो, बिना किसी चीज के. So he'll just save the round and okay, save the weapon in this round and will play for the next round, because Moniet is having only 50 crits and Forsaken with those 100 crits. शायद वो किसी को यहाँ पर एक ना एक वेपन तो ड्रॉप कर ही सकती है. Mind Freak with that crazy plays in today's game. Actually he's just cracked right now. ये जो गेम खेल रहे हैं with that Viper is just crazy. जिस तरीके से फ्रैगिंग पोटेंशियल अपना दिखा रहे हैं उस पूरे के पूरे मैप के अंदर, इन्होंने बहुत ही बढ़िया फ्रैगिंग पोटेंशियल अपना डिफेंस के अंदर दिखाया. इन द अटैक एज वेल, सॉरी अटैक में इन्होंने काफी अच्छा पोटेंशियल दिखाया, बट इन द डिफेंस एज वेल ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एंड ही इज गिविंग हिज बेस्ट. जितना हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ही इज कंट्रीब्यूटिंग एज वेल. 9-12 का ये स्कोर लाइन जो अब 10-12 का हो चुका है. सिर्फ 2 और राउंड्स फॉर द टीम ऑफ हेरिटिक्स टू टेक ओवर पेपर एक्स एंड रिमूव पेपर एक्स पार्शियली फ्रॉम दिस टूर्नामेंट. अगर दूसरा मैच भी हरा देते हैं ये मैच हराने के बाद हेरिटिक्स, तो वहां पर पूरी तरह से पेपर एक्स जो है वो बाहर हो जाएगी इस टूर्नामेंट से. लेकिन उससे पहले अभी पेपर एक्स वहां पर 12 राउंड्स की कहीं ना कहीं आंकड़े को छू चुकी है एंड हेरिटिक्स के पास अभी भी 2 राउंड्स का जो डेफिसिट है वो हमें नजर आ रहा है. सो अगर हेरिटिक्स को वहां पर कहीं ना कहीं कम बैक करना है, कुछ चमत्कार करना है, तो दे हैव टू जस्ट मूव. यहाँ पर आप देखिए रेंज की वो हंटर फ्यूरी टेक्स डाउन 2, कहीं ना कहीं बो को टेक डाउन करते हैं फोर्सेकन. बेंजी फिशी उसी एक केज के इर्द गिर्द हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं. वहां पर 3 बंदे पीक करते हैं. समथिंग विद 3K in this round just closes out this map for the team of Paper X and
takes the lead for 1-0 against Heretics. लोटस की अगली जो मैप रहने वाली है, हम जाएंगे उसमें और पता करेंगे क्या यहाँ पर मैप 3 नजर आएगा या फिर मैप 2 में ही टीम पेपर एक्स जो है वो कहीं ना कहीं हेरिटिक्स को यहाँ से घर भेज देगी. आइए, लेट्स गो फॉर सुपरमार्केट नाउ. थोड़े देर के लिए वी आर जस्ट पिवटिंग. थोड़ी देर सुपरमार्केट, थोड़ी देर नहीं, मैच ऐसे ही खत्म होता है. वी पिवट टू सुपरमार्केट एक्चुअली. वॉच पार्टी चल रही है और कास्टिंग भी. यस, मैंने बोला ना मेरे को आज मूड हो गया है. मैं पेपर एक्स का मैच आज करने वाला हूँ. बहुत टाइम बाद ऐसा लगा मेरे को कि मेरे को कर लेना चाहिए. आफ्टर सो लॉन्ग मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को वापस माइक पकड़ना चाहिए यार. बिकॉज इट्स टू मच नाउ. इतना टाइम हो गया है कि कास्टिंग हुई ही नहीं है. आई एम अनएबल टू कास्ट एनी ऑफ द टूर्नामेंट राइट नाउ. भाई मेरे को भी चाहिए कोई माइक पकड़ने वाला. शैडो नॉटी हो रहे हो. शैडो भाई गेटिंग नॉटी अबाउट. हाँ, कॉफी का क्या सीन है? कॉफी चाहिए क्या? कुछ याद नहीं है. ओके, 4 कॉफी 3 पीनट बटर. भाई बोल रहा हूँ नोटी हो रहे हो पकड़ने वाली. ठीक है भाई. ठीक है शैडो भाई, आई वोंट से एनीथिंग मैन. और मैं तो नहीं मानता आप सिंगल हो यार. मैं मानता ही नहीं आप सिंगल हो. एनी डे आई वोंट अग्री टू दिस स्टेटमेंट कि आप सिंगल हो. ये अग्री करना मेरे लिए है उतना ही मुश्किल है जितना मेरा इस एक्ट में असेंडेंट पहुंचना. सॉरी मम्मी आई थी, बात कर रहा था. रीड किया मैंने वो चैट, बट ऐसा क्यों लगता है, मतलब बस लगता है मेरे को. आई कांट. अब हर चीज़ का कैसे जवाब दूं मैं? हर क्यों का जवाब नहीं होता ना शैडो भाई. अगर हर क्यों का जवाब होता तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई. वही चीज़ है ना, हर क्यों का जवाब नहीं है. चाहिए कौन सी फीलिंग है? आई डोंट नो मैन. जो चैट में आपका ऑरा है, जो आपसे बात करके मेरे को आपका ऑरा फील हुआ, आई डोंट थिंक सो आप सिंगल हो सकते हो. वो ऑरा की वजह से आई एम सेइंग ये. आई डोंट थिंक सो कि आप सिंगल हो सकते हो.
क्या गाइस यहाँ पर भी लगा दिए जाए टॉयलेट पेपर? इसीलिए सिंगल सबको यही लगता है। बट यार पता नहीं यार, सच्ची मतलब आई डोंट नो। हाँ वो गाय लाइक यूएस सिंगल मैन, हम लोग सिंगल है, समझ में आता है भाई, हमको टाइम ही नहीं होता गेम की। पूरा दिन गेम खेलते रहते, पूरा दिन स्ट्रीम करते रहते। हम लड़की को टाइम नहीं दे पाते, आप कैसे भाई? आज गाइस अरे भाई कॉम्प्लीमेंट अच्छा था बट रियल में सिंगल खराब लगा यार। मैं भी पूरा दिन काम पे रहता यार। बट यार वहाँ पे तो आई मीन यार ऐसे कैसे, नहीं समझ रहा मेरे को। With this kind of persona in the city like Canada, you are single? How? Man, how? Just HOW. वो मेरे को भी पता है। मैं सीरियस वाले की बात कर रहा हूँ, मैं जीबी रोड की बात भी नहीं कर रहा। दिन शुरू करते हैं गाइस। हो गया दिन शुरू, 10:30 बज गए हैं, अभी तक ज़्यादा कस्टमर्स आए नहीं है। वी हैव 986 इन आर हैंड राइट नाउ। अपना कैश इन 986 है अभी के लिए। देखो भाई, मैं अगर वो मूड में गया ना तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शांत रहता है इन सारी चीज़ों के मामले में। नेवर माइंड। मस्ती कर रहा हूँ, कहीं आप बूम बाम नहीं दे दो मेरे को। भाई सबको कॉलिंग, सब क्या काच वाच साफ करने वाले हो? हेलो इतना टॉयलेट पेपर लगाया ना, अब देखना रात तक, सच्ची बता रहा हूँ ये टॉयलेट पेपर्स गायब हो जाएंगे। कोक सोडा इज टू एक्सपेंसिव। ए भाई 2.5 कर लो। अरे नहीं रे भाई, उसको अभी भी पड़ा है ना, ठीक है। चौकी पिक भी है काइंड ऑफ। मज़ा आया, लेकिन आज बहुत टाइम बाद कास्ट करके मज़ा आया। थोड़ा सा ग्रूव में आया ना, तो अब 4 और 5 जो 4 तारीख का जो मेरा टूर्नामेंट है ना, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं होगी एक्चुअली। भाई 3 फराइन फ्लावर मंगाओ जल्दी, 4 ही मंगा दो।
सेटअप तो अच्छा खासा हो गया है, थोड़ा सा पैसा बना लूँ ना, बस उतना टाइम है, फिर और ज़्यादा एक्सपांड करने का मूड है। अरे रह जा भाई, हाँ गिर जा। खेल लूँ मैं इससे, क्रिकेट खेल लूँ, हाँ बैठना। बासमती गई नहीं, बासमती राइस। हेलो सर, टेप दिया अब। शाम के 6 बजने वाले हैं, ऑन करें लाइट। हाँ बोला ना, ये पट पट चले आते हैं, समझ भी नहीं आता भाई। पीनट बटर इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। एक्सपेंसिव क्या, आर वाले बहुत आ रहे हैं भाई। एक्सपेंसिव क्या, आर वाले इतने। भाई नहीं है पैसा तो पैसा कमाओ फिर आओ। जब सस्ता बेचता हूँ तब तो नहीं बोलती हूँ कि भाई इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो। हाँ पे जा जा जा, इतना इतना अगर एक्सपेंसिव अबे कमे तो पहली चीज भाई। शिट 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 शिट, ये नॉट पाउंड का आर होगा अब, क्योंकि चीज है नहीं ना। अब सबको चीज लगेगी, अब सबको चीज लगने वाली है। लाइट्स लगाओ, लगाएंगे लगाएंगे, रुको। उससे पहले देखो, पहले मैप लगा कि नहीं। लाइट्स हम बाद में लगाएंगे, लाइट्स हम बहुत सारी लगा देंगे। अपने मार्केट को चांदनी बार बना देंगे बस। कॉमे पे चमन, इतना तो कॉमे चीज भर दिया, अभी क्या भरूं। बोला ना मैप लगने। मैप चालू हो गया गाइस, मैप चालू हो गया यार। रुको खाली 10 सेकेंड, ऐसे बिलिंग पट 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 खत्म। फिनिश डे करूंगा तो ये कस्टमर्स का क्या होगा, मैंने कभी किया नहीं है, इसके लिए मेरे को पता नहीं है कि अगर मैंने फिनिश डे कर दिया तो कस्टमर्स क्या भाग जाएंगे या फिर ये लोग का बिलिंग ऑटो हो जाता है। एक तो 1 घंटा लगाता है ये बिल करने में भाई। गायब बाबा रे, भगा देते ऐसा, दुकान में आए हुए को भगा देते। इंडिया में ऐसा नहीं होता, दुकान में आया है तो दुकान आधा घंटा एक्स्ट्रा चला देंगे, लेकिन वो बेचेंगे ही बेचेंगे भाई, ऐसा धंधा करने के सीधी बात। अरे ये तू हट रे, मैं करता है बिल। तेरे को चटकाऊ कैसे रे में। गाइस 1 ही मिनट, हम भी भाग। ऑटो होता है सब पैसा कलेक्ट करके आए। अब ठीक है, एक ही कस्टमर बचे है, ऑटो हो ना हो। भाई तू फटफट करना।
ठीक है। प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड 2 वो कॉमे चीज़ का थोड़ा लेट हो गया रहेगा। आज भी 200 का प्रॉफिट हुआ। बहुत सप्लाई कॉस्ट देखो, रेंट सप्लाई कॉस्ट और इसी में पैसा जा रहा है। 1500 का तो सप्लाई कॉस्ट हो जाता है, फिर इनकम आती है 1600 1700 की, 1300 1400 का तो सप्लाई कॉस्ट है। सेव क्विट टू डेस्कटॉप सिंपल। भाई ये 1-1 का क्या किस्सा है बे गाइस। अब बताओ कास्टिंग या फिर वॉच पार्टी, मैच देख के चिल करना है या कास्टिंग? अगर मैच देख के चिल कर रहा है तो मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, कास्टिंग है तो मैं चालू कर दूं। पता पता बूटा बूटा कास्टिंग अय्या ठीक है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो आफ्टर द पिस्टल राउंड हेरिटिक्स जो पिस्टल राउंड जीते उसके बाद वो अपना जो फॉलो अप राउंड है वो वहां पर जीतने में नाकामयाब रही, और वहीं पर जो तीसरा राउंड है वो भी पेपर एक्स निकाल कर लेकर गई बिकॉज ऑफ हेरिटिक्स का थर्ड राउंड वाज अ सेफ राउंड। बट नाउ अब ये जो राउंड रहने वाला है वो कहीं ना कहीं रहेगा दोनों ही टीमों के लिए एक बाय राउंड, दोनों ही टीमों के लिए एक राइफल राउंड रहने वाला है। अगर ये राउंड कहीं ना कहीं हेरिटिक्स जो है वो जीतने में असमर्थ होती है तो वहां पर दिक्कतें काफी ज्यादा हो सकती है। और जो मुझे लग रहा है बिकॉज मोनियत एंड दवाई जिस तरीके से एंट्री की है उसी तरीके से यहाँ पर वाइंड अप भी करते हुए नजर आए। पूरी की पूरी एक साइड जो है कहीं ना कहीं खाली करते हुए देखने को जरूर से मिले। रेंज वहां कूदते हैं विथ हिज विंग मैन, बट मोनियत वहां पर उनको भी पिक ऑफ कर जाते हैं, बट ज्यादा ही ओवर हीटिंग के चक्कर में बू मोनियत को पिक ऑफ कर जाएंगे। एक 3v2 की सिचुएशन फॉर हेरिटिक्स, बट कॉल जो है वो आ चुका है भाई हेरिटिक्स के लिए कि सेव अप कर लो, अगले राउंड में बाय दिए, एटलीस्ट अगले राउंड में हम ये दो वेपन्स जो है वो यूज आउट करेंगे एंड ये दो वेपन्स के साथ जरूर से राउंड निकालने की कोशिश जो है वो अगली बार कर सकते हैं। बट अगर ये दो वेपन्स भी गए तो हम सिर्फ शेरिफ्स या फिर क्लासिक्स पे आ जाएंगे और दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सी जाएंगी। लेट्स सी बू को क्या फाइंड कर पाते हैं, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। समथिंग ऑन जेट, मोनियत ऑन रेस, डबल डुलिस्ट कॉम्प। भाई क्रेजी सा कॉम्प है ये। हम रैंक में ये वाला डबल डुलिस्ट कॉम्प रहता है कि जेट भी खेल रहा है, रेस भी खेल रहा है, एक स्काई है। दिस इज काइंड ऑफ रैंक्ड कॉम्प जो भाई वर्कआउट करवाना इन अ मैप लाइक दिस, इन द मैच लाइक दिस, इसे टूर्नामेंट के अंदर थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज आपके पास सिर्फ 2 फ्लैशेस हैं जो आप स्काई के यूज करेंगे, और वहीं पर अगर हेरिटिक्स की बात करेंगे तो एक अजीब सा ही कॉम्प नजर आता है जहां बिल्कुल भी जो फ्लैशेस है वो है ही नहीं। गेको फ्लैश के अलावा आपको फ्लैशेस कुछ भी नजर नहीं आएंगे, बट विद दैट गेको फ्लैश जो प्ले बनाने की कोशिश है, मिनी बू आते हैं, मोनियत को टेक डाउन करेंगे, दवाई वहां पर बू को टेक डाउन करते हैं, तो वहां ट्रेल्स जो है कहीं ना कहीं नजर जरूर से आए। लेकिन सी साइड पर एंट्री जरूर हो चुकी है फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स। समथिंग अगर अब अपने ऑप का कुछ जलवा दिखाए, लेकिन उस ऑप के जलवे से पहले माइंड फ्रीक आते हैं, बेनिफिशियरी और पैथेटिक को ए साइड पर डाउन करेंगे। अब स्पाइक जो है वो फिर से ए साइड पर जाती नजर आएगी। माइंड फ्रीक अग्रेसिव स्टांस ले चुके हैं एंड विद दैट अग्रेसिव स्टांस वो रेंज को भी पिक ऑफ करते हैं। अब सिर्फ मिनी बू बचे हुए हैं। मिनी बू ऑन दैट सी साइड, ही वोंट बी ट्राइंग एनी टाइम सून, ही वुड बी जस्ट सेविंग इट। वो सेव करते हुए फिर से नजर आएंगे, बट क्या इस बार उनको सेव करने दिया जाएगा? द आंसर इज यस। स्टिल फोरसेकन को पिक ऑफ करते हैं वो जब आपके पास क्रेड्स की भरमार हो। अब देखिए 3100, 5000, 2850, 4100, इतने क्रेड्स अगर आपके पास हो तो आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं सामने वालों की इकोनॉमी को और ज्यादा डैमेज करने के लिए। लेकिन मिनिमू उनका ओवरड्राइव अब तैयार हो चुका है एंड दवाई जो है वो अब चिल आउट करते हुए इस राउंड में नजर आ रहे हैं। दे जस्ट नो दे हैव वन दिस राउंड। मिनिमू कहीं ना कहीं इसमें भी वैंडल को सेव करते हुए ही नजर आएंगे। 4:1 का ये स्कोर लाइन एंड हेरिटिक्स अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर इस मैप और इस सीरीज में पिछड़ती हुई, और अगर ये मैप हेरिटिक्स कहीं हार जाती है तो जरूर इस टूर्नामेंट से भी उनको वहां पर कहीं ना कहीं अलविदा लेना पड़ेगा। ओके वो और लेना महंगा पड़ा कहीं ना कहीं बेंजी फिशी को।
इंस्टेंटली 2 फ्रैग्स आते हैं। माइंड फ्रीक फिर से आगे और ज्यादा स्टेज पुश आउट करके अपने लिए और ज्यादा स्पेस बनाते हैं और वो स्पेस के साथ कहीं ना कहीं स्टेयर्स पे रेंज को भी पिक ऑफ कर जाते हैं। This round with those Vandals and a Bulldog, let's see how the team of Heretics play. A-Main का पूरा कंट्रोल with that stun and all लिया गया, पूरी की पूरी यूटिल डंप की गई ऑन द ए साइड। कहीं ना कहीं उसी वक्त PRX जो है वो सी साइड पर पिवट करते हुए नजर आए, बट दिस पॉइजन क्लाउड इज जस्ट स्टॉपिंग देम राइट नाउ। उस पॉइजन क्लाउड के साथ ये किस तरह से यहाँ पर डील आउट करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। पैटेटिक वहां मॉनिएट को पिक ऑफ करेंगे, डबल सैचल को वहां पर पकड़ा, वहां पर डबल सैचल जो है वो पकड़ा जाएगा। पैटेटिक 4 शेकिन को भी टेक डाउन कर जाते हैं। ये राउंड कहीं ना कहीं हेरेटिक्स लग रही है इन द ग्रुप, और ये राउंड कहीं ना कहीं हेरेटिक्स निकाल भी सकती है अपने लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर टीम हेरेटिक्स। माइंड फ्रीक कम्स आउट देयर, अलार्म बॉट से ट्रिगर होंगे जरूर, वहां पर वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर बढ़ जरूर से रहे। ही इज जस्ट होल्डिंग आउट। माइंड फ्रीक श्राउडी स्टेप लेते हैं, बी साइड के ऊपर एंट्री करते हैं। ही मूव्स टुवर्ड्स द अपर एरिया ऑफ बी साइड, पूरा का पूरा अपर एरिया का जो कंट्रोल है वो हमें लेते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। समथिंग विद दैट ऑपरेटर, ये इंसान ऑपरेटर के साथ कुछ भी कर सकता है। इस इंसान के हाथ में अगर ऑपरेटर आ जाती है कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा कहर बरसाती है इस इंसान की ऑपरेटर। वहीं माइंड फ्रीक जो है वो बू को टेक डाउन करते हैं। समथिंग विद बेंजी फिशे, यहाँ ये राउंड जो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था कहीं ना कहीं वो अब डुएबल लगता हुआ, लेकिन नहीं, मिनीबू विथ हिज ओवरड्राइव दवाई 1v1 की ये सिचुएशन हाफ जरूर हो चुका था। मिनीबू वहां पर राउंड बचाएंगे, बट जान हलक में आ सी गई थी। अगर देखें इस राउंड को ब्रेक डाउन करूं मैं तो जान कहीं ना कहीं जरूर हलक में आ गई थी। एंड द प्लेयर्स वर जस्ट एपिक। माइंड फ्रीक एंड समथिंग की ये जोड़ी जहां ये फ्रैग्स निकालते हैं, दैट इज क्रेजी। आप माइंड फ्रीक को देखिए, हर बार आपको मैप के किसी तीसरे कोने में ही नजर आएंगे। वो अपनी टीम के लिए जरूर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। टाइम पर स्मोक्स, टाइम पर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लर्क फ्रैग्स जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये राउंड तो कहीं ना कहीं अभी के लिए हेरेटिक्स एंजॉय कर रही है, बट द क्रेडिट्स आर द मेजर इशू फॉर टीम हेरेटिक्स। आप देखिए 0-0-0 क्रेडिट्स के साथ यहाँ पर 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। जो डेथ ट्रैप है यहाँ पर हेरेटिक्स का वो काफी ज्यादा बड़ा है। 4:2 का वो स्कोर लाइन आपको दर्शाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो है वो वेपन्स को सेव आउट करने में बहुत ज्यादा नाकामयाब रहे हैं। एंड उसी के लिए प्रॉब्लम्स आपको आगे जाकर इस हाफ के अंदर, पूरे हाफ के अंदर रहने वाली है। अगर आप कहीं ना कहीं एक राउंड हारते हैं तो आपको जरूर अगले राउंड में इको की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। बट बेंजी फिशी ही टेक्स डाउन माइंड फ्रीक ओवर देयर। जैसे ही मैंने माइंड फ्रीक की ज्यादा तारीफ की वैसे ही माइंड फ्रीक इज टेकन डाउन। थोड़ा सा कास्टर्स कर्स होते हुए, बट इट्स फाइन। बू, हेलो, गुड मॉर्निंग बू। बू he can take down 2 over there। जो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया है यहाँ पर बू ने, दैट इज गुड। मिनी बू विथ पिकिंग अप 4 सेकंड। समथिंग के हाथ में हमें एक ऑपरेटर नजर आ रही है विद दोस ब्लडी नाइव्स। ओके, ही इज ट्राइंग टू टेक डाउन 1। वो वहां पर मिनी बू को टेक डाउन करते भी हैं, लेकिन नहीं, रेंज उनको वहां पर ट्रेड ऑफ में जरूर से पिक ऑफ करेंगे। एंड ये राउंड भी हेरेटिक्स अपने नाम करेगी। बट दिस इज द राइट टाइम कि टीम PRX ले एक टाइम आउट एंड दे हैव टू गेट। यहाँ एलेक्स जो है इंस्टेंटली उनको समझ में आ गया है कि यार अगर 2-3 राउंड्स गए हैं, मोमेंटम अगर हेरेटिक्स के तरफ बन रहा है, सो they can just break that momentum with a break। and उन्होंने वो momentum उस break के साथ तोड़ा ही है। momentum break करना with a break is a good thing and they have just done it। हाँ, कुछ लाइन्स गए 2-3 बार रिपीट हो रही है यार, चेंजेस करने हैं। वैलोरेंट जैसा गेम सिंगल कास्टिंग बहुत टफ है, को कास्टर 100% नीडेड है। कांट हैपन, सिंगल कास्टर बहुत टफ है। मैं सच बता रहा हूँ, एज अ कास्टर आई वुड से सिंगल कास्टर के लिए काफी ज्यादा टफ रहने वाला है, बिकॉज राउंड्स इतने फास्ट पेस रहते हैं
आपको मैप पे देखना है, आपको यूट्यूब यूट्यूब पे देखना है, आपको एफपीएस कौन सा प्लेयर कहाँ पे वो देखना है। दवाई के हाथ में वुडन, लेट्स गो। चलो कास्टर्स वाले ग्रूव में चलते हैं वापस से। सो हेरिटिक्स यहाँ पर 3 राउंड्स निकाल चुकी है। एक स्लो स्टार्ट के बाद कहीं ना कहीं कोप अप करती हुई हेरिटिक्स 2 राउंड यहाँ पर लगातार जीत तो जरूर से चुकी है। 4-1 यहाँ पर पेपर एक्स जो है आगे जरूर से थी लीड में, लेकिन 2 राउंड्स वहाँ पर वापसी कर हेरिटिक्स 3-4 अभी भी हेरिटिक्स 1 राउंड पीछे। बट विद दैट स्टन फ्लैश काफी कुछ आता है मॉनियट की तरफ से, अल्टीमेट जो है वो पुल आउट किया गया, लेकिन एमेन का ये कंट्रोल, हेरिटिक्स पूरा का पूरा टीम हमें एमेन पुश करती हुई नजर आई। एंड पेपर एक्स की टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर सी गई है। दवाई बू को टेक डाउन करते हैं, बट रेंज वहां दवाई को पिक ऑफ करते हैं। एक्चुअली इस राउंड में हुआ क्या, दैट स्टन, दैट ओमन फ्लैश, मॉनियत की तरफ से वो रॉकेट जो है वो आया जरूर, लेकिन उनको चलाने का मौका ही नहीं मिला। पूरी की पूरी टीम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक TDM बन गया, ये टीम डेथ मैच हो गया। वो वाइपर का वहां पर मोलोटोव, दैट वाइपर स्पिट, एंड द राउंड इज जस्ट आउट ऑफ पेपर एक्स हैंड्स। वो लीड भी जा चुकी है अब तो, वहां पर 4 बराबर का जो स्कोर लाइन है वो देखने को मिलता है। बट अब डैशिंग किया गया है, इंस्टेंटली रशन करते हैं, पैथेटिक माइंड फ्रीक को पिक ऑफ करते हैं, बट समथिंग टेक्स डाउन रेंज। बू वहां पर कहीं ना कहीं समथिंग को पिक ऑफ करते हैं, बू पीछे की तरफ जाते भी है। मॉनियट हैज दैट वैंडल इन हिज हैंड्स, ही कैन जस्ट चेंज दिस राउंड, लेकिन नहीं, बेंजीफिशी दवाई को पिक ऑफ करेंगे। पी मेन पर ये जो स्पाइक है वो वहां पर अब काफी ज्यादा दुख जो है देने वाली है टू द टीम ऑफ पेपर एक्स। फोरसेकन कहाँ है, फोरसेकन इज लर्किंग टुवर्ड्स ए, फोरसेकन इज होल्डिंग टुवर्ड्स ए। बू अभी भी ए साइड को होल्ड डाउन करते हुए, एंड ही नोज कि एक प्लेयर कहीं ना कहीं लर्क कर आएगा, एंड दैट इज फोरसेकन। इवन मॉनियट इज हैविंग दैट वैंडल इन हिज हैंड्स, लेकिन क्या वो ये इम्पॉसिबल सा जो 1v4 है उसको पुल आउट कर पाएंगे? अगर कहीं ना कहीं एक आधे प्लेयर को पिक ऑफ कर जाते तो देखिए बेनिफिशियरी से 30 HP पर है, सो कोशिश कर सकते हैं ये 1v4 की। बट लेट्स सी कि यहाँ पर एक पेंट शेल के साथ ये किस तरह से अपना काम जो है वो कर पाएंगे, बिकॉज ही इज जस्ट हैविंग सम 100 HP with 21, तो 121 122 HP यहाँ पर इनके पास जरूर है, बट he won't be able to get more than that with a single paint shell, I think so। अगर जब तक फ्रैग्स नहीं निकलता, और टाइम भी अब तो इनके पास कम है, सिर्फ 10 सेकंड्स का समय ही बचा है वो बू को चेक करना। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशंस होती है, और यहाँ मॉनियत अपनी जो राइफल है वो भी बचाने में असमर्थ रहते हैं। नाउ पेपर एक्स के पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राउंड में डिलीवर करने का एक ज़रूरी जिम्मा जो है वो आ ही चुका है। देखते हैं यहाँ पर वैसा पॉसिबिलिटी है या नहीं। हेरिटिक्स एक बार फिर से लीड में, आफ्टर पिस्टल पहली बार लीड में आती हुई यहाँ पर हमें हेरिटिक्स जो है वो नजर आई। एंड अगर ये राउंड कहीं ना कहीं पेपर एक्स जो है वो निकालने में असमर्थ रहती है तो दे आर इन द डेड साइकिल, दे आर इन द डेड ट्रैप। एलेक्स, दिस गाय इज क्रेजी। सीलोंग का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मूड है वो बन चुका है। यहाँ पर सी हिट का एक मूड जो है वो यहाँ जरूर से देखने को मिल रहा है। मॉनियट इज इन साइट, इंस्टेंटली एक इनसाइट यहाँ पर आते हुए नजर आए। समथिंग ब्रेक्स डाउन द टर्रेट, पूरी की पूरी टीम सी साइड के अंदर। समथिंग ट्राइज, ओके, समथिंग जस्ट पुशेस, वो मिनीबू को पिक ऑफ करते हैं, एंड मिनीबू को पिक ऑफ करते ही जरूर पीछे आ जाएंगे। स्काईडॉग के साथ वाटरफॉल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी निकाली गई। समथिंग विद वन मोर, पैथेटिक वहां पर दवाई को पिक ऑफ करते हैं। समथिंग विद दैट 4K, दिस गाय इज ऑन अनदर लेवल, ही इज प्लेइंग ऑन अनदर प्लैनेट राइट नाउ। टीम इतना ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रंच सिचुएशन में फंसी हुई है, बट विद दैट 4K वो पूरा क्रंच सिचुएशन हल्का कर जाते हैं। 5:5 फिर से बराबरी पर ये मैप आ जाता है। दो शॉट्स वर क्रेजी एक्चुअली। वाटरफॉल का एरिया जब होल्ड डाउन किया गया समथिंग के द्वारा, दैट शॉट ऑन बेंजीफिशी इज नेक्स्ट लेवल।
they are just enjoying this. यहाँ पर पेपर एक्स की टीम जिस मैप को बहुत ही बढ़िया तरीके से enjoy कर रही है. Something just फिर से सी हिट का यहाँ पर माहौल जो है वो बनता हुआ. Again dash in, satchel in, everything. सीधा साइट यहाँ पर टेक ओवर कर जाते हैं. Something takes down Patek, but Benji Fishy with those two एडवांटेज फिर से अपनी टीम के अंडर लेते जरूर है. मिनीबू विद दैट 1v2 की ये सिचुएशन फॉर माइंडफ्रीक इन क्लच सिचुएशंस के अंदर काफी ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड इवन वो राउंड्स निकालते भी हैं. देखिए जैसे ही वो फ्रॉम द शैडोज के बारे में पता लगा कि माइंडफ्रीक के हाथ में वो फ्रॉम द शैडोज है, प्लेयर्स जरूर से अपनी पोजीशन है वो ए साइट और स्पॉन की तरफ लेते हुए नजर आए. लेकिन माइंडफ्रीक he is also smart. He is planting at C itself. अब वो सी मेन का एरिया यहाँ पर जरूर से देख रहे हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि दोनों के दोनों खिलाड़ी जो है वो सी की साइड से ही आ रहे हैं. एंड दिस विल बी अ वेरी मच बिग गैम्बल. अगर उनको वहां पर कहीं ना कहीं भनक लग गई कि दोनों प्लेयर सिटी से आ रहे हैं, सो ही कुड जस्ट रिपोजिशन हिमसेल्फ. ओके, स्मोक का काफी बढ़िया यूज था, डार्क कवर. यहाँ पर स्टिक तो किया गया बाय दैट विंगमैन. एक्चुअली विंगमैन के द्वारा स्टिक किया गया एंड यहाँ फिर से स्टिक किया गया रेंज के द्वारा. सो 1v2 की सिचुएशन जहां पे माइंडफ्रीक को ज्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला. एंड हाफ के बाद का जो स्टिक है एक्चुअली शायद मुझे लगता है वो नहीं सुनाई दिया बिकॉज ऑफ दैट पैरानोया. वो पैरानोया जो आया उसने पूरा का पूरा खेल जो है माइंडफ्रीक के लिए बिगाड़ा एंड माइंडफ्रीक वहां पर कहीं ना कहीं मुश्किलों में जरूर से नजर आए. 6-5 का ये स्कोर लाइन. यहाँ पर टीम हेरिटेक्स होम क्राउड के सामने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन जरूर करती हुई फिर से एक सी हिट का जो चांस है वो लिया जा रहा है. लेट्स सी क्या इस बार भी ये फास्ट सी हिट ही होने वाला है या फिर कुछ और. स्काईडॉग का यूज करते हुए दवाई फॉर क्लियरिंग द क्लोज एंगल्स, बट वहां पर स्काईडॉग को इंस्टेंटली ब्रेकआउट किया गया. समथिंग जस्ट टेक्स डाउन द अग्रेसिव एंगल. स्पॉट करते हैं वो यहाँ पर बू को एंड बू इज टेकन डाउन बाय दैट नेड एंड मॉनिएट वहां पर वैंडल यूज करते हैं आखिर में और डाउन कर जाते हैं. लेकिन ट्रेड ऑफ आता है जरूर रेंज की तरफ से. ही टेक्स डाउन समथिंग एज वेल. प्लांट होगा. अब ये 4v4 की सिचुएशन रहेगी. मॉनिट के हाथ में वहां पर एक जज हमें नजर आ रही है. द एंगल ही इज प्लेइंग विद दैट जज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मिनी बू टेक्स डाउन फोरसेकन. यहाँ फोरसेकन को टेक डाउन जरूर से किया गया. माइंडफ्रीक जो है उनकी भी यहाँ पर पोजीशन काफी ज्यादा एपिक हो जाएगी. मॉनिट विद दैट जज ही टेक्स डाउन मिनी बू. माइंडफ्रीक का यहाँ पर चांस बनता जरूर बट नहीं. राइट नाउ इट डजंट हैपन. That okay, the shots are connecting actually. Dawai, he just tried his level best. 7-5 finish for Team Heretics. Benji Fishy वो आखिरी 1v1 जीत जाते हैं and 7-5 का ये swap जो है वो रहने वाला है for the Team of Heretics in the favor of Heretics actually. मोनित को पता था मिनीबू आएंगे वहां से. He just took that judge in his hands and वो जज से ही मोनित टेक डाउन करते हुए नजर आए मिनीबू को. बट ज्यादा यहाँ पर उस चीज का कोई फायदा हुआ नहीं बिकॉज जब तक बेंजी फिशी जिंदा हैं तब तक बहुत ज्यादा मुश्किलें पेपर एक्स को यहाँ पर फेस आउट करनी पड़ रही है एंड बेंजी फिशी बहुत ज्यादा एक बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं इन बोथ ऑफ द टीम्स. बाय द वे गाइस, हाउ इज माय कास्टिंग गोइंग? तुम ये बताओ मेरे को यार. सब्सक्राइबर कम हो गया कास्टिंग से. क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं पसंद आया तो बता दो यार. शैडो भाई सच्ची इट्स ओके. थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है एक्चुअली. बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है. सोलो कास्टिंग बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा वैलोरेंट का. बीजीएमआई तो फिर भी मैं खींच लूं बिकॉज बीजीएमआई बड़ा गेम है, बैटल रॉयल गेम है, लैंडिंग लूटिंग सर्वाइवल फाइटिंग सब कुछ होती रहती है तो मेरे को चांस मिलता है ब्रीथिंग का. यहाँ पे ब्रीथिंग चांस 0 है.
गाइस 7 लोग देख रहे हो यार. Are you enjoying the game? And those who are new, make sure you hit that like and subscribe. Fans, interview, fans. Bhai, W fans hai bhai. W fans. 8 people watching, guys. Make sure you hit that like and subscribe. Half time. PRX अगर ये क्लोज आउट करती है तो हेरिटिक्स बाहर. अगर हेरिटिक्स बेस्ट कास्टर सेवर मेरे को बोल रहा है. हेलो, वहां तक पहुंच गई. W fans will teams. All dude. ये W casters. John. Thank you so much, भाई. अब 4 सेकंड की हो भाई. 4 सेकंड is 4 and 9. Monyet is 5 and 11. Okay, now C साइड पर एक्चुअली ये हिट जो है वो रहने वाला है हेरिटिक्स. Something with that aggressive stance. थोड़ा सा C long पे अपना जो प्रेजेंस है वो दिखाया गया. एंड अब फिर से जो पिवट है वो लिया जाएगा हेरिटिक्स के द्वारा. 500 के 500 खिलाड़ी अभी हमें ए रूट की तरफ नजर जरूर से आ रहे थे. आर गोइंग टुवर्ड्स ए मेन एक्चुअली रबल की तरफ. यहाँ पर जरूर से रबल कंट्रोल जो है वो भी मिल चुका है. द फ्लैश, द स्टन. ओके, द फ्लैश पेड अप विद दैट नेड वाज क्रेजी. 3 frags by PRX in that combo over there. Forsaken आते हैं, बू को पिक ऑफ करेंगे. अब जो सिचुएशन है वो 3v1 की रह जाती है. Forsaken with the 3k. यहाँ पर जैसे ही मैं बात कर रहा था कि Forsaken पूरे मैप पे सिर्फ 4 फ्रैग्स है. एक ही राउंड में 3 फ्रैग्स निकालते हैं और ये टोटल 7 फ्रैग्स पर आ जाते हैं. It is just matter of 1 round actually. The flash, the sky flash, the paranoia. Both the things paired up together and उसी के ऊपर जो पिक है वहां पर पिक्स उठाए गए और पूरी तरह से राउंड अपने खाते में लिखा गया. 1 राउंड अपार्ट फ्रॉम टीम हेरिटिक्स. टीम PRX यहाँ पर इस राउंड को जरूर अपने अंडर में कन्वर्ट करना चाहेगी. समथिंग विद दैट आउटलॉ. क्या यहाँ पर वो फायदा जो है वो दिला पाएगी? वो आउटलॉ क्या फायदा दिला पाएगी? दैट इज द बिग क्वेश्चन. Forsaken with that judge. He take down one, he take down other. Switch किया गया. Oh, he got knifed actually. भाई नाइफ कर दिया गया है वहां पर. That crazy knife. Monyet is going for that knife. वहां बदला लेने की कहीं ना कहीं कोशिश थी. पर knife actually doesn't happen. गए यहाँ पर सीधा नाइफ चलाया. And Monyet just went for that knife. Monyet के उस एटीट्यूड की वजह से वो यहाँ पर एलेक्स पिस्ड है. इवेन का कंट्रोल है. रबल का एक्चुअली जो कंट्रोल है वो दिया गया है बाय द टीम ऑफ हेरिटिक्स. Monyet का वो ग्रेनेड, Monyet के वो पेंट शेल्स एक्चुअली. दवाई कम्स आउट विद डबल. माइंड फ्रीक्स टेक डाउन रेंज एज वेल. बेंजी फिशी कहीं ना कहीं डैमेज करते जरूर है बट दवाई आएंगे, बेंजी फिशी को खत्म करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे एंड राउंड अपने नाम कर PRX को जरूर फिर से बड़ा दिलाएंगे इस मैप के ऊपर. PRX with that 5-7 half on 7-8 bonus भी अपने अंडर में कन्वर्ट करते हुए. समथिंग स्टिल हैव दैट आउटलॉ इन हिज हैंड्स. अभी तक वो आउटलॉ चला रहे हैं. इस राउंड के अंदर आउटलॉ बहुत ज्यादा कमाल कर सकती है. सी लॉन्ग पर आउटलॉ लग रही है एंड सी लॉन्ग पर ही प्लेयर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस विल बी समथिंग वेरी मच फन टू वॉच आउट फॉर. एक शॉट लेते हैं, समथिंग रेंज को पिक ऑफ करते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर Forsaken. क्या ये यहाँ पर पोजीशन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है? द आंसर इज नो बट Forsaken whips आउट देयर एंड वो वहां पर Forsaken को पिक ऑफ कर जाते हैं. Okay, something is trying. Oh,
the reload animation actually. बट वहाँ समथिंग कुछ ना कुछ ट्राई जरूर से करेंगे. समथिंग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस आउटलॉ से कुछ और वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकाली जाए. बट लेट्स सी हाउ इट गोज. समथिंग टेक्स डाउन अनदर वन विद दैट आउटलॉ. ये आउटलॉ काफी गदर मचाती हुई नजर आ रही है. बट मिनीबू वो एक फैंटम जो रिकवर हुई थी उसी से यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो देते हुए टीम पेपर एक्स को नजर आ रहे हैं. यहाँ जो राउंड है वो 2v2 पर कन्वर्ट कर दिया है. बट ये 2v2 का राउंड अब किस तरह से आगे बढ़ेगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन. बिकॉज मिनीबू अभी अपने हाथ में सिर्फ शेरिफ रखे हुए हैं. एंड समथिंग विद दोस 2 शॉट्स ऑफ आउटलॉ 4k फॉर समथिंग ओवर देयर. अगर एक्चुअली आपके पास यहाँ शील्ड नहीं है तो आउटलॉ सबसे घातक वेपन होगी इस पूरे के पूरे गेम के अंदर राइट नाउ. 140 का डैमेज आप कहीं भी टैंक हो जाए अगर आपके ऊपर तो आप कहीं भी बच नहीं पाएंगे. विदाउट फुल शील्ड, हाफ शील्ड के ऊपर भी आपके कोई भी जो दम है वो आपका चलेगा नहीं और प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा फेस आउट करनी पड़ सकती है. और वही इस राउंड के अंदर दिखा हमें. विद दैट आउटलॉ अभी भी समथिंग जो है वो आउटलॉ क्या समथिंग यहाँ पर आउटलॉ चैलेंज कर रहे हैं. ही जस्ट गेट्स 10 बुलेट्स ओवर देयर आउटलॉ की. गेट ओपन किया गया बाय समथिंग. अगर एंटर करते हैं समथिंग वहां पर आउटलॉ चलाएंगे, बू को पिक ऑफ करेंगे, इंस्टेंटली डैश आउट. रेंज इज नाउ यूजिंग his trash, बट वो ट्रैश ज्यादा कुछ काम आएगी नहीं. फिर से समथिंग जस्ट गॉट 2 विद दैट आउटलॉ. भाई ये प्लेयर कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा है. एनीवेज ही गॉट पिक्ड ऑफ. बट यहाँ पर अब हेरिटेक्स कहीं ना कहीं इस राउंड को अपने नाम करने की कोशिश कर रही है. माइंड फ्रीक एंड फोरसेकन 2v3 का ये सिचुएशन. अटैकर्स लॉकडाउन लगा हुआ है. फोरसेकन हैज टू समवेयर गेट आउट ऑफ दिस. बट उससे पहले बाहर निकलते उससे पहले मिनीबून को स्पॉट करते हैं, मिनीबून को डाउन करते हैं. नाउ माइंड फ्रीक इज विद 1v3. इस 1v3 के साथ ये किस तरीके से यहाँ पर डील आउट करेंगे वो देखने लायक बात हो सकती है. आई थिंक ही हैज नो टाइम आउट देयर एंड जब वक्त नहीं है तो ही हैज टू मूव एंड वो गन सेव करते हुए ही नजर आएंगे. बट मिनीबू जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं आई डोंट थिंक सो वो गन सेव कर पाएंगे. एंड द आंसर इज यस. माइंड फ्रीक ओके बॉडी शूटिंग. दिस इज बैड मैनर्स मिनीबू. This is somewhere some bad manners actually. भाई लेकिन ये क्या शॉट था? What that shot was actually? Anyways, the round just goes to Heretics. Those heroics by something doesn't work somewhere. But montage shots incoming. Montage के लिए shots आ गए. काफी बढ़िया चीज थी. Time out, Alex. Alex, time out. Alex, time out है, ले लो. शैडो भाई मैंने वो रीड किया. वो 2 और वो 3 लेके आए. नो एक्चुअली वही तो चीज है ना. इसमें जो पास पेसिंग है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है मुझसे. हम वहाँ पे या तो एजेंट्स के नाम ले सकता था या फिर मैं प्लेयर्स के नाम ले सकता था. अरे नहीं एक्चुअली यही सारे फीडबैक्स है which can be taken. I need those feedbacks, man. Actually, I need those feedbacks. I can work for that. Nobody was expecting this team to go out 0-2. But if PRX get another 4 on the board, that is going to be the reality. Pinged. Just an outline of a rubble. So guys, the lead mein hai PRX right now with 9-8. We are moving towards the 18th round of the game over there. Paranoia. Bhai, वो over there, but उस paranoia का ज़्यादा कुछ फायदा होगा नहीं. यहाँ अगर हम देखेंगे तो दवाई के हाथ में हमें एक शेरिफ नजर आ रही है एंड फोरसेकन. ओके माय बैड. माइंड फ्रीक का पैरानोया था वो. आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड दैट माइंड फ्रीक्स पैरानोया डजंट हेल्प्स. फोरसेकन should come out. You came out.
that shorty doesn't connect much. The paint shell comes, लेकिन वो paint shell कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होता है. बेंजी फिशी आते हैं, 2 प्लेयर्स को डाउन करेंगे. मिनी बू वहां पर दवाई को पिक ऑफ करते हैं एंड दिस राउंड इज ओवर. दिस राउंड इज ओवर. ये तो जल्दी से भी जल्दी था. लेकिन ज्यादा कुछ फायदा यहाँ ज्यादा कुछ फर्क जो है वो पड़ेगा नहीं टू द टीम ऑफ पेपर एक्स, बिकॉज एक काइंड ऑफ इको राउंड ही था. ज्यादा अगर कुछ 1-2 फ्रैग्स मिले होते तो वो बेनिफिशियल होता फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स, बट नहीं भी मिले हैं तो इट्स 9-9 राइट नाउ. एंड ये राउंड भी जो है वो हेरिटिक्स के नाम जाएगा. अब 9-9 जो है वो हमें देखने को जरूर मिलेगा. ओके समथिंग इट्स 1. अभी भी एग्जिट फ्रैग्स जो है वो निकाल दी जा रहे हैं बाय समथिंग. अगर पैटेटिक पीक करते हैं तो ही विल ऑल्सो बी टेकन डाउन, बट नो इज द आंसर. पीक नहीं करते हैं, यहाँ पर बच से जाते हैं. आई गेस अगर फोर्सेकन वहाँ पर वो जो स्टन आया उससे अगर स्टन ना होते तो कहीं ना कहीं बच जरूर से जाते, लेकिन उस स्टन के बदौलत वहाँ पर वो बचने में नाकामयाब रहे. एंड नाउ 9-9. यहाँ से जो भी टीम जीतेगी, यहाँ से जो भी टीम जीतती है, the team will go to double digits and वहाँ double digits मिलते ही आपको एक बड़ा बूस्ट, एक मेंटल बूस्ट भी मिलेगा एंड इवन आपको एक इकोनॉमी बूस्ट भी मिलेगा, बिकॉज द टीम will be losing. कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम्स आगे जाकर आ सकती है. हेरिटिक्स के लिए उतनी प्रॉब्लम्स होगी नहीं, बट फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स वो एक डेड ट्रैप में फंस जाएंगे और वहाँ पर एक डेड साइकिल जो है उनकी स्टार्ट हो जाएगी. आपको एक और एक बाय उसी तरीके से चलना होगा. फोर्सेकन विद दैट ओडन, सिग्नेचर ओडन ऑफ फोर्सेकन किस तरीके से रहेगी ऑन सी साइड वो देखने लायक बात हो सकती है. बी साइड पर वहां पर तो ट्रैप्स जो है वो फोर्सेकन के द्वारा लगाए गए हैं. यहाँ समथिंग ज्यादा उतावले हो रहे हैं. अगर समथिंग आगे जाते हैं ही विल फाइंड 3 प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम और उनके लिए वो प्रॉब्लम जरूर से हो सकती है. पैरानोया यहाँ पर किया जाता है विद दैट स्टन, बट समथिंग जस्ट एस्केप्स विद दैट अपड्राफ्ट एंड डैश. बेंजे फिशी भी स्पॉटेड है, उनको भी यहाँ पर स्काई फ्लैश के द्वारा, गाइडिंग लाइट के द्वारा वहां पर जरूर से स्पॉट आउट किया गया है. लेट्स सी कि अब यहाँ हेरिटिक्स का क्या मूव रहता है. ओके दे आर मूविंग टुवर्ड्स ए साइट एंड यहाँ पर ए साइट को एंकर करने के लिए सिर्फ मोनियट ही है एक अकेले खिलाड़ी जो नजर आ रहे हैं, बट दो सीकर्स विल कंफर्म कि यहाँ ए साइट का हेड जो है वही नजर आ रहा है. माइंड फ्री कभी भी स्पॉटेड नहीं है. He is spotted actually. रीज सीधा बी साइड पे घुसते हैं एंड बी साइड के ऊपर वो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज निकालते हैं, बट समथिंग विद दैट 2 फ्रैग्स. अल्टीमेट यहाँ पर यूज किया गया, न्यूडल सेफ का यूज. फोर्सेकन विद दैट ओडिन टेक्स डाउन 1. द ओडिन गोस ब्र, लेकिन यहाँ अब नजर देनी होगी. मोनियत हेल्प करते हैं यहाँ फोर्सेकन की. बेंजी फिशी टेक्स डाउन फोर्सेकन ओवर देयर. 2v1 की ये सिचुएशन. दवाई वर्सेस मोनियत, दवाई एंड मोनियट वर्सेस बेंजी फिशी. बेंजी फिशी अगर यहाँ डबल पीक आया तो एक साथ जरूर से बेंजी फिशी को टेक डाउन किया जाएगा, बट राइट नाउ हाफ तक पहुंच जाते हैं. मोनियट टेक्स डाउन बेंजी फिशी ओवर देयर और ये राउंड हाथ में जाता है पेपर एक्स के. हेरिटिक्स के लिए अब प्रॉब्लम्स का जो यहाँ समय है वो धीरे धीरे कर शुरू होते हुए नजर आएगा. Take that Odin, man. Take that Odin and give it to Forsaken. He is just asking for it. यहाँ तो कहीं ना कहीं रेंज और हमारे जो ओमन भैया है वो गले से मिल गए. आपको माइंड फ्री को यहाँ अगर रेंज और माइंड फ्री की बात करेंगे, कहीं गले मिल रहे थे एंड वही चीज़ है, गले मिलकर वो एक दूसरे को ईद मुबारक कहीं ना कहीं विश कर रहे थे. रमजान का महीना चल रहा है, हमारे सारे भाइयों को रमजान मुबारक यार. Anyways, let's get back to 20th round of the map. Forsaken on A side right now and Forsaken A side पर यहाँ पर जरूर से होल्ड डाउन कर रहे हैं with that 1 trap. एक ट्रैप वहाँ पर वो बी पर लगा चुके हैं. Let's see Forsaken यहाँ पर किस तरफ अपनी ओडिन जो है वो वहाँ बरसाने वाले हैं. That is the big question. रीटेक पर आ चुके हैं. 5v5 का ये रीटेक जो है वो रहने वाला है. फ्लैंक एंगल्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्कआउट किए जा रहे हैं, बट राइट नाउ फ्लैंक पर कोई भी नहीं है. ए रूट की तरफ आपको बेंजी फिशी होल्ड डाउन करते हुए जरूर से नजर आ रहे हैं. बेंजी फिशी यहाँ पर
थ्रैश के साथ बिल्डअप करके पेयर अप करके प्रैक्स जो है वो निकालने में जरूर से कामयाब हुए। Forsaken is taken down. The round is actually gone for team PRX over there. Heretics जो है वो यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर PRX के साथ चलती हुई नजर आ रही है। The thing is actually they are just moving shoulder to shoulder, hand to hand यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक राउंड PRX तो एक राउंड Heretics, कहीं भी यहाँ पर कोई भी नहीं बता सकता है यहाँ पर एक्चुअली कि कहीं भी समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी टीम यहाँ पर इस मैप को लेकर जाएगी। क्या ये मैप ओटी जाने वाला है? Will this go to OT? आज का पहला ओटी क्या हमें नजर आएगा, या फिर मैप 3 नजर आने वाला है, या फिर यहाँ पर 0-2 जो है वो क्लोज आउट देखने को मिलेगा? तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज अभी तक तो जरूर यहाँ पर बनी हुई है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक ये ओटी जा सकता है। अगर ये ओटी जाता है तो हेरिटिक्स के पास बहुत अच्छा चांस रहेगा कि वो यहाँ इस मैप को क्लोज आउट करके मैप 3 ले जाए। लेकिन अगर यहाँ ओटी नहीं गया तो शायद कहीं ना कहीं PRX मुझे लगता है कि इस 10-10 को भी कहीं ना कहीं 13 राउंड तक कन्वर्ट कर सकती है। ओडेन, दैट ओडेन 95 का डिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। समथिंग विद दैट नाइव्स, बेंजी फिशिंग को टेक डाउन करेंगे, बट अब जो ओडेन है वो अटैकर्स के पास आ चुकी है। पैथेटिक हैज दैट ओडेन, समथिंग 27 HP पर होल्ड डाउन करते हुए हील अप यहाँ पर कर दिए जाएंगे। रीग्रोथ, यहाँ पर रीग्रोथ का जो यूज है वो नवाई के द्वारा किया जाएगा, बट नाउ समथिंग हैज टू गो बैग। बू के पास सिर्फ 4 HP नजर आ रही है। समथिंग हैज टू गो बैग। ड्रॉप की तरफ 2 प्लेयर्स यहाँ पर होल्ड जरूर से कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। माइंड फ्रीक, आई गेस माइंड फ्रीक इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग 2 प्लेयर्स एट ड्रॉप एरिया, इसीलिए वो शायद ड्रॉप को वहां देख भी नहीं रहे थे और उसी की बदौलत वहां पर रेंज जो है माइंड फ्रीक को पिक ऑफ करते हैं। पैथेटिक विद दैट ओडेन takes down the final player। Heretics आते हैं यहाँ पर एंड वो लीड लेते हुए नजर आते हैं अभी के लिए। 11वें राउंड के साथ Heretics जो है वो नजर आते हुए हमें, एंड नाउ दे हैव द रियल चांस ऑफ गेटिंग इट। यहाँ हेलो रेंज, he just whiffed out something। Alex is so much involved. Actually, Alex is so much involved. 11-10 Heretics के पास रियल चांस, बट समथिंग ही वो ऑप। Forsaken वहां पर दवाई जाएंगे, बू को पिक ऑफ करेंगे। मोनियट पिक्स ऑफ मिनी बू। पैथेटिक के हाथ में वो जो ओडन है वो काफी ज्यादा गदर मचाती हुई अभी के लिए नजर जरूर आ रही है। यहाँ पर प्लांट को रोका गया है, विंगमैन को तोड़ा गया है। बेंजी फिशी विद दैट अटैकर्स लॉकडाउन, उसको काउंटर करने के लिए अभी के लिए कुछ भी नहीं है PRX के हाथ में। एंड दिस राउंड इज जस्ट मूविंग फार अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ PRX राइट नाउ। वहां पर हेरिटिक्स के खाते में ये राउंड भी कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ सकता है, जब तक कि हेरोइक्स जो है वो नजर ना आए फ्रॉम माइंड फ्रीक या फिर समथिंग ओवर देयर। कोई हेरोइक्स अगर यहाँ पर देखने को मिलती है देन इट वुड बी वेरी वेरी ग्रेट, बट विद दिस वाइपर स्पिट ऑन आई डोंट थिंक सो कोई हेरोइक्स जो है वो हमें नजर आने वाली है। रेंज वहां समथिंग को पिक ऑफ कर जाएंगे एंड ये राउंड यहाँ ट्राई किया गया था एक्चुअली। आप क्रेडिट्स देखिए, आप क्रेडिट्स देखिए PRX के, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्रेडिट्स इन देयर हैंड्स राइट नाउ। 0-0 क्रेडिट्स के साथ यहाँ पर दवाई और समथिंग नजर आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो दे विल बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ गुड वेपनरीज ओवर देयर। अगर वेपनरीज नहीं है, अगर वेपनरीज है एक्चुअली तो उनके पास कोई ना कोई एबिलिटी की शॉर्टेज जरूर से रहेगी, कोई ना कोई चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा इस राउंड के अंदर। एंड दे जस्ट हैव टू डू समथिंग, they just have to do something for getting into this map back। 12-10, 3 Guardians, 2 Vandals, no shield actually for Dawai over there। समथिंग वो गार्डियन के साथ एक अग्रेसिव एंगल पर होल्ड डाउन करते हुए यहाँ पर टरेट को तोड़ने की कोशिश है, बट नहीं, टरेट तो वहां पर टूटा नहीं, मेरे हिसाब से वापस बुला दिया गया है। दवाई धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं यहाँ पर अग्रेसिव जाने की कोशिश कर तो रहे थे, बट राइट नाउ अग्रेसिव जाने का कोई भी फायदा जो है वो मिलेगा नहीं। पैथेटिक अभी भी उसी ओडिन के साथ यहाँ पर अपना काम जो है वो करते हुए। रेंज
यहाँ कुछ ना कुछ अपनी टीम के साथ बेहतर करते ही है. That IGL from Reigns is crazy. He just binds his team and ये मैप पूरा का पूरा यहाँ पर Reigns अपनी heroics के साथ, अपनी IGLing calls के साथ, he is just taking those great calls for his team and taking those rounds in his pocket. पूरी की पूरी टीम का क्यूमुलेटिव एफर्ट यहाँ पर अभी तक तो नजर आया है टीम हेरिटेक्स की तरफ से. बेंजीफिशी के कुछ अब यहाँ पर सोलो हीरोइक्स देखने को मिले, मिनी बू के कुछ हीरोइक्स, रेंज के कुछ हीरोइक्स, समटाइम्स पैथेटिक के कुछ हीरोइक्स भी नजर आए. बट इस राउंड की अगर मैं बात करूंगा तो अभी के लिए सी साइड के ऊपर हिट जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है. रेंज की तरफ से वो ट्रैश जो है वो यूज किया जाएगा, लेकिन समथिंग को क्या वो डिटेन करेगा? द आंसर इज नो, समथिंग इज नॉट डिटेन. 12 सेकंड का समय. बेंजीफिशी टेक्स डाउन माइंड फ्रीक ओवर देयर. यहाँ पर ये अल्टी जो खींची गई, सिर्फ 4 सेकंड. द प्लांट कांट हैपन, बट प्लांट ना हो तो हम सारे के सारे प्लेयर्स को एलिमिनेट कर ये राउंड जो है वो जीत जाएंगे. एंड दैट शोज कि हेरेटिक्स इज स्टिल इनसाइड द गेम. हेरेटिक्स वहां पर गेम से बाहर नहीं हुई है. हेरेटिक्स ने जो कंपोजर दिखाया है वो इज ऑन नेक्स्ट लेवल. And they just got the map of Lotus in their hands. Now the series is in anybody's favor right now. कोई भी यहाँ पर जो टीम है वो स्प्लिट का मैप जो लेकर जा सकती है, बिकॉज ट्रिपल डुएलिस्ट कॉम जो है वो यहाँ पर नजर आएगा हमें पेपर एक्स के द्वारा. एंड हेरिटिक्स के द्वारा क्या नजर आता है वो हमें देखना होगा. चार सेकेंड ही था. So guys, map 2. यार मजा आ रहा है बे. I'm feeling it. I'm actually feeling it. It is kind of crazy. Guys देखो, ये देखो. रेड FM, redefining रेडियो, जी मराठी चैनल, मुंबई के ऊपर कुछ एक लिखना था, BMJ प्रोजेक्ट एक था, वो भी बना है. भाई इतना कुछ करना पड़ रहा है. Just because of one round they lost their control. Actually, yes. चौकी पिक 2 मंगा, 4 चौकी पिक. चार चौकी पिक, 3 सुसु. चार चौके पे 3 सुसु. ये 2 चीजें मंगानी है. जब तक बाकी की चीजें जो है वो भर देता हूँ. भाई गले के लग जाते हैं लेकिन कंटिन्यूसली 2 मैचेस. क्या कोला कोला. खोला इसको. चलें पैक होए, वापस जाएं. एप्पल जूस. एप्पल जूस का डब्बा जाएगा यहाँ पे. टर्को, इस टर्को पुल नो ना. कॉफी काइंड ऑफ फुल है, ठीक है. इससे ज़्यादा कॉफी राइट नाउ आई डोंट थिंक सो लगेगी. फ्रिज में से टर्को निकाल के पी लो, रिलैक्स होना. कॉफी पड़ी है मेरी, मम्मा अब भी ला के दी मेरे को. कॉफी पीते हैं थोड़ा. बट है यार, मतलब फन है भाई. कास्टिंग एक्चुअली फन है जो करते हैं ना हाईएस्ट लेवल्स पे. तो आई वोंट से कि फन है, दैट इज प्योर हार्ड वर्क. बट हार्ड वर्क के साथ इट्स फन. हार्ड वर्क के साथ इट्स फन. इफ यू डोंट डू हार्ड वर्क, nah, it's not for you.
लाइक एक टाइम पे मैं था, एक ही दिन में 12-12 मैच बीजीएमआई कास्ट करता था, मजा आता था वो टाइम पे। क्या क्या मंगाना है मैं भूल गया यार। नहीं ये दूध भी मंगाना पड़ेगा, चीज़ है, अंडे हैं, बाकी का सामान फॉर नाउ है, सिर्फ वो 2 चीज़ मंगानी है। 4 चौके पे 4 किलो 300। काफी चिल है यार, एक माइंड को इतना शांत करता है ना ये गेम, मजा आ जाता है। नीचे लगो भाई, लग गया, चले। हाँ बाय द वे गाइस, थोड़ा सा कोई चेक करते रहना ना चैट में, जो भी है प्लीज चेक करते रहना ना मैच स्टार्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि मैच के बीच में ब्रेक कम मिलता है, सीरीज के बीच में थोड़ा सा मिल जाता है, मैच के बीच में कम मिलता है। एंड आई हैव टू कास्ट पिस्टल दिस वन, ये पिस्टल मेरे को कास्ट करनी है भाई, बहुत टाइम से फर्स्ट पिस्टल मिस हो रहा है, आई डोंट वांट टू मिस नाउ। लेट्स स्टार्ट द डे। क्या ऑर्डर करना चाहिए? पानी की बॉटल्स हैं, हाँ पानी की बॉटल्स है, जैप है, जैप का ऑर्डर कर सकते हैं, 3 जैप ऑर्डर कर लेते हैं, 3 जैप 3 एग्स। जैप का जो प्राइस है वो बड़ा है ना कहीं ना कहीं। स्टार्टेड, भागो। दस 36 पे भागो। थैंक यू। हाँ जस्ट किडिंग, भाग गए हम, मैं काइंड ऑफ स्टार्टेड ओनली, अच्छा हुआ टाइम पे ही भगाया। देखो स्क्रीन पे ही है, स्टार्टिंग स्क्रीन पे मैं आया। चलो एंजॉय द मैच, मीनवाइल प्रिपेयरिंग माय सेल्फ फॉर रेगुलर वीकडेज रूटीन नाउ। करो करो भाई, 1 बजने वाला है, मैं टाइम ही नहीं देखा हूँ। आज कास्टिंग में इतना बूम बाम हो गया ना, मैं 1 सेकंड में वॉशरूम जाके आया। Actually kind of curious to see what we're going to get out of Heretics here as we jump into this one as well. There's just really like, I think at this point now we have it's a BO1, you got to shake it off, right? Heretics certainly riding that high coming out of that last game, but with PRX, what we've seen, even when we were looking at those pistols, even when you think like, oh man, PRX licking their wounds, they
they will find a way to get right back in it. So Heretics can't let them back in. Well, you know, one of my concerns is that Heretics barely made it across the line in that one, and then you look at Split, a map that they played up against KC, they beat them, and when it came back to it, KC had them figured out. They demolished them. You mentioned the EDG game. I think it was a 13-9 loss for their opponents. Well, PRX looked a little better because Heretics was 13-5 loss. Agent select in and PRX, I'm happy to see this. They're reinventing the comp a little bit, switching Divide on to a initiator here, the Sky, instead of what was previously basically that third duelist. वो तो फिर मैं अंतर्यामी हूँ. PRX changed the comp. A lot stronger on defense, and they're going to have a lot more utility behind the 1-2 punch of Something and Forsaken. This comp will play a lot more similar to what we've seen previously in this series with these double duelist comps. I kind of like this. At the same time, you know, Forsaken. एक सेकंड, ट्रिपल डुएलिस्ट कॉम PRX का था? हाँ, PRX का ही था. या फिर Sentinels का था? Why I am getting confused? Hello? मैं भूल गया. मैं भूल गया यार. I don't know. This is a massive moment here for Heretics to win in front of this crowd, but PRX can leave them silent. Let's send it back over to Brennan's Sideshow. Even Venom as well. Guys, let's get to it, man. Elimination game as it's already been set up, and we set our sights. Now I was anticipating. We've had some silly rounds, don't get me wrong, but I was anticipating something a little bit sillier, maybe PRX throw in that triple duelist once more. Hasn't been the case though, going back to something that's a bit more, I mean, tried and tested, to put it lightly. Yeah, and it reminds me of Alex's arrival quote when he came Ritmos. W Gaming is 2020. Hagamos. So we've got to figure something out for this year. And this really feels like Madrid has been an evolution process of PRX. Let's go. Figure out their identity. Struggling to reinvent themselves a little. Let's see how good they look running basically. Mostly Forsaken यूरो पे रहता है. मोनियत रेस पे रहता है. Forsaken इस बार रेस पे आया है. हाँ, यही थे. ट्रिपल डुएलिस्ट इनका ही था. ठीक है. Final map of the day, guys. यहाँ पर ये मैप सर्वाइवल के लिए रहने वाला है. Actually, PRX instantly getting the B side. And B side पे एंट्री इतना जल्दी हुआ कि सेटल होने का मौका मेरे को नहीं मिला. And they are just inside B. Something gets one. Something just got one. यहाँ पर रीसेट करते हुए सारे के सारे प्लेयर्स अपने एंगल्स को होल्ड डाउन करते हुए सीटी साइड से यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं कि बेंजे फिशी एंड पेडिटेक बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सीटी साइड. लेकिन हेवन से जब रेंज वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैशेस वगैरह यूज करे. Forsaken with the shot, he gets 2 on the face. The pistol just gave the statement. Actually, the pistol gave the statement. I mean, the reason why these maps have been so closely contested, the pistol rounds. He just wins inside that smoke. He just played, and he just got 2 frags, man. Just so that he can set up a play like that. अब ये राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द टीम ऑफ PRX. यहाँ पर हेरेटिक्स को समझ ही नहीं आया एक्चुअली. बट नाउ कमिंग बैक टू द गेम, सेकंड राउंड जो रहेगा वो PRX के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. बस आज का दिन काफी अप डाउन रहा है. जो पिस्टल जीता है वो फॉलो अप राउंड जीत नहीं पाया है. सो इफ यू आर विनिंग दिस राउंड, कहीं ना कहीं आप पहले वैसे प्लेयर रहोगे जो यहाँ पर पहला पिस्टल राउंड जीतने के बाद फॉलो अप जो है वो जीतने में कामयाब होगे. वो भी सिर्फ अगर और अगर जीतती है यहाँ पर PRX तो. और मुझे उसके आसार काफी कम लग रहे हैं. बट नहीं, समथिंग गेट्स 1. मोनियत गेट 1. वो वहाँ पर 2 प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं. मोनियत को डाउन किया उन्होंने डाउन किया Forsaken को. 3v3 की ये सिचुएशन 3 क्लासिक्स वर्सेस एक वैंडल, एक बुलडॉग एंड एक स्पेक्टर हमें नजर आ रही है. बट समथिंग विद दैट वैंडल he can definitely do something and he can definitely get those frags. Benji Fish यहाँ पर डिंग होते हुए he just got down. Something just farming that egos. and यहाँ पर एक 4K के साथ आते हुए PRX अपना फॉलो अप राउंड जो है वो पहली बार इस पूरे के पूरे सीरीज के अंदर जीतती हुई नजर आई है इनिशियली इन द फर्स्ट हाफ. The Pistol Kings एक्चुअली बहुत सारे पिस्टल्स इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर यहाँ जीते जरूर से PRX ने. उसके बाद फॉलो अप यहाँ पर जीते हुए नजर आए. अब एक बोनस राउंड की बारी आ जाती है. If this bonus round gets converted, then PRX जो बहुत क्रेजी गेम जो है वो खेल जरूर से सकते हैं. Forsaken चिल कर रहा है.
The guys are just chilling. The players are just chilling. Forsaken is also chilling. Even Mind Freak. Sure, something is just feeling it, man. Oh, that trap just changed everything. Benji Fishy with those three. Something का वो nasty shot, लेकिन Benji Fishy का ये hold. That is crazy. And Benji Fishy with 4. So something के 4K का जवाब Benji Fishy के 4K के द्वारा दिया जाता है. And the bonus round is done for the team of PRX. यहाँ bonus round में ज़्यादा कुछ value जो है वो निकाल नहीं पाती है PRX, and Heretics just win their first gun round over there. Neural Thrift is on for Benji Fishy. Sit down, sit down. He is just saying sit down to the team of Paper X over there. कहीं ना कहीं mid, यहाँ पर mid control लेने की कोशिश. Forsaken, if you would have got that judge in your hands तो शायद कुछ फायदा जरूर मिल सकता था, but now you are not having that judge. एक वैंडल है आपके हाथ में, तो वहाँ पर ज़रूर से वो ज़्यादा फायदा देगी नहीं. एंड क्लोज रेंज के अंदर इन द मैप ऑफ स्प्लिट, यू नो द गन लाइक जज स्पेक्टर कितना ज़्यादा काम आती है. माइंड फ्रीक कम्स आउट हियर. ए पर माइंड फ्रीक का आज का पूरा अगर हम दिन देखें, एक्चुअली यहाँ पर उनका रोल ही देखें तो एक लर्कर के रोल के हिसाब से खेल रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा बेटर वहाँ पर उनका प्ले जो है वो निखर कर आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेल भी रहे हैं. Trap has been broken by Mind Freak. एक मोल्टो वहाँ पर फेंका जाता है. So the peak doesn't come. But the flash and the peak on the time. Flash का टाइमिंग और peak का टाइमिंग एकदम बहुत ही प्यारा यहाँ पर हमें नजर आता है. बैक ऑफ द साइड यहाँ पर जरूर से बेंजी फिशी होल्ड डाउन कर रहे हैं. बेंजी फिशी गेट्स 3. फिर से एक 3 के बेंजी फिशी के द्वारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. आफ्टर दैट मैप यहाँ पर कहीं ना कहीं बेंजी फिशी जो है बहुत ही प्यारे तरीके से वहां पर खेल रहे हैं. 4K, 1 more 4K फॉर बेंजी फिशी. एंड बेंजी फिशी 2 राउंड्स के अंदर 8 फ्रैग्स निकालते हुए नजर आए हैं. And this guy is literally crazy. यहाँ पर कहीं ना कहीं this guy have that fan following. यहाँ पर इस प्लेयर से बहुत लोगों को उम्मीद है एंड ये उन उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं. He's just epic. Look at that. Cheeky with it. But he is looking monstrous over here. Oh yeah. I mean the trip being broken. Benji. This guy is crazy, man. The team is hyping up. The team is just hyping up. The crowd is hyping up. Paper X with that early timeout. As always, Alex is coming up with that early timeout. इस timeout के अंदर he has to make his team comfortable. Actually, ज़्यादा कुछ अगर बोलेंगे तो शायद backfire कर सकता है, लेकिन उनको इस timeout के अंदर backfire नहीं करवाना है. 5 seconds to the timeout where it gets ended. Let's see how it goes for team Paper X after the timeout, because timeout के बाद के जो rounds है बहुत ज़्यादा crucial होने वाले हैं. 2-2 का ये जो यहाँ पर score line है वो बहुत ही ज़्यादा awkward सा है, because आप पहले 2 rounds जीत चुके थे, फिर आप एक राइफल राउंड जो है वो हार जाते हैं. And the score is at 2-2. Now they are on eco 7-2 for something, and actually Benji Fishy is on 8-2. So these two guys are on fire. दोनों के दोनों players यहाँ पर दोनों अपनी टीम के स्टार प्लेयर्स बहुत ही प्यारे तरीके से अपना गेम जो है वो निखार कर लेकर आ जरूर से रहे हैं. एंड उसी की बदौलत यहाँ पर अभी के लिए दोनों की दोनों टीमें जो है वो हमें नजर आ रही है सेम स्कोर लाइन पर रही, लेकिन रेंज आते हैं. वो सेकंड को आप समथिंग को वहाँ पर पिक ऑफ करेंगे. समथिंग इज पिकन ऑफ. यहाँ पर कहीं ना कहीं Forsaken की HP भी बहुत ज़्यादा लो ज़रूर हुई थी. He is getting regenerated. यहाँ पर regrowth उनको मिल जाती है, लेकिन रेंज विद दैट फॉल्ट लाइन, एक्चुअली वो फॉल्ट लाइन के साथ खड़े हुए हैं ज़रूर. और यहाँ अब हेवन की ये फॉल्ट लाइन ज़रूर से आएगी. Forsaken is turned even.
माइंड फ्रीक वो स्टन्ड, लेकिन अब बेंजेफिशी उसी एंगल से फिर से 2 फ्रैग्स निकालते हैं. बेंजेफिशी इज ऑन फायर, ही इज नॉट स्टॉपिंग, ही इज जस्ट गेटिंग दोस फ्रैग्स. लेकिन मोनियत आते हैं, फाइनली मोनियत वहां पर बेंजेफिशी के ऊपर जरूर से लगाम लगाते हैं, बट तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी. एंड ये राउंड भी हेरिटेक्स अपने नाम करती है. बेंजी इज ऑन फायर, बेंजी इज फीलिंग दैट The guy is just playing from the same angle. वो सिर्फ एक ही एंगल खेल रहे हैं, वो सिर्फ एक ही एंगल से बार बार फ्रैग्स निकाल रहे हैं. The support of those flashes, that fault line, ये आपको सपोर्ट भूलना नहीं है. Actually वो स्कोर लाइन पे नहीं दिखेगा, but that will just impact so many things for the team. Rage is just helping his mate so much to play here. फिर से बैक ऑफ साइड पर यहाँ पर कहीं ना कहीं होल्ड डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं. बेंजी फिर से साइड का हिट कहीं नजर आ सकता है. ओके, द ट्रैप हैज बीन ब्रोकन आफ्टर. यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन जो है, फॉल्ट लाइन की तैयारी हो जरूर से रही है. फिर से वही एंगल, फिर से वही प्लेयर एंड फिर से वही रिजल्ट. इस बार तो यहाँ पर न्यूरल थ्रेफ्ट का जो उपयोग है वो भी कर दिया जाएगा. And with that neural theft, he will move forward. आप एक ट्रैप देखिए, वो डबल सैचल का ट्रैप, वो आप ड्राफ्ट का ट्रैप. The traps are just crazy by Benji Fishy. Something just gets late. He could have got the guy at CCT, okay, BCT as well with that operator, but यहाँ पर कहीं ना कहीं रिएक्शन टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, and वो रिएक्शन टाइम की वजह से कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं. But something is just okay. Moniet, you are not spotting anybody. बैक साइड पर बू अभी भी होल्ड कर रहे थे, बट नहीं, माइंड फ्रीक आएंगे. माइंड फ्रीक यहाँ पर कहीं ना कहीं हिसाब जो है वो बराबर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रिपल पीक अगर आपके ऊपर आता है तो यू जस्ट कांट डू एनीथिंग. समथिंग फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ऑपरेटर जो है वो सेव आउट करते हुए नजर जरूर से आएंगे, बट द एंगल ही इज वाचिंग, कहीं ना कहीं वहां से कोई भी नहीं आ रहा है. कहीं ना कहीं वहां से अभी तक एक भी प्लेयर का आगमन जो है हुआ नहीं है. लेकिन बी साइड के ऊपर से आप अगर देखेंगे तो 2 प्लेयर्स जो है वो उनके तरफ जरूर से आगे बढ़ रहे थे. Nobody just reached to him and operator has been saved. PRX has to do something. वरना इस टूर्नामेंट से they will get eliminated. Wow, PRX are genuinely looking rattled here. Not something that I was expecting to say right at the beginning of Split. Something with those multi-frags can just take his team to another level. But अगर वो चीज़ नहीं होती है guys, तो वहाँ पर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हुई नजर आ सकती है. Once again, something as that operator, and if that operator works out, and he can just get some frags. एक ट्रैप देखिए यहाँ पर बेंजीफिशी के द्वारा मिड पर लगाया गया है. एक ट्रैप वहाँ पर ए साइड पर कैमरा का जो पोजीशनिंग है वो वापस ही रैम्स की तरफ ही किया गया है. हेवन की तरफ वो कैमरा की जो पोजीशनिंग है वो देखने को जरूर से मिल रही है. मिनी बू टेक्स डाउन माइंड फ्रीक ओवर देयर. यहाँ पर राउंड की शुरुआती कुछ क्षणों के अंदर ही दिक्कत जो है वो PRX के लिए हो रही है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट, दे आर नॉट एबल टू जस्ट कीप देयर 5 men alive till the end of the round, till the time they plant. वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है. till the time they plant वो भी यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं करवा पा रहे कि वो 500 के 500 प्लेयर्स उनके जिंदा है वो रख सके. समथिंग टेक्स डाउन मिनी बू ओवर देयर. यहाँ पर कहीं ना कहीं बू जो है वो मॉनिट को टेक डाउन करेंगे. Forsaken takes down Pathetic, but Boo यहाँ पर जो रॉकेट है वो मिस आउट होता है, जो अल्टीमेट है Forsaken का वो मिस आउट होता है. एंड अगर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता तो बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन नहीं. 1 bullet and a dream. Boo comes out on top. He eliminates Forsaken over there. The score line goes to 5-2 and उस पिस्टल और फॉलो अप के बाद यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है फॉर द टीम ऑफ PRX. कुछ भी सही नहीं जा रहा है. The guys are just going 1 bullet and a dream as well.
the showstopper, provide the pressure, and at least figuring out, you know, forcing some kind of play out of him. Benji is just feeling it. Benji Fish is just feeling it. I guess it's her mom who is getting emotional watching us kid play. I'm going to be honest, I thought there was going to be more there after the oh my god. But it's another timeout, the second one. Short succession here for PRX, and you can feel it, the necessity of it. Guys. Am I overreacting here to say this just looks cooked? Now I'm losing. Actually, I'm losing my words. I'm losing my breath. थोड़ा सा breath regain करना पड़ेगा. Because without any break तीसरा मैच हो गया यार. 5 मिनट का भी break मिल नहीं रहा है. मार्केट सिमुलेटर चालू करता हूँ, खत्म हो जाता है. At यार इनको 5 मिनट का ब्रेक देना चाहिए. या फिर 5 मिनट का दे रहे हैं, मेरे को 5 मिनट कम लग रहे हैं. Might be possible. Heretics 5, PRX 2. What you've just been screwing with, playing with officials, things go amiss. You run out of the right ideas, especially if you haven't put it into practice, and it really. अच्छा अपडेट ये चेंज किया था. Excuse me, man. Excuse me. Sorry. Okay, so ए हेवन यहाँ पर कहीं ना कहीं ए हेवन का कंट्रोल सिंस इंस्टेंटली यहाँ पर फोर्सेकन लेते हुए नजर आए. एंड यहाँ पर पैटेटिक को वहाँ पर मिड पर पिकऑफ किया गया. वो क्रेजी सा यहाँ पर पिकऑफ काफी फास्ट यहाँ पर प्ले जो है वो देखने को जरूर से मिल रहा है. Let's see how it goes for team PRX right now over there, because पहला पिक बहुत टाइम बाद यहाँ पर फर्स्ट पिक जो है वो उनकी तरफ आया जरूर है. But this guy Benji Fishy is on another level right now. मोनियत जो है वो Benji Fishy को डाउन जरूर से करेंगे, लेकिन रेंज with that 3K. मोनियत यहाँ पर अकेले बचे हुए हैं. अल्टीमेट आएगी. रेंज with that 4K. रेंज को वहाँ पर 3 प्लेयर्स जो है वो ब्लाइंड मिलते हैं. He just took 3 over there. आखिरी फ्रैग भी वो अपने नाम करते हैं. एंड विद दैट लास्ट फ्रैग, फाइनल फ्रैग, ही जस्ट गेट्स एवरीथिंग. दैट paranoia works from the heaven. That paranoia worked from the heaven. Ah, 6-2 for this map right now in favor of Heretics. PRX is just not getting the right thing कि उनको क्या करना चाहिए. बेंजी फिश यहाँ पर अकेले ही ए साइड को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप अगर देखेंगे तो अब फोर्सेकन, माइंड फ्रीक एंड दवाई, these guys are stepping up. यहाँ इस राउंड के अंदर जरूर से उन्होंने अपने लिए कुछ फ्रैग्स बटोरे हैं. फाइनली 4v2 की ये सिचुएशन इन द फेवर ऑफ PRX over there. Boo but takes down Forsaken. These guys are on fire. Boo का aim यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रैक्ड ही चलते हुए नजर आ रहा है. मिनी बू भी यहाँ पर माइंड फ्रीक को पिक ऑफ कर जाते हैं. मिनी बू यहाँ पर दवाई को पिक ऑफ करते हैं. अब एक 1v2 की सिचुएशन फॉर मोनियत यहाँ पर नजर आती है. Let's see how it goes for Moniyat, because 1v2 की सिचुएशन काफी बड़ी एडवांटेज थी. Moniyat, he takes down one, he peeks out, लेकिन कवर में जाते हैं. Instantly he peeks out another guy, Mini Boo, and he just takes down the whole round in his hands. The actual thing is, यहाँ पर crowd factor बहुत ज्यादा मैटर करते हुए नजर आ रहा है. Disappointment on the face there of the Heretics fans, but it's mirrored within the coaching booth of PRX, because even when things go well. 10th round of the game, 6-3 का स्कोर लाइन यहाँ पर PRX के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरा होता हुआ नजर आएगा. मिनी बू वहाँ पर अपनी अल्टीमेट के साथ जरूर से आगे बढ़ते हुए, बट गाइडिंग लाइट यहाँ यूज की गई है बाय द वे. गॉट फुली फ्लैश्ड, डॉज करने में असमर्थ, एंड मोनिट इज होल्डिंग आउट. He has that from the shadows. ये राउंड में माइंड फ्रीक, ओके, जैसे ही मैं कह रहा था कि माइंड फ्रीक की अल्टी से ये राउंड जो है वो कहीं ना कहीं आप अपने लिए सिक्योर ज़रूर कर सकते हैं. वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास रहती ज़रूर है विद वाइपर्स पिट, बट वो चीज़ इस राउंड में तो यूज़ नहीं होने वाली है, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट वन इन द होल सर्वर टू गेट पिक्ड ऑफ इन दिस राउंड.
डैशिंग किया जाता है यहाँ पर, बैक साइड का जो कंट्रोल है वो लिया जाता है विद दैट शॉटगन, विद दैट जज। बू को वहां पर टेक डाउन किया जाता है, बट पैटेटिक टेक्स डाउन समथिंग ओवर देयर। 4 प्लेयर्स वहां पर कहीं ना कहीं आते हुए नीचे। Forsaken, you beauty man, what you have done actually. The guy is on fire. Forsaken, remember the name. He just reset so well. Alex is also smiling. Alex is also feeling it. The timing wasn't that far off. It's more credit, in my opinion, to how good Forsaken's aim looks, rather than anything looking too sloppy for Heretics. Heretics takes the time out for themselves actually. काफी crazy है. Let's go, man. Little PRX price. Alex can smile, guys. What about the score? Okay. They actually are starting to come up with some really good ideas of how to deal with these. Yeah. When they went for the A hit, they had a paranoia towards where Benji plays. They waited to force him inside of his cage and then double cleared it. You know, they're really thinking and trying to adapt on the fly. Not so much rule setup किए थे ना. It's done. Welcome. Rule setup किया. To deal with this. And it's taken them long enough. It took them until round 9 to look competent on these sight hits, but they're getting there and it might be just enough. Gonna come down a lot to this though. So guys, after that epic round of Forsaken, how you guys feel? कौन सी टीम जो है वो यहाँ पर इस मैप को लेकर जाएगी? Okay, both the traps are broken actually. टीम जो है वो एंटर करती है. That the rocket should have been shot. Mind Freak and Monier takes the whole round in their hands actually. Even Dawai comes out for their help. Something भी आते हैं. चारों players एक फ्रैग अपने नाम करते हैं. Boo is the only one who is surviving right now. And Heaven का वो जो एरिया है वो Monier versus Boo का ये फाइट रहने वाला है. Let's see. यहाँ पर Boo मोनियट को पिक ऑफ करेंगे, एक ओमन डिप जरूर करेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक सरवाइव करने में नाकामयाबी ही हासिल होगी, बिकॉज समथिंग विल कम आउट ऑन टॉप एंड ही जस्ट टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हेरिटिक्स इन दिस राउंड. Forsaken का रॉकेट जस्ट dismantled actually. Moniet is enjoying. Every player of PRX is enjoying actually. But the thing is, सिर्फ enjoy करने से नहीं, कहीं ना कहीं आपको perform कर भी लेकर आना पड़ेगा. वो performance दिखानी होगी. One way, something is holding out outside. अगर बू कहीं ना कहीं यहाँ से पुश आउट करते हैं तो मुश्किलें ज़रूर से हो सकती है उनके लिए, लेकिन नहीं, यहाँ से पुश आउट करने का बिल्कुल भी जो फैसला है वो लिया नहीं जाएगा. वाइपर स्पिट का एक जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है इन द एरिया ऑफ मिड. यहाँ पर मिड ज़रूर से दिक्कतों में अब डालेगा, बिकॉज मिड का एरिया पूरा का पूरा लॉकडाउन सा हो जाएगा फॉर द टीम ऑफ PRX. वहाँ पर वो जा ही नहीं पाएंगे. दे हैव टू जस्ट हिट साइड समवेयर, या फिर उनको कहीं ना कहीं वाइपर को ज़रूर से ढूंढना पड़ेगा. अगर वो वहाँ पर वो चीज़ करने में भी पॉसिबिलिटी नहीं रखते हैं एंड दिक्कत उनको हो जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में यहाँ पूरी की पूरी टीम जो है वो आती हुई नजर आएगी. Forsaken and something with those two. The knives are epic, but Benji Fishy today, this guy is not just accepting his fate. He is just epic and he is just making his own fate right now. He is just refusing to die. Dawai just survives somehow. 2v2 यहाँ पर एक वाइपर स्पिट के अंदर ये 2v2 का जो फाइट है वो रहने वाला है ज़रूर से. माइंड फ्रीक full on health, Boo with full health and Pathetic is also on full health. So यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो माइंड फ्रीक पर आता है ये एक फाइट निकालने का, बिकॉज दवाई finds the timing on Pathetic. Boo just finds the thing on
माइंड फ्रीक एक्चुअली बू यहाँ पर अब स्मोक करेंगे एंड ही विल जस्ट ट्राई कि वो यहाँ पर स्टिक आउट करे, बट क्या वो स्टिक करने में कामयाबी हासिल करेंगे? द आंसर इज नो एंड दवाई आएंगे, ये 6-6 का स्वॉप जो है वो लेकर आएंगे एंड पेपर एक्स ये 6-6 का बहुत मोस्ट नीडेड स्वॉप जो है वो उनकी तरफ से दिखता है हमें। लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर देम इन डिफेंड। और वहीं अगर मैं हेरेटिक्स की बात करूंगा, टीम हेरेटिक्स they will be eyeing to get this map and get this series in their half। बहुत ही बढ़िया तरीके से हेरिटिक्स जो है वो देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर। अब जरूर चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने सेकंड मैप को क्लोज आउट किया वो इस मैप को भी क्लोज आउट करे। बेंजीफिशी का ये एम यहाँ पर जरूर उनको बहुत फायदा दिलाएगा। द वे बेंजीफिशी इज फ्रैगिंग आउट, वहाँ पर वो पोटेंशियली ही इज जस्ट डूइंग मोर देन दैट। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर पावर ट्रैकिंग जो है वो उनकी तरफ से हमें देखने को जरूर से मिल रही है, बट हाउ विल इट गो अहेड वो चीज़ देखने लायक होगी। मॉनिटर का इंटरव्यू एंड वी विल जस्ट बी बैक आफ्टर दिस। ये क्या मार रहा है वे? भेंजी अलग ही है, अलग मार रहा है, मजा आ रहा है। Sort some like communication problem in those crucial round, I would say. Not a lot really to play with. They're going to try and just almost run their way through it, but they're slowly being revealed every single time they try and make their way through. Finally, the reckoning will fade, but Mind Freak now in position. A cove for Forsaken to try and almost fight within, and they are falling like flies. Forsaken winning every battle. I mean, it's really hard. थोड़ा सा very slow. गाइस हल्का सा मेरे को टाइम दो। Pacific kickoff. I mean, the goal for this tournament is just we go one by one, you know. It's not like we need to go to playoff, but if we had a bad tournament, I mean, everyone's just okay, you know, because we're not setting up the high expectation for this tournament. I just like want to go step by step, you know. Maybe that's the key to some of the resilience that's been on display here by PRX. I mean, just step by step, round by round, match by match. I mean, not expecting anything moving into this tournament. With that impact of Benji, PRX बहुत अच्छा खेलती है। समथिंग का इम्पैक्ट जो है ना, मैं अगर देखूं तो पहले 2 राउंड्स के बाद समथिंग का इम्पैक्ट नहीं दिखा एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पर पेपर एक्स को बहुत प्रॉब्लम हुई है। अगर समथिंग का इम्पैक्ट दिखता गर्मी क्यों लग रही है, अगर वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखता ना तो काफी बेटर रहता, लेकिन नहीं, इट इज नॉट हैपनिंग। ओके, तो 6-6 ये सीरीज का आखिरी हाफ एंड इस सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ। वी आर एट 6-6, वी डोंट नो व्हिच साइड विल दिस मैप गो एंड फॉर दैट पिस्टल राउंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी पिस्टल जीतेगा उसके पास एक अच्छी खासी लीड जो है 2 राउंड की आती हुई नज़र ज़रूर से आ सकती है, बिकॉज आपका जो फॉलो अप राउंड है शायद वो भी आप जीत ही जाएं, बट नहीं, ये साइड का पूरा कंट्रोल जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टू द टीम ऑफ टीम हेरिटेक्स राइट नाउ। 5v5 का ये रीटेक, 5v5 रीटेक ऑन द पिस्टल। हाउ विल पेपर एक्स रीटेक? एक्चुअली यहाँ पर something is going from that main area, something is trying. Moniet comes out there, Mind Freak and Moniet takes down 3 people. Boo, Range and Mini Boo. Everybody is down, everybody is dead. Dawai takes down Boo and it is the thing जहाँ पर पेपर एक्स जो है वो पहला पिस्टल अपने लिए इस हाफ का जो पिस्टल है वो भी निकाल जाती है। एक्चुअली इस मैप का सेकंड जो पिस्टल है वो भी उन्हीं के नाम जो है वो रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से पेपर एक्स अपना ये जो दूसरा राउंड है, ये जो फॉलो अप राउंड है वो किस प्रकार से निकाल पाएगी, बिकॉज इस पिस्टल के लिए तो मॉनिट बहुत ज़्यादा बेहतर खेले हैं। विद दैट क्लासिक ही जस्ट डेसिमेटेड 2 players एंड दिस हाइप इज नीडेड, दिस हाइप इज एक्चुअली नीडेड। इफ दिस हाइप gets continued, पेपर एक्स को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर वो बेंजीफिशी की हाइप फिर से क्रिएट हुई, वो बेंजीफिशी फिर से ग्रुप में आए जो आपको पहले हाफ में देखने को मिले थे, then it will be very much tougher for the team of paper x. Check close right, Forsaken gets 2, Tawai gets 1, Forsaken is farming his ult actually, even something is trying to farm his ult right now, and Tawai gets Benji Fishy as well. 6-8. PRX has that 2
राउंड्स लीड एक्चुअली। यहाँ पर ये जो 2 राउंड की लीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इन द अपकमिंग राउंड्स, बिकॉज आपको जो इनिशियल 2 राउंड्स का बफ मिला है, यहाँ पर अगर समथिंग के कुछ शॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, अगर यहाँ पर समथिंग कुछ करिश्मा कर देते हैं विद दैट आउटलॉ, तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट 3 स्पेक्टर्स है और एक बुलडॉग भी नजर आ रही है इन द मैप ऑफ स्प्लिट। वी ऑल नो कि यहाँ पर स्पेक्टर्स और जज ये सारे वेपन्स जो है वो कितना ज्यादा काम आते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, these 3 specters will just have too much impact on the whole round actually. Somewhere or the other where यहाँ पर समथिंग जो है, अगर 1-2 हेड्स पॉप ऑफ करने में कामयाबी हासिल करते हैं तो इनको ज़रूर से जो फ़ायदा है वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड इनकी टीम के लिए जो एडवांटेज ये क्रिएट करेंगे दैट विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। 1 मिनट और 15 सेकंड का समय इस राउंड के अंदर अभी भी शेष है। कहीं ना कहीं मिड पे अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखा चुके हैं। एक अर्ली डिफॉल्ट 2-2-1 का जो स्प्लिट है वो देखने को मिलता है अभी के लिए। सभी के सभी खिलाड़ी जो है वो भी मेन के बाहर ही रिग्रुप करते हुए, लेकिन स्पाइक जो है वो ए मेन की तरफ कहीं ना कहीं जाती हुई नजर जरूर से आ रही है। स्पाइक इज गोइंग टुवर्ड्स ए बी पर ये टीम जो फाइट कर रही है दैट माइट बी जस्ट टू फ्लश आउट द टीम फ्रॉम ए टू बी, बट नहीं, यहाँ पर कोई भी प्लेयर जो है वो रोटेट करते हुए नजर नहीं आया एक्चुअली। एंड समथिंग इज स्टिल होल्डिंग दैट चीकी एंगल। 140 टू पटेटिक। एंड अब पटेटिक अगर दिक्कतों में फंसे, कोई भी अगर गन की एक भी बुलेट कनेक्ट हो जाती है तो पटेटिक विल बी टेकन डाउन। यहाँ पर समथिंग के हाथ में हमें एक शॉटी जरूर से नजर आ रही है। विद दैट शॉटी ही जस्ट tries to take down one more, but वहां वो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट स्पेक्टर्स यहाँ पर बवाल मचाती हुई नजर आई, बट डबल पीक ओवर दैट एल्बो एरिया जस्ट मेक्स इट वेरी मच टफ। बू आएंगे, माइंड ट्रिक और फोरसेकन को एलिमिनेट करेंगे एंड जस्ट टेक्स डाउन द राउंड इन देयर हैंड्स। हेरिटेज काफी अच्छा खासा इनके पास बाय राउंड जो है वो जाता है। But now this is the round, this is the most important round, जो follow up round है of पेपर एक्स। यहाँ पर इनके लिए अब ये राइफल राउंड जो है वो नजर जरूर से आएगा। Will they be able to convert this round? अगर ये कन्वर्ट करते हैं तो 6-9 की एक जो स्कोर लाइन है वो देखने को जरूर से मिलने वाली है। बट अगर ये स्कोर लाइन नहीं देखने को मिलती है तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स। Something okay, Forsaken and something that double peak helps, but Forsaken range को take down करेंगे with that ulti. He just takes down Pathetic as well. He is just on fire. He is on steroids right now. वहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। He is just chasing the people. बट बाकी का जो क्लीन अप है वो दवाई करते हुए नजर आई। ये यहाँ पर आखिरी के जो फ्रैग्स है वो भी निकालते हुए नजर आए। एंड नाउ इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द टीम ऑफ हेरिटिक्स, बिकॉज अगर ये राउंड जीतते तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज अपने नाम करते, लेकिन ये राउंड हारते ही इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाती है। पटेटिक के ऊपर ये जो अल्टीमेट था वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। ये फिस्ट बम्प्स चलते रहने चाहिए फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स। अगर उनको यहाँ पर इस गेम के अंदर कुछ ज़्यादा बेहतर करके दिखाना है तो इफ दे आर नॉट ऑन हाई कॉन्फिडेंस देन उनके लिए दिक्कतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बट राइट नाउ तो कॉन्फिडेंस से भरपूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दो वहाँ पर गार्डियंस के साथ एक स्पेक्टर और एक शेरिफ नजर आती हुई। बू के हाथ में सिर्फ एक क्लासिक है। ऐसी वेपनरी के साथ इनको अटैक पर आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड Forsaken, this guy has got his chance to just take everything in his hands right now, because यहाँ पर इनके हाथ में जो कॉन्फिडेंस आया है। Forsaken with that 3K, Forsaken just rushing out ahead with that 4K. This guy is on fire right now. ये बंदा एक अलग ही लेवल पर अपना गेम जो है वो खेलते हुए नजर आ रहा है। This is absolute masterclass of Forsaken on the defensive side of this map right now. ये डिफेंसिव साइड पे सिर्फ Forsaken का नाम ही नजर आ रहा है। यहाँ पर this guy is just getting all the frags, all the initial frags, all the important frags initially। 2 से 3 frags ही अपने टीम के लिए राउंड में निकालता है और बाकी का क्लीन अप टीम आके कर जाती है। तो राउंड पूरा का पूरा समाप्त ये इनिशियल 30 सेकंड्स के अंदर ही कर देते हैं।
हेरिटिक्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आउट, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी टाइम आउट. अगर कुछ नहीं किया, नहीं रोक पाए यहाँ फोर्सेकन को, तो ये 7-13 का लाइन भी हमें यहाँ पर शायद देखने को मिल सकता है. बट जैसे कि यहाँ पर इतिहास गवाह है, आफ्टर एवरी टाइम आउट कुछ ना कुछ होता ही है. एंड इफ दिस टाइम आउट वर्क्स फॉर टीम हेरिटिक्स, तो टीम हेरिटिक्स शायद कम बैक कर सकती है. Patriotic and Minibu 4-5 और दोनों को प्लस करोगे तो रेंज के फ्रैग्स एक्चुअली बेंजीफिशी जस्ट कैरिंग होल टीम. बेंजीफिशी के अलावा किसी ना किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा. वो इज ट्राइंग टू डू दैट, बट नहीं, यहाँ पर उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है. बेंजीफिशी इज नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट जो उनको चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रैगिंग. वही चीज फोर्सेकन के लिए यहाँ पर समथिंग कर रहे हैं. इवन दवाई इज डूइंग इन सम राउंड्स, मोनियट इज डूइंग इन सम राउंड्स. यहाँ पर फोर्सेकन फिर आते हैं, रॉ पीक करते हैं. विद दोस रॉ पीक्स ही इज जस्ट टेकिंग डाउन द प्लेस. नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग, बट समथिंग डजंट कनेक्ट. एंड न्यूरल थेफ्ट का जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो आते हुए नजर आया. प्लेयर्स जो है वो एक की तरफ भागते हुए नजर आएंगे. जरूर से साउंड आ चुकी होगी वाटर्स की, एंड वाटर्स की साउंड के साथ यहाँ पर माइंड फ्रीक को देखिए. माइंड फ्रीक यहाँ पर जरूर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे. जिंदा रहने की कोशिश यहाँ पर माइंड फ्रीक की तरफ से हो जरूर से रही है, लेकिन माइंड फ्रीक दिस गाय इज ऑन स्टेरॉइड्स एज वेल. आई गेस वल्नरेबल थे, स्टंट थे, सब कुछ था, लेकिन वो एक फ्रैग जरूर से निकालने में कामयाबी हासिल करते. 3v2 का ये सिचुएशन with Forsaken alive. Moniet have that paranoia in his hands. Even जो Sky Dog है वो भी है इनके हाथ में. Paint Shells are also alive. यहाँ पर in their hands are on the line. Pathetic flash जरूर से हुए थे, but Forsaken रेंज को पिक ऑफ करते हैं. यहाँ पर दवाई आएंगे, Pathetic को पिक ऑफ करेंगे. एंड ये राउंड भी कहीं ना कहीं जरूर से पेपर एक अपने नाम कर चुकी है. द राउंड, द पिस्टल राउंड जस्ट चेंज द होल मोमेंटम फॉर द टीम ऑफ पेपर एक्स. जहां पर मोनियट ने शुरुआत की, फोर्सेकन ने उनका हाथ आगे बढ़ाया. अब पूरी की पूरी टीम जो है वो उनका साथ देती नजर आ रही है. एंड दे आर जस्ट प्लेइंग लाइक रियल ब्रदर्स. एक्चुअली दे जस्ट गेट टू नो एवरीथिंग राइट नाउ. वो जो भी चीजें कर रहे हैं भाई, they won the round. Alex is not happy. Alex is seriously not happy. He just want everybody alive when he wins the round, and it is fine. जो गलतियां हो रही है, he just tries to rectify that. यहाँ पर एंटी फ्लैशेस आते हुए, यहाँ पर काउंटर फ्लैशेस आते हुए, प्लेयर्स जो एंटी फ्लैश खेलने की कोशिश करते हुए. ब्रीच का यहाँ पर हमें जो अल्टीमेट रोलिंग थंडर है वो देखने को जरूर से मिलता है. बट विद दैट रोलिंग थंडर फोर्सेकन को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ही जस्ट टेक्स वन डाउन. यहाँ पर ट्रेड्स चलते हुए, ट्रेड्स पर ट्रेड्स एंड 2v1 का ये सिचुएशन जो है बनकर आ चुका है. रेंज को वहां पर दवाई एलिमिनेट करेंगे. एंड दिस इज द राउंड फॉर टीम पेपर एक्स. ये राउंड भी यहाँ पर पेपर एक्स अपने नाम करती है. विद दैट रोलिंग थंडर एंट्री करने की कोशिश जरूर से थी, लेकिन अगर ट्रेड्स पर गेम चलेगा, फोर्सेकन पहला पिक निकालेंगे, दूसरा पिक अगर हेरिटिक्स की टीम निकालती है तो दिक्कतें जरूर से आखिर में हेरिटिक्स को ही आएगी. प्रॉपर ट्रेड गेम पूरे के पूरे हाफ में चलते हुए नजर आया. एक अगर यहाँ पर टीम पेपर एक्स ने निकाला तो दूसरा फ्रैग यहाँ पर टीम हेरिटिक्स की तरफ से आता है. एंड आखिरी फ्रैग कहीं ना कहीं टीम पेपर एक्स की तरफ ही आते हुए नजर आया. मोनियट इज ऑल्सो सेइंग नाउ सिट डाउन मैन, सिट डाउन. If Benjefishi was saying it, Moniet वहां पर उसका जवाब देते हुए, वो करारा जवाब है एक्चुअली. एंड now this could be it for the team of Heretics in this tournament. Heretics are just choking out on the final crunch moments in this whole tournament. Something with that operator, he just gets two Forsaken with that rocket. And okay, something is also a human actually. He just whips one, he just comes with that knife actually. They just wanted to knife the final player. Monier just taking that battle, giving that heat back to Team Heretics right now. The high fives going all around. The tournament
just get alive for this team. The half just can set the tempo of the whole tournament right now actually. यहाँ पर ये हाफ जिस प्रकार से टीम पेपर एक्स खेली है, पूरा टूर्नामेंट का टेम्पो जो है वो इस टीम का सेट हो सकता है इस हाफ की बदौलत. यह हाफ एकदम फ्लॉलेस हाफ निकला है, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं. बीच में थोड़ी बहुत गलतियां हुई, सोलो पीक्स आ रहे थे, कहीं ना कहीं फ्लैशेस थोड़े से लेट हो रहे थे, बट इट्स फाइन. टीम ने एक दूसरे का बहुत ही बखूबी साथ दिया और यहाँ पर इस मैप को जीतकर अपना जो रास्ता है वो अभी भी राउंड 3 के अंदर बनाते हुए ये नजर आए हैं. But the team Heretics are out of this tournament. It's fine. Both the teams, it's okay. At the end, यहाँ पर fist bumps आते हुए and they are just ending it on a good note. Benji played really well. अगर कुछ ना कुछ अगर यहाँ पर बेंजी फिशी को कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. द पावर ऑफ फ्रेंडशिप इज हियर एंड द पावर ऑफ फ्रेंडशिप इज जस्ट क्रेजी. Forsaken in the second half was next level. बेंजी PRX को ललकारने का नहीं कर जाएगा. आपको इतना नहीं लगा. बात तो है यार, बात तो है शैडो. हाँ मजा आया यार, मजा आया. Like that, क्या सेक्सी खेला बेस्ट 6-2 से. एक्चुअली भाई सेकेंड हाफ में मेरे को नहीं समझा, मतलब मेरे को पेपर एक्स के अलावा हेरिटिक्स के बारे में तो बात करने नहीं मिला. हेरिटिक्स के बारे में बात करने नहीं मिल रहा था. थैंक यू यार, मजा आया भाई, मजा आया. Still trying to figure out how to deal with a fast-paced team. I was not knowing आज एकदम से अंदर से आगे करते हैं. नौला सेकंड मैच पूरा करते हैं. 3 मैप पे तीनों मैच किए. Very difficult to deal with the first time. Wow, an incredible series. बीच में फंबल है, फंबल को ठीक करना है. Down and away, break it down, guys. I mean, if you can. तेज बहुत गलत खेला अटैक. अंधा घुस रहे थे. जहाँ पे फोर्स Heretics learned today about W Gaming because paper. अंधा घुस रहे थे, वही बोल रहा हूँ ना, अंधा घुस रहे थे. इसका एनालिसिस करने बैठ गया ना तो यही बात निकलेगी. पूरा स्लो खेलना था, लर्किंग करके खेल सकते थे. सेंटिनल था नहीं, आराम से खेलते थे. सूडो सेंटिनल था वाइपर के रूप में, बट सूडो सेंटिनल डजंट वर्क. Yeah, I mean, once we got into that second half, it was a complete 180 from the start of that game. Playing this comp, just the utter confidence they're coming out with when they're flooding in. It's like the casters were talking about. It's not a huge change in the comp, but it's such a 180 from what we saw earlier from Paper Rex. They are truly awoke. But एक चीज नोटिस किया, पेपर एक्स ने हल्का सा ट्वीक किया. पहले Forsaken was on Yoru, Monet was on Raze, as well. The consistency was out of this world. A great display. एक स्काई के होने का कितना फायदा मिलता है. to remember is they played डबल डुलिस्ट ठीक है, ट्रिपल डुलिस्ट अगर जाओगे ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है. somewhere actually you can't go with triple duelist and double smoker. कहीं ना कहीं एक इनिशिएटर चाहिए, एक फ्लैश चाहिए, फ्लैशर वैसा फ्लैशर चाहिए जो आपको इन्फो निकाल के दे. यूरो के फ्लैशेस ठीक है, लेकिन आपको यूरो के फ्लैशेस पे पक्का घुसना ही पड़ता है. बट विद स्काईडॉग यू गेट द इन्फो, विद हील मिल जाती है, बहुत कुछ है यार. रीग्रोथ आ जाता है, वापस सेकेंड लाइफ है एक्चुअली अगर तुम 10 HP पे बच जाते हो तो. बट कॉम चेंज वाज एपिक. एलेक्स ने बहुत क्रेजी खेला. Fans are always here, and I want to hear you guys. Where are ये 6 PRX fans over भी करते हैं तो भी जीत जाते हैं. And I'm here with Forsaken for the post-match interview. Estoy con Forsaken para la entrevista. Mi primera pregunta para Forsaken va a ser justamente lo que acabamos de ver, ese último mapa de split en el que cambian su composición. Volvimos a ver a Forsaken con Raze y quiero preguntarle a qué se debía este cambio. Win for Jing, actually win for Jing, man. Win for Jing. Teniendo un desempeño increíble. Forsaken, the first thing I want to ask is what we just got the chance to watch for the last map of split. You change the composition and you go from the triple duelist to just 2 duelists and you on the Raze. And that's the main show today. In that second half, you were just going भाई बंदे का एम क्रेजी चला है. And why you changed the composition and how does it feel to go back to that? भाई हर राउंड में 3-3 मार रहा था. Maybe these comps only work for Pacific because in this very hard, everyone just so good, and then I just realized that I think we need some info, some like. मैं क्या बोला? So I decided to like. मैं क्या बोला? Shadow भाई एनालिस्ट तो है. He's really good at Omen, especially surviving skills. I think he's really good at it. So analyst तो है. This is my race debut, my first race debut, you know, and I can win against TH. It's like really amazing, you know. So yeah.
Sí, lo que nos está diciendo es que se ha dado cuenta de la composición que estaban jugando antes de triple duelista, solo ser bien pacífico. बात तो है, वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ कंपटीशन अलग है, पैसिफिक को बैंड बजा दी, उसके लिए मैं कुछ कमेंट भी नहीं किया उस पे तो, जो सेकंड लाइन उसने बोली. Un muy buen omen y que aún así no podía creer lo que era este último mapa. Ahora, también le quiero preguntar lo que ha sido más que nada. बोलता है पैसिफिक में ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा. La región de Pacífico y dentro de este torneo, ¿cómo se siente? Y si podemos seguir esperando como siempre esa sorpresa. But एक चीज है ना, पैसिफिक में जेंजी is stepping up. Actually, जेंजी is stepping up. 2 मैच में से 2 मैच जीत के they are into the playoffs. Actually, they are into the playoffs right now. इनके लिए it's very tough. Can we expect इनको अगला भी more जीतना है. surprises coming from you? And what is it like to be that flex player for PRX? Yeah, I mean, maybe I will play Deadlock or ISO next. Who knows? Okay. भैया? I believe it. Yeah. I mean, the reason why I like become flexible because like I just love how the way I can create like a lot of stuff. ये सबके साथ मेरे पास फोटोज हैं. I guess Forsaken के साथ है कि नहीं मेरे को याद नहीं है. पर पूरी टीम के साथ तो है. De pronto, sí, cuando le preguntaban हाँ, vulnerable के साथ बहुत कुछ pair up कर सकते हैं. él decía, de pronto puedo jugar Deadlock, de Vulnerable है वो. No se sabe. साला रेना खेल dice सकते que lo हैं. que más le gusta es ser flexible, es poder traer un poco más de creatividad, de ideas y eso कोई भरोसा नहीं है. creatividad más que nada del equipo. ISO deadlock कर रहा है. भाई बोलता है मैं deadlock और ISO खेलेगा. Who do you want to face in this tournament? I would say if somehow we met EDG again. Okay. You know. The rematch. Rematch, yeah. I think it's gonna be different. Dice que si se tiene que enfrentar con alguien, tiene que ser con EDG, le gustaría poder tener ese rematch. Eso es todo lo que tenemos de esta entrevista. भाई हाँ यार, वो तो सच्ची है. ना फ्लैश है ना कुछ है. Wondering how those next matches are gonna look like. We're gonna go right to the draw show. Everybody getting photos. भाई पूरी टीम के साथ मेरे पास फोटो है मेरे पास, मैंने देखा. मेरे पास Hola a todos y bienvenidos a la Masters de Madrid. A Masters de Madrid. Presento a todos el sorteo de los próximos partidos que vamos a tener en el día de mañana. Drafts के लिए वेट करो. You're going to tell us how this draw works, right? Yeah, so it's a little complicated, just bear with me. You can kind of shuffle these around while I'm talking. Nice. So basically, during the Swiss stage, there's not going to be any sort of rematches that have already been seen in the Swiss stage. So what that means is that EDG and PRX will not meet each other again. So what this does for the draw, if they are drawn to be in the same match, then the second team drawn for the match that results in that happening will be redrawn. So if we get, let's say we have KC versus Loud, then Loud's going to be redrawn to be one of the other two teams. And then if EDG versus PRX is drawn, we will redraw the second team. And that's kind of how this is going. So 4 teams, but a little complicated. So we can go ahead and get started. I'll just have you pick box and throw it to me. It's going to be match 1 of whenever we decide the schedule is. The draw order is not necessarily the schedule order, but the first match, team 1. Chicos, voy a darle la primera papeleta de lo que va a ser el primer equipo que vamos a sacar aquí. Y se lo voy a dar a ella para conocer que va a ser Carmine Corp. Y Carmine Corp se va a enfrentar a PRX. KC versus PRX हो चुका है ना? Vale, y vamos con el segundo partido que ya está claro, ¿no? Solo son 4 equipos. There's only 4 teams, so. Yeah. Well, the first team drawn in each match is the higher seed, so it does matter a little bit. All right, so the first team for the other match is going to be Loud, los brasileiros. भाई Loud को higher seed दिया है. Their opponent by default. कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना, मैं मेरे को याद नहीं. Actually, without knowing where it opens from, you know. अच्छा EDG और PRX ही हुआ था बराबर. EDG. ठीक है. Y se han dado partidos completamente distintos a lo que acabamos de ver hasta el día de hoy. Así que nos espera un día de mañana súper emocionante. Espero veros aquí con la Masters Madrid para otro día más de emoción, frenetismo y partidos increíbles que nos están esperando mañana. Nos vemos mañana, chicos. There you have it. We got the show. You may notice that we swapped out a Mitch man for an Alex. That's right. Coach Alex is here today. सुनना है मेरे को इसलिए सुनना है भाई साहब के एक्सप्रेशंस क्या भारी है.
You guys are playing Carmine Core. What do you think? Yeah, it's great. I think we're gonna be a really good game. I think both teams are very, very aggressive. One is a little bit crazier than the other. Yeah. Coming Cop. Okay. Oh, of course. Yeah, we are the structured team. You know? Have you not seen us play? Yeah, I actually haven't. That's crazy. Oh man. Well, look, firstly, you know, this has been such a wild day for you guys. Oh yeah. We were talking before. There's obviously like a lot of uncertainty going into this matchup for you guys, but it just felt like once the switch gets turned on, it's impossible to turn it off. How do you coach that? That's I mean, I didn't really say much in the second half, you know. Like I just let guys look good. It's the end of the line. You're either going home or we do something special. Yeah, when we watch you on the camera, you are always slamming your desk. It seems like you're getting really emotional. I honestly tried to do it less today. Yeah, you're trying to treat the desk. I was very, very kind today, no? Yeah, we're working on it. One time. But I wanted to ask about how do you balance like your own emotions with when you talk to the team and giving them the message you need to hear? Honestly, I think I do it before so they can't hear me, so that I don't actually get angry at them, you know. Sure. Yeah, so after I let it all, I'm like, okay. This is what we need to do, guys. You know, that's what I do. भाई ये चीज सही है कि खुद का गुस्सा एटलीस्ट वो खुद पे निकालता है, टीम पे नहीं निकालता, मतलब टीम का गुस्सा भी वो अपने आप पे निकाल के खत्म करता है. But you guys had a really short turnaround to come back and change up from that triple duelist comp. Can you talk to me about the thought process and also how you made the transition so quick? I mean, I think we just went back and asked like Chaya, Monyet, like, look, are you really comfortable on this map? You know, like we need to change some stuff. The triple duelist is kind of overcooked, you know. Yeah. He said, look, split is the worst one. You know, we need to fix this shit. So after that, we decided, okay, put him on moment. Mindfreak had to sacrifice a little bit, go on to Viper. He's never played Viper before, so we had one day. And for Forsaken, you know, he plays everything, so we just chucked in there and prayed. How many times did you get to scrim split before you played the match? Once? Yeah, just once. Okay. But we did a lot of like server work, you know, like talking and stuff. Sure. To figure it out. How's it been incorporating Monyen into the team? Because it feels like he gets along really well, but I think when he got brought in, I think a lot of people were wondering like, where is he going to sit in this squad? How does he fit into the system that you guys have built? You know, W gaming and all that stuff. How's it been incorporating him in there? I mean, W gaming कम हुई है. Jinx जब था W gaming ज़्यादा थी. Nervous sometimes, you know. So if it starts well for him, and a round goes wrong, sometimes he can just like, oh my god, it's good. You're just trying to make it more comfortable for him moving forward? Exactly, yeah. Okay. So I mean, like, right now he told the race is not working for us. We're going to try and move him away from it. Okay. I mean, but you know, we don't have much time. I think we're playing tomorrow, no? Yeah, you are. Well, we have like 5 hours then, I guess. Yeah, how do you prepare for a format like this? How much of your game plan is focused on your team, on PRX, and how much is on counter-stratting generally? And how does that change for the Swiss format where the matches are back-to-back? Actually, by ये चीज़ before we came in, you know, we just did like a rough idea of everything. पोस्ट मैचेस सुनने में मजा नहीं आता मेरे को टीम्स की स्ट्रैट सुनने में बहुत मजा आता है. So I use that as a basis for anything we do. When we find out the team, you know, I prefer to be awake really early in the morning. I just rewatch everything and then just reconfirm what we're doing. What's what actually important? And then after we come up with a game plan, everybody gets together in the middle of by just 1 hour before. And we talk about the game plan, we make sure we're aligned, and then we just go into it and see what happens. Sure. I mean, it panned out today. As well as that, you guys playing against a home crowd. You've done that before when you all went on that run all the way back in Copenhagen. It was the same deal. Yeah, is the team just used to it at this point, or do you still feel that pressure, especially for Monyet as a new player? I mean, I always tell them that they're cheering for us, you know. Just lie to yourself? Yeah, and then they laugh, and it's okay, you know. I mean, I think we're lucky enough that most people like us. So you know, we don't really get like... Do they get a little flustered if they feel like they're... Have you noticed that before? Never. Yeah? I mean, I think they enjoy it, you know. We really don't get like lands like this in Asia. Yeah. For us, it's like really like a... It's an environment to enjoy, you know. We try to approach it with a positive mindset mostly. Yeah. I mean, well, I remember, you know, coming into this, it was Forsaken who had said he felt like he was a 6 out of 10 coming into the event here. Yep. And I have to wonder, you know, like for you, you got to keep that positivity going. Is that oftentimes very challenging when the players, you know, they're young, they're emotional, you know, all the things that happen with teenagers and young adults and stuff? I mean, in the past, no. I mean, the last 3 years, we never really had to deal with this. But this time we're coming in with less confident than we usually are. So it's actually... Do you feel that was a helpful thing or... less confident? Yeah. Terrible. Yeah, okay. Because I was just curious. You know, everyone's got we're suffering right now. Yeah. Do you think every round the confidence is you know? back now? I don't know. We have to see. After watching that last map, you don't feel like for one half, yeah. Yeah. I mean, Look, Lotus, I feel like we could have done a little bit better. Yeah. We had like
10 seconds lead or something, it suddenly disappeared, you know, confident. Yeah, but in that interview that Alex was mentioning, for a second said you guys are a 6 out of 10. What would you rate your team right now? 6 out of 10. Bang on still? Yeah. I love you, man. It hasn't changed at all. Yeah, I respect it. I respect it. All right, well, let's go ahead and show what we have coming up tomorrow for you wonderful people at home, and what a treat that we had today here. But of course, playoffs on the line. We have our 1-1 teams that are going to be clashing against each other. You'll get the schedules later on. Make sure you stay tuned to the social media for VCT across all the different regions to get updates there. But you can see the matches play out. You guys are playing Carmine Core. Alex, you know, I guess it seems like you were excited about that game just to see like what would happen there. Any player in particular that you're like, oh boy, they're going to be a problem for us? Narrate, man. Yeah. It's on fire this time. Kind of fed that one to you. Is he a top rated player right now? He must be. He might be. He must be. I mean, he's been incredible. Yeah. I mean, we were screaming with him when we went champions, you know, and he was trying for other teams. Like back when he was on an NA team. Yeah, he was so good. He was like. He was already so good. Yeah. He was already so good. That's wild. Yeah. Wow. Well, hey man, we're excited nonetheless. Best of luck to you guys tomorrow. Take care of the furniture. You're doing a good job. I'm proud of you, buddy. But yeah, that's gonna do it for us today. Big shout out to Mimi, our casters. We also, you know, Mitch, who stepped aside as well. You know, got to go celebrate some St. Patty's Day love. But Alex actually fired him. Yes, I'm here forever now. Yeah, it's true. But guys, don't worry because we're going to be back here tomorrow. You're going to see his team take the stage against Carmine Core. You're also going to see Loud take the stage as well versus, help me out, Mimi? EDG. There was only one more team. I know, but you know what? I'm old and I'm tired. All right, guys. Well, we're going to go ahead and say goodbye to you for now. We'll catch you tomorrow. Plenty more. Masters, Madrid. See you soon, guys. Thank you. Fuck it. It's a classic David versus Goliath. FPS. David versus Goliath? Yeah, map. Nah, sorry, bro. I forgot EDG. Thank you so much, guys. I think I should leave. सोचा था market खेलूंगा, but after casting 3 maps, I don't think so. I can play market. कल market दोपहर में या तो जल्दी खेलेंगे या देखेंगे क्या करना है, because पढ़ना भी शुरू करना है यार. Contemporary issues पहला पेपर है 21 तारीख को. आज क्या डेट है? आज 18 तारीख तो हो गई भाई. मतलब कल 18 है, 19 20 18 19 20 3 दिन बचा है. कल परसों और उसका अगला दिन 21 को पेपर है. I have to study something, man. अगर नहीं पढ़ा तो वापस पेपर्स देने पड़ेंगे और वो मेरे को नहीं देने हैं. Yeah, so it's okay. It's 1:45 actually, and I will be leaving. कल सुबह मिलते हैं around 12-1 बजे या फिर उससे लेट पता नहीं. Till then, bye bye. Take care. See ya. Good night. I hope you liked my casting.